Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ, I must say, यार मैं शुरू कर रहा हूँ अभी बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूँ. Yes, kickoff is still what 1 hour 20 minutes away as things stand. लेकिन there's a lot to be discussed because it is one of those nights. For me personally, I have waited for it like I must say like 22 23 years because again yes मैं comment देखा हूँ. It is not the biggest night ever लेकिन हाँ in terms of footballing kind of history मेरा जो है लेकिन it has to be for me the Champions League finals and stuff like that. Having said that, it is definitely यार मतलब Chelsea Milan I always anticipated. Back in the day I always wanted, as in Chelsea, Real Madrid, the bigger clubs kind of meet more often. भाई लेकिन Chelsea Milan too आप देख रहे हो मेरे पीछे. There is a reason to it. Why it is special? Yes, लेकिन let's be honest. Just to not have any confusion, I am definitely a Chelsea fan. No two ways about it. By Milan, at best, it is a soft corner. थोड़ा सा soft से ज़्यादा है, लेकिन यार, it is all Chelsea today. Or it's just not that. It is an important night. मेरे लिए, I believe it will be very important for Benfica. If they can do something against PSG, they might be one of the favorites to go through, of course. लेकिन also for Real Madrid, Man City, and a couple other clubs. Obviously, हम discuss करने वाले हैं सब. Yes, but अभी match चल रहा है. So that's interesting as well. तो हम we'll touch upon that and what happened yesterday as well. चलो big up Ankit. Yes, like I said, it's not the biggest, but definitely is one of them for sure. Long wait, ऐसे define कर सकते हो Luman. Big up, thanks for saying that as well. Again, ये सुन लिए सब लोग भाई सब लोग smash the like and yes, by the way, for people wondering why am I wearing a cap in the night, for people who follows their channel लंबे समय तक, this is generally my lucky avatar. Generally, I'm not very, very superstitious. Again, for people know out there, लेकिन generally it is. And today is a do or die match for Chelsea. And this लिए मैं पहना हूँ because it is at home. I can't see us getting 3 points in Milan जो होने वाला है next week. But let's see. Anshul, good evening. Absolutely big day. Absolutely big day, big day, big night. But it is definitely a very, very important next couple of hours. 100%. Sue बोल रहे one more. Thanks. आज लिया अपना ऑडिशन देगा. हाँ, बाय द वे यहाँ पर मैं कुछ दिखाऊंगा बिकॉज इट्स जस्ट नॉट लिया. और हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भाई हम एक्चुअली लेट मी एक्चुअली बिग अप अ फ्यू मोर पीपल मीनवाइल. लेकिन हाँ, एक सेकंड के लिए मैं ये स्कोर हटा देता हूँ. आई थिंक इट्स अ बिट टू भीड़ भाड़ अभी के लिए नहीं, तो अभी के लिए मैं स्कोर हटा देता हूँ. लेकिन होपफुली विल गेट बैक टू दैट. लेकिन हाँ, सब लोग लाइक दबा दीजिए. शाउट आउट है इवन टू फरहान, प्रथम, गौरव, डेरेन ऑफ कोर्स, ऋषि, प्रतीक, संकेत, भाई मानव ऑफ कोर्स राइट. तो बाकी लोग भी सब लोग आ जाइए बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स इट विल बी अ स्पेशल मोमेंट फॉर समवन वेरी स्पेशल जो मेरे ख्याल से इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता है स्पेशली इन रीसेंट ईयर्स. He has proved that age is nothing. It's just a number. Another guy. Yes, I'm not talking about Thiago Silva. जो लोग सोच रहे हैं भाई हमेशा थियागो सिल्वा का ये गुणगान करते रहता है, यस वो भी है स्क्रीन पर आपके. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली ओलिवियर जिरू. भाई जिरू मैन, trust me, the guy is back to Stamford Bridge. What scenes, and this will be something else. Of course, and look at the dashing. भाई जिरू मैन, जिरू अगर फुटबॉलर नहीं होते तो क्या होते भाई, 100% मॉडल होते. Look at that. And again, I'm not kind of attracted to him from that angle. लेकिन वैसे बोल रहा हूँ भाई 100. Look at that dashing अवतार भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल एसी मिलान का जो क्रीमिश जो जैकेट निकला है, ओ माय गॉड, आई एनवी इट. हमेशा मैं बोलता हूँ एसी मिलान का जर्सीज भी आई ऑलवेज लव्ड इट. लेकिन दैट जैकेट इज समथिंग एल्स आई मस्ट से. लेकिन ऑफ कोर्स इज जस्ट नॉट लियाओ, समवन एल्स वेरी स्पेशल. अगेन हम स्पेशल देख रहे हैं, एक मैच हो रहा है लाइप्जिग और सेल्टिक के बीच में. इंकुंकू इज दैट द गाय जो आने वाले हैं, और वुड यू से दैट दिस गाय इज प्रिफर्ड गाय अगर ऑप्शन है चेल्सी के पास? Even न्यूट्रल्स आप लोग बोले बिकॉज लियाओ इज चेकिंग आउट. भाई इज दिस गोइंग टू बी माय फ्यूचर? पता नहीं. और इज इट गोइंग टू बी माय नाइट? वन ऑफ दोस थिंग्स जो लियाओ सोच रहे, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू जिरू देयर, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट इट? लेट मी नो. लेकिन लेट मी क्विकली बिग अप अ फ्यू मोर पीपल यहाँ पे एंड टेक सम कमेंट्स. ऋषि बोल रही हो अंकित भाई, यार अंकित प्रतीक मैं इंडिया में रहता हूँ, अभी बैंगलोर में रह रहा हूँ, लेकिन अगेन आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एज वेल. वेयरिंग मिलान जर्सी बिकॉज भाई एक तो मिलान जर्सी काका का समय का जर्सी है, तो वो ऑब्वियसली मेरे को इतना अच्छे से फिट नहीं होता है एनीमोर. लेकिन अगेन द रीजन बीइंग दैट आई एम सपोर्टिंग चेल्सी. डेरेन पुलिंग में यहाँ पर एक्साइटेड चेल्सी प्लेइंग यूएफा मैड्रिड लीग. ओ माय गॉड, आई एम वेटिंग टू सी दैट यूरोपियन सुपर जायंट अगेन ओल्ड एसी मिलान. हाँ, ये चीज मैं देखना चाहूंगा.
Not tonight, like, one more, let's be honest. Griezmann, yes, yes, by the way, डेरेन ने शेयर किया है, और फॉर पीपल हु डू नॉट नो, यहाँ पर मैं शेयर भी कर सकता हूँ. और यस, आई थिंक लाइनअप्स विल बी आउट. लेट मी सी कब आएंगे. लेट मी चेक एब्सोल्यूट चेल्सी मीनवाइल. ओके भाई, लाइनअप्स आ गए हैं. लुक्स लाइक लाइनअप्स आर आउट. तो मैं ये भी बताना चाहूंगा, मैं दिखाऊंगा जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स. लेकिन हाँ, ग्रीजमैन टू बार्सिलोना इज काइंड ऑफ डन. ऑप्शन जो 40 मिलियन था, अभी हो गया 20 मिलियन प्लस एड ऑन्स. तो पीपल, व्हाट डू यू थिंक, इट्स एन ऑलमाइटी ट्रांसफर, और डू यू थिंक माइटी? मेरे ख्याल से 20 मिलियन प्लस एड ऑन्स इज क्रेजी, क्रेजीली लेस फॉर ग्रीजमैन. हाँ, डिस्पाइट हिम नॉट बीइंग द एब्सोल्यूट बेस्ट, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा. ओके, तो एज पर एब्सोल्यूट चेल्सी आ गया है. वो ऑफिशियल लाइनअप भी आ गया क्या? मैं यहाँ डाल रहा हूँ. ऑफिशियल लाइनअप भी शायद आ गया होगा. इट्स ऑफिशियल लाइनअप नाउ. ओके, सीएफसी ब्लूज इज सेइंग इट्स एन ऑफिशियल लाइनअप. तो लेट मी एक्चुअली चेक द ऑफिशियल लाइनअप इटसेल्फ डायरेक्टली. और हाँ, इसीलिए भाई, इसलिए चैंपियंस लीग लाइन में हम जल्दी आते हैं. बट अगेन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग भाई. सीएफसी ब्लूज को भी शाउट आउट है. अंशुल, अंकित हैज अ क्रश ऑन जीरो. ओह माय गॉड, आई हैव गिवन लाइनअप अपडेट चेक. गौरव, थैंक्स एज वेल. बिल्कुल, सीएफसी ब्लूज भी किए है, बिलीव, एंड एज वेल एज गौरव. Please keep the Milan jersey near as well. This is true. This is well and truly your derby, man. It is definitely more than me. ये लोग जो मेरे साइड में, उनका डार्बी है. Thiago Silva and Giroud mainly, I would say. Of course, Tomori, Aubameyang and Bakayoko UEFA टीम में नहीं है. For Milan, he's not been picked. By the way, इसलिए बेसिकली उसको मैं काउंट नहीं कर रहा. बिग अप टू द ओजी, एब्सोल्युटली हाई उत्कर्ष एज वेल. चलो भाई, ये लाइनअप सब लोग बता दीजिए. मैं यहाँ पे आई विल ट्राई एंड गेट अ graphic भी on the screen so that it helps you all. लेकिन what are your thoughts on this lineup, everyone? Yes, I'm also waiting for a couple of guests who meanwhile they'll be joining. But obviously हम बात करने वाले हैं about why Chelsea Milan is so important, as well as the other games जो हो रहे हैं as well as हुए थे. Okay, so I think okay, ये एक वेबसाइट देख रहा हूँ, वहां पर ऑफिशियल लाइनअप नहीं आई है. लेकिन हाँ, डेफिनेटली सीम्स लाइक चेल्सी का वेबसाइट में आना चाहिए ना. तो लेट मी एक्चुअली पुट इट अप. जस्ट गिव मी अ सेकंड पीपल. और भाई, सब लोग लाइक्स दबा दीजिए. सर्टनली हेल्प्स. अगर आप लाइक्स दबा देते तो बहुत बढ़िया रहेगा. लेट मी जस्ट सी. अगर ओके, सो यहाँ पर let me just see. Okay, I don't see the lineups. Let me actually look at the best part is look at the Twitter account. My Twitter account में सबसे जल्दी आता है नहीं. That's what I would say. Twitter account से लेते हैं. Wow, what do you think? लेकिन again going by that lineup, let me know क्या आपकी predictions है, everyone in the chat. Okay, तो ओके, सो अभी ट्विटर अकाउंट में नहीं है, तो यही आई थिंक वील गो विद दैट. अभी के लिए यही चलेंगे भाई. केपा, फोफाना, सिल्वा, कुलिबाली, जेम्स. भाई, कुलिबाली स्टार्टिंग हिज फर्स्ट गेम फॉर चेल्सी. हाउ बिग इज दैट? अंडर टूकल, अंडर पॉटर. अंडर पॉटर बोल रहा हूँ. ही स्टार्ट्स हिज फर्स्ट गेम. यस, उस पर भी आएंगे ऋषि. जस्ट वन सेकेंड, बट लेट मी जस्ट रिएक्ट टू दिस फर्स्ट. नाउ फोफाना, सिल्वा, कुलिबाली, जेम्स, कोवाचिच. तो looks like it is basically definitely okay. So I believe यहाँ पर, बाप रे, Sterling again. He's going with the three at the back. He's going with the three at the back. I believe so. जहाँ पर basically सिल्वा, कुलिबाली और फोफाना होंगे आपके सेंटर बैक्स, एंड यू आर हैविंग जेम्स ऑन द राइट विंग बैक. लेफ्ट विंग बैक होंगे स्टर्लिंग, जो हुआ था अगेंस्ट सॉल्जबर्ग, याद रखिए, दैट वाज आवर होम एज वेल. और लॉफ्टस चीक एज वेल एज कोवाचिच मिडफील्डर्स होंगे इन द एब्सेंस ऑफ जॉर्जिनियो. ऑफ कोर्स कांटे भी मिसिंग है. अच्छा नहीं, सॉरी, आई गॉट इट रॉन्ग. चिलवेल इज स्टार्टिंग. सो चिलवेल इज स्टार्टिंग, सो इट्स फोर एट द बैक. सो वी आर लुकिंग एट चिलवेल, जेम्स, कुलिबाली, सिल्वा, फोफाना. ओ माय गॉड, नो, इट्स टोटली डिफेंसिव. Oh my God, it is 3-4-3. It is 3-4-3. Well, मैं यार, I have to say today I am nervous than usual because of it being such a big game. But कोई नहीं. 3-4-3, 3-4-2-1. Yes, वही है, वही लग रहा है absolutely. Let me actually see कि भाई UEFA की वेबसाइट से निकाल सकते हैं क्या? भाई अभी तक अपडेट क्यों नहीं की हुई चेल्सी के ट्विटर अकाउंट? I'm just wondering. Okay, it's not updated on the Chelsea's Twitter account, as well as basically I don't see it in the website that I usually use as well. लेकिन कोई नहीं. Just coming back to that comment, again, people, yes, it looks like it is Chilwell who is playing left wing back, Reece James playing right wing back. There are three centre backs proper जो आपको दिख रहा है, with basically Kovacic and Loftus-Cheek sitting in between, in the middle of the park, or up front it is Mount, Sterling and Aubameyang.
अगेन थोड़ा सा मैं बोलूंगा इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट मोर डिफेंसिव देन व्हाट आई एंटिसिपेटेड, लेकिन इट इज गुड टू सी बेसिकली बाहुबली यू नो टू स्टार्ट डेफिनेटली अंडर पॉटर भी इंपॉर्टेंट था. Yes, back three is back. Ankit Rana's Derby, back to back three. Yeah, I miss Ozil, Marcelo, Ronaldo, Bale, and Casemiro. Interesting. Today's match will decide Chelsea का. हो गया नहीं. Oh my God. Homecoming for Tomori and Giroud. Absolutely. How do you think Benacer will would do against RLC? Well, honestly speaking, I see Benacer is much more skillful, much more in form अभी के लिए. लेकिन it's at home at Stamford Bridge, so that's why I'm hoping कि Loftus Cheek जो हम last season देखे थे against Juventus, आप लोगों को याद होगा, he actually had a good game. I remember in the Champions League, so you never know. He might kind of be good, or plus last game में he was pretty decent after coming on. नहीं हालांकि मैड्रिड बोल रहे शाम मिलान लाइनअप इज आउट. चलो मिलान लाइनअप भी मैं डालूंगा. बाय द वे बेंच तो प्रीटी ऑब्वियस है चेल्सी का. कुकुरे इज ऑन द बेंच, सो दैट्स गुड टू सी. सो कुकुरे इज फिट. बाय द वे मेरा आवाज थोड़ा बैठा हुआ है यार, तो आई होप यू गाइस कैन मैनेज इट. आई होप इट्स नॉट बैड, राइट? बट ओके, मिलान लाइनअप भी आ गई. भाई आप लोग कहाँ पे देख रहे हो ये बता दीजिए, मैं डाल दूंगा. भाई ये मेरा जो वेबसाइट है ना, ये मेरा वेबसाइट ही, द वेबसाइट दैट आई फॉलो बहुत ही स्लो है. लेट मी एक्चुअली पुल इट अप फ्रॉम द यूएफए वेबसाइट इटसेल्फ. आई थिंक दैट इज द मोस्ट रिलायबल. लेकिन उसमें वो ग्राफिक इट्स नॉट ज्यादा, मतलब प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होता है उससे. दैट्स द मेन प्रॉब्लम है. आई डोंट प्रेफर दैट, बट कोई नहीं. लेट मी सी. ओके, सो देयर वी हैव. ओके, मिलान लाइनअप. Again, Milan may they have so many injuries, man. They have so many injuries, so that might be one of the reasons. लेकिन हाँ, चलो lineups आ गए. Let me see the lineups as well. Okay, so Milan में है Giroud starting up front with Rafaelia on the left hand side, D Ketlare and Krunic, क्योंकि यार Salamackers is injured, so that's interesting. Let me see अगर मैं share कर पाता हूँ ये भी. Let me share it, Gaurav and everyone else. और भाई सब लोग like दबा दीजिए, do not forget that. भाई छोटा दिखेगा आपको थोड़ा सा तो मैनेज कर लेना, क्योंकि यार जो मैं वेबसाइट फॉलो करता हूँ ना, वहां पर बेसिकली जो ज्यादा पिक्टोग्राफिक है वहां पर आया नहीं अभी तक, और एज वेल एज द चेल्सी ट्विटर अकाउंट. तो यहाँ पर देखिए जिरू, रफाएलिया, डी केटलारे, क्रूनिच, बेनेसर, टोनाली, बालो, तोमोरी, कलुलू और डेस्ट. ऑफ कोर्स मैग्नियन भी मिसिंग है. तो यार देखिए, usual teams that they have Magnon missing, they have Simon Kier missing, they have Calabria missing, they have Theo Hernandez missing, और of course और कौन मिसिंग है भाई, सेलेमाकर्स जैसे मैंने बोला, और मेसियास यू माइट से. ठीक है, तो काफी लोग मिसिंग है यहाँ पर. तो आई वुड से गोइंग बाय दैट एंड गोइंग बाय दिस चेल्सी लाइनअप, अगेन डायरेक्ट बैटल होने वाला है विद देयर फ्रंट थ्री बिहाइंड जिरू वर्सेस अपने बैक थ्री, आई बिलीव, क्योंकि जिरू वी नो दैट ही लाइक्स टू बेसिकली होल्ड द बॉल. तो ही विल प्रोबेबली मतलब आप बोल सकते हो ही माइट जस्ट ड्रॉप अ लिटिल बिट, और ही माइट लुक फॉर अ रनिंग राफेली और अ क्रूनिच बिसाइड हिम. वो होगा उनका टैक्टिक इन माय ओपिनियन. बट अगेन केपा स्टार्ट फॉर चेल्सी ब्रो, दैट इज अ बिग डील. लेट मी सी अगर चेल्सी का आई सी. ओके चलो भाई, फाइनली भाई कितना स्लो है वेबसाइट मैन. फाइनली वेबसाइट अपडेट कर दिया है, बट मैं कमेंट्स पे आता हूँ उससे पहले, इसके पहले कि आप लोग गुस्सा हो जाओ. भाई सब लोग लाइक कर दीजिए, भूलना मत. ओके, 343, yes. Why Mount? Just why? Because Havertz is not 100% fit, bro. That might be one of the reasons. On Pulisic, he had an impact, but based on that, would you start him? I'm not sure. Or at Stamford Bridge, Mason Mount is still one of our main men. Okay, dream scenario for me will be James pocketing Liao, fingers crossed. Okay, yes, Mark Ferreira, 100% agreed there. For me, if Liao does very well, that is a clear indication by जाकर खरीदना, no matter what the price is. अगर Reece James has better night, then it's good for Chelsea anyway. Yes, Chile is left wing back, absolutely. Big up, बहुत important day है in fact. चलो हो गया भाई. हेलो भाई विशेष, कैसे हो? लाइनअप एक बार पहले डिक्लेयर होता है? नहीं, लाइनअप चैंपियंस लीग है ना, सवा घंटा पहले हो जाता है अंशुल, तो जस्ट अबाउट हो गया है. केपा क्यों खेल रहा है इतना? वेल देखिए, एक तो आप बोल सकते हो दैट मेंडी इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, यू कैन आर्ग्यू दैट. ठीक है, लेकिन at the same time, because I think Potter believes in playing from the back, मुझे लगता है that ये केपा को चांस देना चाह रहे कि नहीं, हो सकता है that he might get his form back of 2018-19, who knows. और फिर basically you will decide. यहाँ पर he clearly said कि इनको नंबर वन चाहिए नहीं कि कोई, he wants to basically play केपा for the time being and then maybe decide based on merit. और meanwhile मेंडी का फॉर्म भी अच्छा नहीं रहा है, तो आई थिंक इट्स fair for the time being, at least in Champions League games.
प्रीमियर लीग में केपा आई हैव माय डाउट्स बिकॉज यस डिस्पाइट जो वीकेंड में अच्छा परफॉर्मेंस था टू एन एक्सटेंट, मैं फिर भी बोलता हूँ व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एक अटैक होता है ना इन सेट पीसेस एज वेल एज बेसिकली टेकिंग शॉट्स, आई डोंट ट्रस्ट केपा एज मच एज मेंडी. बैक थ्री इज बैक, सो अ लॉस आई फील. वेल अगेन सॉल्सबर्ग में लॉस नहीं होता प्रथम, वी वेंट टू बैक थ्री, लेकिन हाँ वहां पर डिफरेंस था दैट इट वाज स्टर्लिंग एंड नॉट चिलवेल. तो यहाँ पर लुक्स लाइक वी हैव गॉट अ लिटिल बिट मोर डिफेंसिव कंसीडरिंग इन मिलान. Ankit, it hurts. I know we didn't deserve to win yesterday, but we didn't deserve to lose too. Intentionally given wrong decisions in both the game. I don't know why you are doing this. Aditya, I don't know about intentional. That is too far to say. लेकिन भाई मतलब आप समझ सकते हो मुझे क्या लगा था in 2009. No pun intended. लेकिन with all jokes aside, Aditya and everyone else, I hope you saw my video. Yes, हम उसके भी बात करेंगे when the guests come on. लेकिन सब लोग लाइक कर दीजिए और ये बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए यार. हमने शॉर्ट वीडियोस भी निकाले कुछ, तो डू चेक इट आउट. हमने एक एक डिटेल वीडियो में निकाला था, मैंने बात किया था अबाउट व्हाई आई थिंक बारसा रियली लॉस्ट टैक्टिकली. आप देखिएगा वो. अंकित भाई यूनाइटेड रोड, हाँ बड़ा अंडरस्टैंड. हाँ भाई अंशुमन को मैं सोच रहा हूँ डेफिनेटली बुलाऊंगा. वेल मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम में बुलाऊंगा कल. आज ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, तो इफ इन केस यू डोंट कम अप, डेफिनेटली अंशुमन is always invited, bro. No problem at all. And in fact, entire community is invited. Leipzig won. Nkunku, yes. That is the talk of the town. लेकिन जो प्री मैच था ऑन सोनी टीवी, वहां पर उनको लग रहा है भाई इंकुंकू नहीं जा रहे चेल्सी, वो सब रूमर है. अभी भी देखते हैं व्हाट द रियलिटी. Both of our team playing today. So Ankit bhai, I hope both of us win today, especially Chelsea. Kunal, yes, absolutely. Other than defense, almost all players start for Milan in this lineup. Well, Krunic doesn't start, Gaurav. Krunic is definitely not a starter. I don't see him as a starter. Yes, he got an assist in the weekend. I remember that. Lekin, you're right. As in, apart from maybe Krunic, you can argue that it is a proper Milan side. Charles Ketelare bhi is getting better game by game. So you can argue that. Again, they are a form team as well. Many bolunga bura form hai. Compared to Chelsea, the better form hai. Ankit Bhai, as Milan fan out for four backs, who's the weakest link? Okay. So basically, Serginho Dest is the weakest link. No two ways about it. Yes, Tomori and Kolulu actually play well together. ये लास्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ लास्ट सीजन आपने देखा था, सिमोन कियर वाज आउट, ठीक है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि यार यस डेफिनेटली वी कैन टारगेट दैट राइट बैक बिकॉज बैलोटोरे एज मच एज हाँ डिफेंसिवली यू कैन थोड़ा आर्ग्यू, लेकिन उसके पास बंदे के पास पेस है. तो आई वुड से दैट मोर देन बैलोटोरे आई वुड गो विद सर्जिनियो डेस्ट. बाइरॉट ब्रोया, यार ओबामयांग पहला गोल मारा है. I think it's about building that. Plus, it's a do or die game. Let's be honest. As much as say Aubameyang, Mason Mount, and co have not looked like 100% convincing in a almost a must-win game at home, जहाँ एक ग्रुप में हम फोर्थ है, I think we might have to go with the the tried and tested ज़्यादा. Broya will be an impact 100% आएंगे if we need a goal, I feel. But early substitutions, bro, compared to जो हुआ था weekend में. If Chelsea lose today, will they be in best European tournament, Europa League? Oh man, पता नहीं यार, मतलब हिस्टोरिकली तो यूरोपा लीग के हम बहुत अच्छे परफॉर्मर्स है, बट लेट्स नॉट गो देयर. आई वोंट थिंक नेगेटिव है अभी के लिए. कम ऑन, इट्स जस्ट द थर्ड मैच डे. एंड यस, लोन वुल्फ बोल रहे हैं भाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इन केस यू नॉट, प्लीज लाइक द स्ट्रीम, सर्टनली हेल्प्स. या बिल्कुल नरेन, मैंने देखा. इट्स अबाउट ओल्ड फ्रेंड्स गेटिंग टुगेदर. ऑफ कोर्स माल्डिनी भी एसोसिएटेड विद एसी मिलान, सबको याद है भाई. बट नेस्टा, आई बिलीव नेस्टा ने कंप्लीट किया उनका करियर बाद में माल्टिनी के, तो प्रीटी श्योर सिल्वा मस्ट हैव प्लेड विद हिम. व्हाई डू यू थिंक Dest is capable to stop Chile and Raheem? Well, I believe it is the fact that what they want to do, that is Chilwell or Raheem Sterling, what they want to do. If Chilwell and Raheem Sterling को बोला जाए कि just attack man, you have Serginho Dest man, just attack him, I think they will get the better of him. But if Serginho Dest goes forwards, वहां पर he is pretty good, and that's the thing that जो हमें नहीं करना है. We don't want to get too defensive as well, Darren. Yes, Aditya बोल रहे भाई, everyone like, share, subscribe so that more people join us today for a very important stream. Absolutely, put Chelsea in lineup on scene. Yeah, चलो ये एक बार डाल देते. I think people have joined late, so they may not have seen it, but anyway, let's put it. Or by the way, yes, we are going to be discussing all the groups. We are going to be discussing भाई बाकी जो हो रहे हैं matches as well as जो हुए, एंड बाकी टीम्स के भी लाइनअप हम डिस्कस करेंगे. इसलिए बहुत जल्दी आए भाई आज. सब लोग बने रहना, सब लोग, और सब लोग लाइक कर दीजिए. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर बाय चांस यू नॉट सब्सक्राइब. बट दिस इज द ऑफिशियल लाइनअप फॉर पीपल हु कैन सी नाउ फाइनली, ठीक है. तो बेस्ड ऑन दिस अब देखिए बैटल्स क्या है, which is the number one battle apart from Rafael Leao versus
रीस जेम्स. आप लोग बोलिए which is the other battle जो आपको लगेगा will be the outcome of the match. And then I'll come back to you. Zakaria is the new Bakayoko, what hasn't played single minute. Ajinkya, ये साउल जैसी साइनिंग थी यार. Tuchel, I think, had admitted towards the end of the transfer window कि भाई I didn't know about this transfer 6 hours before the transfer deadline. Same, Zakaria has said it. So it was pretty sure that it was not a pre-planned one. ये एक third या fourth choice था. But the guy is actually a decent player. A problem ये है कि just like a Koulibaly वो Premier League में खेले नहीं. So maybe that is why Potter is not 100% convinced. और हो सकता है he's not got in a lot of games even for Juventus इसलिए मैच फिट भी नहीं हो. There are a lot of reasons to it. और ऑफ कोर्स हम जो सिस्टम खेल रहे हैं, आई सी जकारिया मोर एज अ सिंगल पिवट और ही कैन प्ले सेंटर बैक देन अ डबल पिवट सेंट्रल मिडफील्डर, क्योंकि हमें चाहिए अपने सेंट्रल मिडफील्डर में समवन हु कैन एक्चुअली move forward with the ball, and that is probably both Loftus-Cheek and Kovacic, especially at home, considering कि हम खेल रहे हैं two wing backs आज. I don't know what goes in Pep's mind. No Rodri today. Silva, Gundo, double pivot, both Grealish, Ocha. Arey bhai, interesting. Let me start this Manav and come back to it in 2 minutes. Arey Abhishek, big up bhai, kaise ho? Always good to have Abhishek as well, an almighty board member. Players who made me fall in love with football, Kaka and Lam, hence will be supporting AC Milan today. Oh my God, Utkarsh, क्या भाई opposition हो जाए आज तो, लेकिन हाँ definitely Kaka is my hero as well, bro. I must say. I would like to see Carney and हाँ Carney Chukwuemeka अगेन सब्स में दिखाने वालों आप लोग को. यस, सब्स दिख रहे भाई. मिलान के सब्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. बाय द वे, डिवॉक ओरिजी इज बैक ऑन द सब्स्टिट्यूट बेंच. वाओ, दैट इज इंटरेस्टिंग. अब अगेन अ लिवरपूल प्लेयर, ही नोज दैट, एक्स लिवरपूल प्लेयर, बट ऑफ द बेंच यू नो व्हाट ही कैन डू. एंटी रेबिच, ही हैज आल्सो बीन गुड अलोंग विद जिरू. लेकिन ब्राहिम दियाज फॉर मी इज दैट गाय जो चेंज कर सकता है समथिंग मोर देन द यूजुअल. यहाँ पर ब्रोया है. Havertz, it's good to see Havertz is there on the bench. He's not injured. हाँ थोड़ा सा इश्यू था तो हो सकता है he might have recovered. Pulisic is there, of course. Gallagher, the hero of the weekend, is there, of course. Zakaria हम बात ही की, is there on the bench. Ziyech, Jorginho, Aspilicueta, भाई चेल्सी का तो स्टार स्टडड बेंच है absolutely. लेकिन हाँ कार्नी चुकुमेका नहीं है. मार्क कुकुरेया is not starting. That's interesting as well, people. लेकिन ट्रेवर चालोबा is there. Nice to see ट्रेवर चालोबा, सच में बोलूं तो भाई. कार्नी चुकुमेका was ill as well from what I hear, or plus he's a youngster. I don't think he's going to basically play every match or feature in every match. भाई everyone, भाई let's listen to this. भाई सब लोग let's ASAP get to I think 100 likes हो जाए. Come on, 100 likes हो जाए. अभिन, हेलो कैसे हो? yes, Derin, वो सही बोले आप. He's probably बाकी में साउल में बोलूंगा. Derin, let's go people. Okay, like the stream. Yeah. Why Chelsea don't give to Chukwuemeka? Because he's not 100% fit. वो भी ill थे along with Kukurea. Again, he's coming back. He's a youngster. You have basically in such a huge game experience, which counts more in my opinion. Europa is going to be late. Arsenal, Chelsea, United, and Barca. Oh my God, ये तो मेरा FIFA stream हो गया यार. Chile overlaps are too dangerous. Well, attacking wise मैं बोला हूँ. Maybe the fact कि हमें चाहिए goal. He started with Chilwell and not Kukurea is what my guess is. And of course, a little bit of rotation तो है ही खैर. Hi, Justwala. Always nice to see you as well. But Chilwell, having said that, weekend में थोड़ा एजी था परफॉर्मेंस उनका. हाँ, it was in a back 4. यहाँ back 5 में तो maybe he wants to give a chance, second chance to Chilwell. The final passing which have been in problem cities as well in the important matches. Yeah. वही है, मतलब वहां पर स्टर्लिंग जो रोल खेल रहे थे in the first few matches. अभी the fact is he will not be that core center forward. You have Aubameyang starting. So hopefully football creaks. He'll do better. He'll be at the end of things क्योंकि Aubameyang might just play him in. वो मैं बोल रहा हूँ. आप बोलिए what do you think? Silva and Koulibaly on Giroud is fantastic battle. Wow, yes. This is something that I'm looking forward to really. और last season जो लोग सरिया देखे थे भाई Giroud versus Koulibaly भी तो. That's really interesting to see, of course. Reece on Liao with Fofana and support is also effective. Pep playing 4-4-2. चलो वहां भी देख लेते एक मिनट में. We should not concede first. Finally, Koulibaly is back. Rodri is injured. I know. Chalo, I'll just pull up the lineup of City because I see that बहुत लोग interested है. तो भाई, I'll come back to Chelsea in just a minute. तो रुकिए, just a couple of minutes हम quickly बात कर लेंगे. और yes, again, looking at the lineup of Chelsea, सब लोग बता दीजिए क्या लगता है आपके score predictions. मैंने तो गया है, I went 2-1 for Chelsea. But looking at a lineup, मुझे लगता है हम actually solid रहेंगे. Is it me being too arrogant? मैं बोल रहा हूँ भाई, maybe Chelsea will just get a clean sheet आज. Yes, I've said that. हाँ, Koulibaly is playing his first game under Potter. फिर भी I'm saying that we might actually get a clean sheet, or it might be a closer game that I think it is.
तो आई थिंक 1-0 होगा एंड देन लास्ट में एक और गोल हो जाएगा. 2-0 मैं बोल रहा हूँ चेल्सी के लिए अभी. पहले 2-1 आई वेंट, बट एनीवे लेट मी पुल अप द अदर वन. मीनवाइल चेल्सी के ग्रुप में सॉल्जबर्ग और जाग्रेब हो रहा है. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां पर अगर एक टीम ले लेती 3 पॉइंट्स, इज अ प्रॉब्लम फॉर चेल्सी टू एन एक्सटेंट मिलान. तो सॉल्जबर्ग जाग्रेब अभी 0-0 है 62 मिनट्स. लेकिन लाइप्जिग सेल्टिक भी देख रहा हूं मैं टीवी में. भाई 1-1 हो गया लाइप्जिग सेल्टिक. डिड आई मिस द गोल? व्हाट डिड आई डू? ओ माय गॉड, यहाँ पर एक लाइप्जिग ने चांस मिस किया बाय द वे, जस्ट सो यू नो. एंड भाई सेल्टिक के जोटा स्कोर कर दिए. बट एनीवे लेट मी पुल अप द मैन सिटी का लाइनअप मीनवाइल. ओके, सो मैन सिटी, ओ माय गॉड, यस यू आर राइट. मैन सिटी लुक्स लाइक 4-4 जा रही है भाई. ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो गया क्या? लेट्स सी, आप लोग क्या बोलोगे. लेट मी शेयर इट ऑन द स्क्रीन. लोन वुल्फ बोल रहे हैं 1-1 ड्रॉ. ओके, 2-1 फॉर चेल्सी बोल रहे हैं अभिन. अजिंक्य 1-1, अंशुल 2-0. आई जस्ट वांट टू विन, दैट्स इट. एग्जैक्टली, दिस इज द बॉटम लाइन. जस्ट वाइल एग्जैक्टली, आई एको यू. If we win today and the other match is a draw, then we climb to second spot. बिल्कुल. I think 4 तो absolutely minimum है अंशुल. 4 points out of these 2 fixtures. Ideally 6. 4 तो minimum है. 6 to basically top the group. और 4 ले तो we can come second confidently, मैं बता सकता हूँ. हाँ, it also depends on other fixtures, लेकिन फिर भी I don't see quality इतना है उनका for to win the remaining 2 fixtures as well. तो यहाँ पर let me pull the Man City lineup. Meanwhile, let me wait for the guests as well. यहाँ पर let me put my ईयरफोन भी डाल देता हूँ भाई. पीपल एवरीवन, भाई सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. अच्छा, मैन सिटी में गोमेज स्टार्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक इट डिजर्व्ड इट. जो हुआ था वीकेंड में परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन दैट गोमेज, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था. लपोर्ट स्टार्टिंग, इट्स ह्यूज मैन फॉर सिटी फैंस. बट मिडफील्ड गायब. ये क्या मिडफील्ड है भाई? ये क्या मिडफील्ड है? यू हैव Gundogan, almost like a 4-1-3-2, I believe. Yes, you're almost playing like a 4-1-3-2 with Gundogan, and just in front होगा Silva, Grealish and Mahrez. और Grealish Mahrez obviously central midfield तो नहीं खेलेंगे. और Alvarez और Haaland, Alvarez in behind. अच्छा, looks like it a 4-1-4-1 मैं बता सकता हूँ actually. 4-4-2 आपको लग रहा है. You can call it a 4-1-4-1. I think maybe Silva and Alvarez will play in behind Haaland, with basically Grealish and Mahrez flanking. और आपके गुंडोगन होंगे होल्डिंग, जस्ट लाइक अ चैंपियंस लीग फाइनल. लेकिन कोपेनहेगन का बहुत सबसे बढ़िया क्या लगा मुझे, क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन. भाई एसी मिलान का ऑल्सो मैच है आज. वो याद दिलाता मुझे कार्लो एंचेलोटी का क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन. बहुत ही बढ़िया लगा वो. लेकिन भाई मैन सिटी कोपेनहेगन, आई थिंक इट्स एन अटैकिंग लाइनअप ऑफ मैन सिटी. प्रीटी श्योर यहाँ पे कोपेनहेगन माइट जस्ट स्कोर, कंसीडरिंग कि यार पीपल आर बैक, लाइक गोमेज और लपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक गोल दे देता हूँ. लेकिन मैन सिटी कर देगी भाई 3-4 गोल्स, नहीं 4 गोल्स बोल देते हैं. भाई 3-2 विन डेरेन बोल रहे हैं. चेल्सी विल स्कोर फर्स्ट गोल. फुटबॉल किक बोल रहे हैं 1-1. Last time in Bayern lost UCL group game, Musiala was 10 years old, record 31 games unbeaten. हाँ, उत्कर्ष, उससे मुझे याद आया, चेल्सी का भी एक बताऊंगा. आई नो इट्स नॉट क्लोज, लेकिन चेल्सी का, यस, जस्ट कमिंग बैक टू इट फॉर 1 सेकंड. और सब लोग भाई मैन सिटी कोपेनहेगन बताइए आपके प्रेडिक्शंस इन द चैट बेस्ड ऑन द लाइनअप. चेल्सी का 21 games at home in the Champions League, we have lost just 1, I believe. That's like a crazy record. So I think we have a good record at home. Having said that, I don't think we have done well against Italian sides, or Italian side, AC Milan particularly, has not done well against English sides. So something's got to give. Something's got to give. Is it a high scoring draw like Ajax? पता नहीं, देखते हैं. जो Ajax के साथ हुआ था कुछ साल पहले under Lampard. Most attacking lineup by City 4-4-2. Yes, we are playing more like a 4-2-1-3. हाँ, I believe it might be a 4-1-4-1 really. ये मुझे लग रहा है. Again, I might be wrong, but again, it depends. अब पता है यार, मतलब सिटी में you cannot really restrict to a 4-1-4-1, 4-2-3-1. They just keep moving wherever they want. भाई उनके जो फुल बैक्स होते हैं वो मिडफील्डर्स बन जाते हैं, जो टुकल भी चाहते थे इन चेल्सी बाय द वे. लेकिन हाँ, that obviously something that happens. Oh, what a goal, bro! What a goal! So Szoboszlai with a banger of a goal for Leipzig on the 62nd minute. और यहाँ Leipzig lead ले लिए. They are what? 2-1 against Celtic as things stand. Oh my god. I feel Grealish will tuck into the left central midfield position. Okay. Bernardo right central midfielder. Okay. Yeah, that might be a possibility. That actually it might be a 4-3-3. Fair enough. Europa is gonna be lit. Gaurav, come on. Why bro is not starting again? मैंने Gaurav, आप सुन रहे हो ना? मैं 2 बार दोनों आपके दोनों कमेंट्स का मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया यार. पता नहीं, कोई नहीं. लेकिन अगेन पीपल, लेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. भाई लाइक्स कितने हुए? होपफुली वी हैव गॉट 200 लाइक्स.
Let's get to 100 likes quickly as possible so that ज़्यादा लोग आएंगे और मजा आएगा absolutely. और of course we are going to be discussing a lot of other games as well. Again, City और Copenhagen का let me know in the chat आप लोग क्या लग रहा है. Meanwhile, let me try and pull up और थोड़े in terms of the score lines or in terms of the lineups. Yes, I'll wait for the Chelsea panel और we'll discuss. Of course, Chelsea तो हम discuss करेंगे ही जब आ जाए, लेकिन वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग. भाई रियल मैड्रिड का भी मैच है भाई. रियल मैड्रिड अगेंस्ट शाख्तार दोनेत्स्क. यहाँ पर पहले मैंने ग्रुप्स नहीं दिखाया, तो ग्रुप्स दिखा दे क्विकली. तो ग्रुप्स का क्या सिचुएशन है? ऐसा गोल चेक हो रहा है यार. अरे वीआर लगता है डिसअलाउ करने वाला है. क्या हुआ यार? लाइप्जिग का स्लोबोस लाइक अच्छा गोल तो था. अगेन मैं डिटेल में देखा नहीं, मतलब गौर से, लेकिन देखते क्या हो रहा है यहाँ पे. आई थिंक विजन, ओके, देयर माइट बी अ प्लेयर इन द विजन, ऐसा कुछ है, ऑफ द गोलकीपर एंड दैट प्लेयर इज ऑफसाइड पॉसिबली. हाँ, वो हो सकता है, लेकिन आई थिंक कम ऑन ब्रो, इट्स अ ब्रिलियंट गोल. हाउ कैन यू चॉक आउट दैट गोल? ये झुका है. हाँ, आई थिंक गोल विल बी चॉक्ड आउट, क्योंकि क्लियरली इट वाज इन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल और वो बंदा ऑफसाइड था. हाँ, वो झुक गया, ही डिड नॉट प्ले, लेकिन ही वाज इन द लाइन ऑफ द गोलकीपर. जो देख रहे हैं आप लाइप्जिग और सेल्टिक, वो लाइप्जिग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसलिए हम ग्रुप्स दिखा रहे हैं बाय द वे, एज वेल एज अदर टीम्स जो हम आएंगे. ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड एंड चेल्सी एंड यू नो मैन सिटी एंड बेनफिका, पीएसजी सब आएंगे. और भाई यहाँ ऑफसाइड दे दिया, नो गोल, 1-1 हो गया वापस से. तो लाइप्जिग इन द मड पीपल, लाइप्जिग इन द मड. भाई सेल्टिक के साथ भी नहीं कर पा रही, क्या बोले भाई. लेकिन अगेन लेट मी सी आप लोग क्या बोल रहे हो. मीनवाइल आग लग रहा है पेप कोपेनहेगन को खत्म ही कर देगा, इतना अटैकिंग लाइनअप. Leo on the left, Nkunku is the central attacking midfielder for Chelsea next season. Wow, that is like FIFA stuff, bro. अंशुल बिल्कुल. रियल मैड्रिड प्रेडिक्शन आते हैं भाई. रियल मैड्रिड दिखा रहा था, उससे पहले मैं ग्रुप दिखा दूं. अरे गोल हो गया, नेक्स्ट मोमेंट ही गोल हो गया लाइप्जिग का. चलो स्कोर डाल ही देते हैं स्क्रीन पर. आई थिंक ये इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है थोड़ा साथ साथ में. दैट इज इंटरेस्टिंग एज वेल. तो भाई ये फिट कर सकते क्या अपन? ज्यादा हो गया, आई नो ज्यादा हो गया, लेकिन कोई नहीं. आई थिंक लेट्स एक्चुअली डू इट. भाई लाइप्जिग 2-1 सेल्टिक. ठीक है, तो मैं स्कोर डाल रहा हूं अभी के लिए. एंड दैट इज आई थिंक ओके. सिल्वा स्कोर्ड भाई. नाइस गोल, नाइस फिनिश, डेफिनेटली नाइस फिनिश भाई. जो हट हगे सेल्टिक के लिए गिफ्ट दिया उन्होंने लाइप्जिग के प्लेयर को, एंड दैट इज व्हाई द गोल हैपेंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. सोबोस्लाई को गिफ्ट दिया और सोबोस्लाई पास्ड इट टू सिल्वा एंड सिल्वा गॉट इट इन इजीली. बट कोई नहीं. लेट्स एक्चुअली लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्रुप नाउ. कौन सा ग्रुप देखेंगे पहले, बिफोर यू नो टेकिंग मोर प्रेडिक्शंस एंड सीइंग मोर लाइनअप्स. ओके, तो चलो भाई, ये अगेन हमने डिस्कस किया क्विकली अबाउट चेल्सी मिलान लाइनअप्स, और जाग्रेब और साल्जबर्ग खेल ही रहे. तो आप देखिए, एज थिंग्स स्टैंड इट इज बेसिकली दिस, जाग्रेब विल बी सेकंड, चेल्सी आर फोर्थ. तो हमें चाहिए 3 पॉइंट्स, दैट इज हाउ इट इज. लेकिन कमिंग टू रियल मैड्रिड नाउ, लुक एट दिस, दे आर ऑलरेडी इन पोल पोजीशन. अगर रियल मैड्रिड जीतती है बैक टू बैक मैचेस अगेंस्ट शाख्तार, भाई मैं तो बोलता हूं दे विल बी थ्रू. और मैं तो प्रेडिक्ट भी वही किया हूं. अब देखते हैं, बिकॉज शाख्तार दे काइंड ऑफ नो इट, दे हैव बीन प्लेइंग ईयर इन ईयर आउट ऑलमोस्ट. लेकिन लाइप्जिग भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल ये वाला, बिकॉज नाउ अगर शाख्तार हारती है, लाइप्जिग कैन कम एंड दे कैन कम टू सेकंड. दिस इज सिचुएशन ऑफ दिस ग्रुप. एंड ऑफ कोर्स बिफोर गोइंग ऑन टू द लाइनअप्स, मैं मैन सिटी का भी डिस्कस कर लूंगा, बिकॉज we just showed the lineup. Okay, we have Shrey as well as Fahim waiting. I don't know for how long Fahim is waiting. Hey bro, what's up? Hey bro, how's everyone doing? All good. Shrey as well. Bhai, you guys are waiting for a long time, kya? No, I just came on. I just come on. I'm like, maybe I was just blabbering away and I forgot that there are people waiting backstage. It happens, right? Anything. But great to see Fahim. And by the way, people, shout out to Fahim's channel, Shrey's channel as well. Firstly, please go and check it out. Fahim is doing madness, I must say. Fahim, definitely crazy editing, bro. Keep it up. And of course, madness. Hopefully, we'll celebrate 50K very soon for you. But Shrey as well, let him get to 1K. People, please do support these channels. Fahim knows stuff as well. Shrey, of course, our blue boys in the house. So first I'll start with Fahim. Fahim, I have shown the lineups, but yes, by the way, people asking for Real Madrid. You have a few predictions, and I'll come back to that. But for me, it's huge, bro. I know it's just not Thiago Silva having played Milan for so long, then Giroud, Tomori, a lot of other factors. But
And of course, me myself have followed Milan for long for him. But what is your take? Like, what is going to be like the make or break situation in today's match? It's a do or die. Would you also say that What this game for Thiago Silva? for Chelsea in general, right? Yeah, I said this in my preview that this is a must-win game. If we don't win this, then I think Europa League tune will come back at Stamford Bridge, and we'll be playing in Europa League, or might even might finish last because right now we're last in the group with -1 goal difference. So this is a must-win game. If we had won our first two games, those two teams were our easiest opponents in the group. If we had won those two games, I think I would have taken at least a draw for against AC Milan and AC Milan at San Siro, because AC Milan are one of the top teams in Europe right now. They've won Serie A last season, so they're no mugs anymore. They're no mugs. They were mugs maybe a few years ago, but now they've got a very, very strong team. But I know that by looking at the lineup, they are missing a few players, key players, Teo Hernandez and I forgot the other player Yeah, the in Calabria, who's the leader as well, right? Calabria and Theo Hernandez are missing both the fullbacks. But most and importantly, I goalkeeper. think Simon Kier, he's not there. In a strange way, that might be actually a blessing in disguise for them, because for me, Kalulu and Tomori looked crazily good towards the end of last season. But I know it's just one game. Maybe I'm just overreacting there, but I don't know. Like, people are just saying that Salzburg have scored. Oh my God, Mm, is it? yep, Let me just check one it goal. up. Oh my God, the situation changes. Okafor scores a penalty. They get a penalty, and yes, Salzburg have scored. So all of a sudden, Salzburg, if I'm not wrong, on 6 points. Five points. 5 points, sorry. 5 points. Oh my God, that's crazy, bro. 100% crazy and stuff. But let's see what people are saying. Anglia for Chelsea, Oban, Sterling, and for Milan, Bannister, Giroud, or Tonali. If you're asking for a choice, I don't know, man. For me, I think it's a Stamford Bridge. I'll still go with maybe Oban, Sterling kind of doing better. Yes, Giroud is coming back, but the fact is, our midfielders are also main midfielders are missing. You can argue that Kante and Jorginho are missing, but I don't know, man. Let's get Shrey in. Shrey, again, Fahim has spoken about here. We are missing players. क्या लगता है आपको यार? For you, uh, it's about Chelsea missing the midfielders, which is a bigger miss in terms of maybe a Kante or Jorginho, especially for this kind of a match, जहाँ पर you have a Benacer in form, especially in Tonali's creative element. Yeah, Milan के basically fullbacks missing है, which you think will be the main miss. I think it's for me, Ankit, it's just not about them missing their fullbacks. They are without their proper centre back in Kajay. They have not even got their proper goalkeeper in Mike McNeil. Hmm. They don't even have the two fullbacks. They don't even have attackers, because at right is Sile Marcus. It's not Krunic. In reality, Sile Marcus is the player to play, and they don't even have a bench today. Yep. Like, that can I think really change their the set game. Messias is also missing और Salamakers भी miss कर रहा है. So I think with those two missing, it's almost like saying that they might play a little bit compact, they will play a little bit narrow. और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, no, that is why we are talking about Chelsea missing midfielders. क्योंकि with Krunic being there, he might be that extra extra midfielder that maybe a Loftus-Cheek needs to deal with. So maybe I don't know. मतलब going five at the back. Rather, I would have said that maybe he should have gone, five in midfield or one extra central midfielder. What do you think, Fahim, about that? In terms of our midfield, Yeah, yeah. Don't you think you're like looking at basically our midfield missing that extra midfielder? Like, maybe. But again, options was there. Like Gallagher could have been that option, maybe, right? hmm yeah, I mean, our midfield is probably looking very, very weak right now. It gets bypassed very, very easily. So we definitely need to crowd that midfield. I think that's why we're playing three centre backs, is because to protect that midfield. Because I think against Crystal Palace, Jorginho and Kovacic, I mean, they weren't at their best. We know that they can do a lot better. So I think Potter will definitely protect that midfield with those three centre backs. But I think it's also to not allow players like Leao and Giroud to take advantage of Chelsea's lack of physicality in the middle. So, look, I think this lineup should still be a strong lineup. That midfield should still do the business. But it's just a worry about who will protect that defense in midfield. Will it be Ruben or will it be Kovacic? I don't know, because for me, them two,
sometimes they do lack some, maybe not Kovacic, but Ruben is especially, that he does sometimes lack awareness in terms of his defensive duty. So we'll have to wait and see how he does. Okay. So by the way, Adri is actually saying that it'll be the goal scorers, Aubameyang and Sterling, and for Milan, Benacer or Giroud, and Benacer and Giroud or Tonali. Okay, that's what he's saying. I thought you're probably asking us to pick, who's the better kind of, as in who will have the better game is what I'm guessing. But anyway, okay, let me take a couple more comments यहाँ पर. Thanks Nathan as well. Big up आपको absolutely. Also Man United scouts from Stamford Bridge, Luman. Come on, let's not get naughty, but you know what I mean. But anyway, Man City are going all out for Bellingham. Again, transfer stories, it'll kind of go on forever. Especially Bellingham, it's a lost cause, bro. With many clubs. Okay, Chelsea 2, AC Milan 1. Chelsea will dominate the game, but will concede a stupid goal. Oh my God, that's a nice way of putting it. Not a like, but come on. Okay, first of all, everyone, I've been saying it. I've been live for like 41 minutes. I'm very surprised that so many people watching. We don't even have 50 likes. Please get us the likes up, because that is the क्या बोलते हैं, खाना है stream के लिए. तो stream will kind of move forward with more likes. Simple as that, because it's going to be a long night. Hopefully, not a long night in terms of the result. Long night in terms of just one that is one to remember. But Shrey is back as well. And yes, let me put up the lineup again. And yes, we are going to be discussing other lineups as well if time permits, as much as possible. Because the Chelsea अपने panel है अभी, इसलिए हम बात करें Chelsea के लिए अभी के लिए वापस से. तो Shrey, again going by this. So we have spoken about basically the fullbacks, their fullbacks missing versus our midfielders missing. Now Koulibaly is a big element यहाँ पर coming in. The way that we are structured, the way that Koulibaly शुरू किया Shrey, what do you think about basically our tactics? Like, is it simply because Giroud is there, or एक physical element चाहिए थी? I was actually thinking कि maybe हम जाएंगे Koulibaly, Silva, and yes, Fofana भी है. So I was thinking that maybe the fact that Aspi might play, क्योंकि we don't have so many passers with Jorginho not being there. So I was thinking that maybe Aspi can get that long in ball ना, मतलब ऊपर से जो through ball करते, तो मतलब are you surprised with that defense, or you think नहीं, for Giroud we needed at least all the three being pretty much tall and strong? I think Koulibaly was played just to handle Giroud, because I think Ankit bhai, with the you were talking about having Silva and Koulibaly in a back four. For me, that would have been toasted, because both of them being above 30 and not being that pacey, I think Rafael, Krunic at the counter would have really caused us a lot of problems. So I think I can understand why Potter has done that, because having these three hinders defense really helps them handle Giroud. Like, we have seen a lot of times that one Chelsea defender like Fofana, even in the last match, has sometimes was manhandled. Our midfield was manhandled by Edward, Zaha, and Jordan Ayew, even if he's small. So Chelsea are always manhandled by the physicality. So I can understand why Koulibaly was played, because Koulibaly can handle Giroud much better for me, along with Silva than Fofana. So I can understand that for extra protection. But again, seeing the AC Milan squad, I think we should have gone with Silva and Fofana, just two of them, and should have gone attacking and got the lead, because I think seeing Milan, I don't think Milan would attack us so much. And knowing Pioli, I think Pioli is not the attacking manager in the big games. He's a manager who will try to go on the counter and be a much more balanced manager. So we should have gone more attacking. This is just like inviting more pressure. But again, as Ankit, you said in the video earlier, I think again it's going to be Chelsea starting with dominance. Can we make most of it? That's just it. हाँ मतलब exactly मतलब that's a fact. अगर मतलब again being someone who follows Milan very closely over the years and this year as well, by Milan ka main attacks obviously with Leao being the the pin-up boy comes on the left hand side, लेकिन with Theo Hernandez missing, you can argue कि नहीं होंगे. Having said that, Balotore is underrated in my opinion. He's pretty good attacking wise. So Balotore along with Leao will be there. So our right flank is extremely important. So Fofana has a big role आज, or of course Mount maybe may play that side because ज़्यादा tackles गए, ज़्यादा second balls we might have to get to, or that's why maybe Mount is playing and Fofana is playing. But on the other side, I agree with you. Left side जो अपना है कि वहाँ पर we probably should have attacked, man. Dest, with all due respect to Dest उनका weak link है big time. ठीक है, उसका basically what start Dest had, he didn't have a good start at all. So Fahim again, Sterling in that first game, he scored against Salzburg, right? We played, I know it was the first game for Potter in Chelsea, right? So to speak. So, but do you think like again Havertz is on the bench, not having Havertz maybe playing here and Sterling instead, is the fact that no, as in it's about
giving Chilwell confidence, because Chilwell had a fairly, I think, average game. By the way, Leipzig have just scored. This time, I believe Soboslai probably will get the goal, or is it Silva? But Fahim, just coming to you again. What do you think about the Chilwell part, bro? As in Chilwell, Kukurea is on the bench, probably coming back from illness. But Chilwell, who didn't have a great game, I believe, in the weekend. I thought so. I don't know what you think. He's kind of starting maybe in a wing back role this time instead of Sterling, who actually did pretty good against Salzburg. Yeah, I think like against Crystal Palace, I don't think he played that well, Chilwell, compared to his standard. But I think that's obvious because of the injury that he picked up for like a few months ago. The fact that he was out for football for almost the whole season is going to take time for him to come back, and I think a lot of people haven't realized that when you pick up an injury like that, it's going to take at least a season to come back at your best. He looks rusty. He does look slow. But I think playing him at wing back it suits him now because he's adapted to that new role that Tuchel played him when he was in charge. I think as a fullback, he has to do a lot more sort of defensive work, and as a wing back, he can definitely run inside the box. And we've seen with Cucurella, like he doesn't make that dart-in run, that diagonal run into the box like Chilwell does. Marcos Alonso used to do that as well. I think Chilwell has now developed that into his game. So I think him starting on left wing back will definitely help as well as Sterling. I think Sterling needs someone who can overlap him to make him perform well as well. So that left-hand side is looking solid. I'm happy with that left-hand side, and I hope Venture will plays well today as well. Yeah, probably, if at all there was a chance for Ben Chilwell to overtake Kukurea, if he can ever in Potter's books in recent times, probably this is the chance. क्योंकि अगर आज वो अच्छा करे तो everyone let me know Ben Chilwell, what are your thoughts as well in the chat. Yes, by the way, we are coming to other games, इसलिए we have started quite early today. We will be discussing game by game, but we have a Chelsea panel, तो अभी Chelsea के लिए थोड़ा ज़्यादा discuss करें detail में. Yeah, Devesh has hit the nail on the head. और यहाँ पर Shrey, I've got a lot of comments, DMs, whatnot. Ki bhai, if Milan score today, will you be celebrating or not? Is the comment. Man, everyone, come on, bro. I am out and out Chelsea fan. There's no two ways about it. Milan ke liye, I had a soft corner always because of certain, footballing heroes that I had. There's a difference. And of course, when you start watching football, Milan was my first kind of, as in club that I watched. So it's like obvious I had a inclination towards them. But eventually when I really saw a lot more football, Chelsea is obviously what I picked, and that was again a lot of time for both the clubs. But I'll put it to Shrey. Shrey, come on, Giroud, celebrate. He won't celebrate, right? Pretty sure, if in case hopefully he doesn't score. I think he won't celebrate, but I don't think he will score today. I think we'll comfortably win. So for people, I think you can get happy, but it's not going to happen. Milan is going to lose today, and that's convincingly. But for me, at the moment, I wish he doesn't score, but overall, he will never celebrate. He's a very true professional, and a player, even if he scores, it's not going to be like we are going to be against him, even if he celebrates, because the things he has done for this club with the professionalism he was, I think we always love him. So that's the thing I think Chelsea fans have to remember. We sometimes get ungrateful, but he has been a true professional for us. But sorry, he's not going to score today. We are going to convincingly beat Milan. Yeah, as in I'd rather have a clean sheet. Clean sheet, but I am really longing a clean sheet. I know that's like wishful thinking for him almost. I won't be surprised if Tomori scores from corner. I won't be surprised we consider awful going from corner because we are bad from corner kicks, Ankit. We're really bad from corner kicks. And Tomori, and generally set pieces, we suck, bro. We suck in set pieces. And Kepa in goal. Like when it comes to set pieces, he's got dinosaur arms. Imagine Liao, Giroud kind of there with Tomori there. Oh my god, this looks insane. That's why Koulibaly is playing. Now I get it exactly. That's why probably we needed that because Loftus-Cheek can do, but he doesn't do enough. With Havertz missing, again that's a problem. But I'll take this question for him, and this is something like you might think that is a little bit off topic, but Shrey mentioned a very, very interesting point about Giroud being a professional about not celebrating at Stamford Bridge if he scores, in case if it happens, which we don't feel and we don't expect or hope. But for him, what is your call? Just as a footballing fan, as in, do you think, as in, is it fair for them not to celebrate? Because like this is like a huge night even for Milan. Like Milan have not done well in the Champions League period for a good while. So even if in case they get a win, this can be in the last decade their biggest win. And I'm not even joking here. I mean, it's up to the player. I mean, I'm not too bothered if it's if I think with Giroud, he respects Chelsea, and Chelsea have always respected Giroud. If it was
a case of we disrespected Giroud badly, like I don't know, we just decide to ignore him completely, then I think if he had scored, then he would definitely celebrate. But I think he's got a lot of respect with Chelsea. We've got a lot of respect for Giroud as well. I think you just have that sort of feeling that, yeah, I don't want to celebrate in front of the Chelsea fans. I have this sort of love for them as well. So it's up to the player. I don't really mind if a player celebrates. They've moved on. They're no longer Chelsea players. They've moved on. They can do whatever they want. If they feel like they want to celebrate, okay, fair enough. But I honestly think it's a feeling that players sometimes get when they score against their former club. Yeah, by the way, yes, I have updated Anshul. Leipzig is 3-1 to Celtic. So Leipzig having a very, very important game as well for them because, again, in Kunku, a lot of stories are going. For me, I don't know. Did Fahim or Shrey, did anyone take a look at the first half by chance? Leipzig game, did you see in Kunku? It's a clear, as in, what is the comparison, a proper kind of a war going on that, come on, as in people comparing Nkunku to Werner. I think it's anyone's call that, with all due respect to Werner, bro, Nkunku is far better, bro. And Shrey, any comments there? I think there's no comparison. And Timo is a player I love, and I think most Chelsea fans do because of his professionalism and the way he has played for us. But I think the overall thing is there's no comparison. Werner came on, I think, sadly, even if like it or not, it was just like Chelsea scouts were watching the FIFA game and seeing the stats and seeing the overall rating. Oh, Werner is exciting, let's sign him. But overall, Werner just came on the basis of statistics, and most of the people at that time knew that he needs 6-7 chances to score one. That was the thing with Werner. His technical ability was none, dribbling was not there, heading ability was not there. He was not able to Yeah, get past I the think player. it's only the cup games where he was awesome for us, I must say. No, but even then, I think cup games he was awesome, Ankit bhai. But I've never seen him dribble past one opponent and getting there and scoring a blaster. Oh yeah, It was like there tapping. was once that he did, and that went viral. It's like I think a collector's Southampton. It was item. like a Southampton, the 3-3 draw. Yeah, no, Yeah, exactly. okay. Yeah, by the way, this is also news. Yes, Jaren, absolutely thank for that. By the way, talking about some news, people who have missed it. First of all, again, people, I would request everyone to like the stream. And again, shout out to CFC Fahim. His channel is Madness. Go and check it out. Go check out Shrey FC. He knows his stuff, and a lot of shots coming on there as well as here on our channels. Darren has actually shared with us as well that I believe Griezmann has actually agreed upon with Barcelona, so that's huge news. 20 million plus add-ons. But Xabi Alonso kind of managing Bayer Leverkusen now for him. I always anticipated that Xabi Alonso will be one of those managers who'll come at the biggest stage, the way that he was thinking footballer. So I think for me, this can be a great move for Bayer Leverkusen. Again, he's had a history of such kind of clubs as well, where that they have a lot of midfield, and Leverkusen is one of those teams, so which kind of work there. So I believe it can be great. Dishan Bore, Giroud in scoring, Chelsea battering them 3-0. Oh my God, that's great. Dishan is an Inter Milan fan, so no surprises there. By the way, talking about Inter Milan fans, we'll have Fateh as well join us at I believe when the kickoff happens. I believe. But why is Nkunku greater than Timo? Better first touch, technical and can dribble really well. Is better than any front three. Well, you answered yourself, Anshul. जहाँ तक मुझे याद है, I think simple as that. Oh, bhai, Lepto is. Let's see, man. Again, I don't see him managing the Premier League. That'll be interesting, but time will tell. Jury's out for me, वहाँ पर. Xavi versus Bayern will be sad for me. Not gonna lie. Well, we'll come to that, Mohit. Absolutely. But Mohit, big up आपको. Okay, Manav. Let's take a few comments from the other club supporters as well. I feel Sterling and Mount versus Tonali and Benacer will be the battle of the game. Okay, if they do well and find space between the lines, that's Chelsea's game. Good game from Milan's double pivot could be crucial. Well, again, for people who have actually followed Benacer, for me, you can argue that with Kessie moving to Barcelona, Milan have actually got arguably a player who fits better in the system. With Benacer being there, Benacer is someone who's actually having a very strong left foot. He's someone who can actually be there at the center of the park, defend very well, as well as he makes those cutting passes which we miss. So that's what I'm telling. Like today, Fahim, I'll put to you in our lineup, who's that person you would expect to make those passes? Because come on, as in that we know that sideways passing is our only issue. So that's the reason why I thought that Aspi might play, because Aspi and Reece might just kind of overlap each other at times. So I thought maybe that is the best way to kind of go that way, having that extra pass.
I don't know, man. Loftus. It might have to be Kovacic. I don't see Mason Mount doing it. I don't see Ruben doing it. Maybe Reece James if he tucks inside into midfield. But that's my issue with our team, is that our midfield is so imbalanced, and we've neglected this midfield for the past 4 years. Like, it's been the same midfield for like since Sarri took over. Kovacic, Jorginho, Kante, those are our strongest midfielders, and they still are our strongest midfielders, but they're not at the level that we want them to be at this moment of time. So creativity will be too much of an ask for players like Mason Mount and Kovacic. Not Kovacic, Ruben. So I'm expecting some sort of spectacular passes from Reece James or Kovacic. I do think Kovacic has got this sort of directness in his passes sometimes, but sometimes he just doesn't show it enough. In some games he shows it, some games he doesn't show it. So that's the problem with it. But yeah, so we have to wait and see what happens, man. But I know, like, we'll be going to other games as well. Like in Shrey, very good point about Kovacic. Like for me, Shrey knows it as well. I'm a Kovacic stan, like proper stan. So for me, but I have to be very honest at the same time. Honestly, I don't see him having the kind of season that he's probably had in recent times. He's looked off the boil. Something is wrong with Kovacic. I don't know what it is. Like in Shrey, as in for you, him bombing on him, just going with those runs, that is the best Kovacic that you see. But again, do you see Loftus-Cheek then playing the sitting role, which arguably last season, if you remember, he did in was it the League Cup? I think, was it against Aston Villa? People correct me if I'm wrong. I think there was a League Cup game where I think Kante and Loftus-Cheek played. And very strangely, in that game, I remember Tuchel, it was Loftus-Cheek was sitting and Kante kind of making those runs. So Shrey, as in, is that possible, or maybe Mason Mount just coming and tucking into midfield? What do you think will happen with the Milan having three midfielders there? I think for me, it will have to be Kovacic playing the role of the pivot, staying more deep, because Loftus-Cheek, I think even as much as strong he is since he's had that injury, Loftus-Cheek just can't handle the ball. Like the ball is taken away from him and he makes very poor passes. Like I remember the game against, I believe he played against Leicester, and he made some very, very poor passes in that game as well. And the last game against Palace, there was some chances where he should have easily passed it to James in the forward area. James was free and he made a pass that went for a throw in. So the problem is we need Kovacic in that areas. But again, AC Milan will try to press us from start, especially Leao, Krunic, Catarare, these type of players. So I think it will be better served that Kovacic plays through the middle and Loftus-Cheek goes a bit forward. And then in halftime, if we are in 1-0, 2-0 up by 60th minute, we can replace Loftus-Cheek by Gallagher for more energy. But again, I think, as you talked about Kovacic form, for me, this is what happens when you play for 3-4 weeks and you get injured. Then again, you have to come back. Then injury, then have to come back. And I think we have a very, very strong candidate midfield injury of Jorginho, Kante, Kovacic. So I hope next summer is rectified, or else the same old problem will keep continuing for Chelsea. Yeah. Okay. Yeah, that's a great point. I know that Fahim has to go for now. So Fahim, but we are doing the watch along as well. You're welcome if you want to come on, and if we are like going like 6-0 victors, who knows? I know I just jinxed it there. But going, Fahim, shout out to CFC Fahim again. Before going, yes, by the way, we'll come to other matches as well. Everyone, please do like, share, subscribe, and check out CFC Fahim. Fahim, what's your score prediction, bro? I think we will concede, but I think we'll win 2-1. 2 goals. And everyone's going for a 2-1. You know, one of those games that like they're hoping that we score 2 goals, like the Palace game almost. It will be. I think it will be almost like a Palace game, but hopefully we play a lot better. But hopefully we qualify. I mean, if we get the win, I think we will qualify from the group. I think that this game is so important for us. If we don't win this, I think we're making it very, very difficult for us to qualify. But yeah, big up to you, bro. Nice to bring me on again. I appreciate it, bro. So yeah, always, bro, always. And like I said, always welcome. And again, big up for him as an up the Chelsea, bro. I'm really hoping that we win tonight. Yes, of course. We'll come back to how we do it San Siro, but tonight is about our night. That's what I really feel. But again, Fahim, see you soon, bro. And yes, people again, CFC Fahim, check him out. Let's move on to the other games. Okay, so Syed को बड़ा shout out है भाई. सब लोग सबसे पहले तो भाई सब लाइक कर दीजिए. मैं देख रहा हूँ कितने लाइक्स हुए. अभी भी 20 minutes are left to kick off. Shrey, if you're around, we'll quickly discuss all the lineups. Are you game for that?
ठीक है? Yeah, So sure. we'll discuss all the lineups for the next 20 minutes and सब लोग उसी बात पर सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, especially लाइक एंड शेयर करिए. I'm seeing just 46 likes. Come on people, we are live for so long. Come on, pretty sure there have been more views. So people, सब लोग like कर दीजिए अगर नहीं किया. Big up to Sayed, yes, 4231 Liverpool is back baby, absolutely. But Sayed, मैं आपका स्टार करके रख रहा हूँ because I'm going to come to that in just a couple of minutes, क्योंकि यहाँ पर already people were asking about others as well. लेकिन big up absolutely for the super chat, thanks by Sayed, always the gesture means a lot. लेकिन Benfica versus PSG, ठीक है, that is a huge game. क्योंकि हमने एक्चुअली ग्रुप दिखाया था क्या, हाँ, तो ग्रुप एच पहले देख लेते हैं. तो लेट मी फर्स्ट शेयर कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ ग्रुप और क्यों ये बहुत बड़ा गेम है, अलॉन्ग विद बेसिकली अदर गेम्स एज वेल जो हम कवर कर रहे हैं एज इट इज. देखिए, पेरिस 6 पॉइंट्स पर है, बेंफिका 6 पॉइंट्स पर है, लेकिन यूवेंटस 0 है. और यूवेंटस अगेंस्ट मकाबी हाइफा, फॉर देम इट्स अ डू और डाई गेम, जस्ट लाइक चेल्सी का गेम अगेंस्ट मिलान, आई वुड से एट टाइमिंग, ठीक है. लेकिन अगर बेंफिका हारती है, I would not say it becomes a do or die, but अगर बेंफिका गेट्स इवन अ सिंगल पॉइंट, दैट इज व्हाई यूवेंटस का बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. और बेंफिका को क्वालिफाई करने के लिए आई थिंक चांसेस आर हाई, कंसिडरिंग जो परफॉर्मेंस रही है इन बोथ द मैचेस. आई बिलीव बेंफिका एक सरप्राइज दे सकती है. यस, इट्स पीएसजी, यस, मेसी, एम्बापे एंड को, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ दे माइट गिव, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर द लाइनअप अभी of that particular match, and then I'll come to the Liverpool and Juventus games as well. We are just going group by group, शायद. लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए, दिस इज व्हाट इट इज. तो यस, मेसी एज एक्सपेक्टेड प्लेइंग इन दैट होल बिहाइंड नेमार एंड एम्बापे, लेकिन हकीमी, विटिनिया, विराटी, मेंडेस, रामोस, मार्किनियोस, परेरा. तो श्रेय, दे आर प्लेइंग विद अ प्रॉपर लाइनअप यार. मतलब आई नो अक्टूबर इज जनरली बिजी फॉर अक्रॉस क्लब्स इन यूरोप, राइट? लेकिन व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट इज योर एक लगता है ना कि पीएसजी भाई इस बार थोड़ा तगड़ा लग रहा है कि नहीं? यू थिंक नहीं पीएसजी, you know that knockout में क्या होना है, that is why they're kind of playing or getting their chemistry to kind of make sure कि knockout तक they understand each other better. They're not rotating much आज. I think it's a good sign because see, in the group stage we cannot say a lot of things because PSG have always impressed in the group stage. But the thing is that finally there's looking a bit more chemistry there, and as you said, I think when they will play more matches together, the chemistry will come. And I think PSG are taking this seriously because they want to carry the momentum towards knockout. And a victory today most probably guarantees them the qualification. That's confirmed then, because for me they win today. Let's say they win by 3-0, 4-0. Then there's no chance of aggregate turnover by Benfica. So for me, it's very, very interesting the way these two matches go because, as you said, if Benfica take a point out of PSG, whether in this match or next match, I think Juventus are in a massive, massive trouble. And again, they cannot sack their manager because of 60 million penalty that release clause they will have to pay. So that's where the problem for me is, Ankit. But it's so exciting, Ankit, that they are playing Messi just behind. Like, I always knew that Messi at this age cannot play at the wings. This is the best position, the creating ability role that he's got. So I'm very excited to see PSG. And then you've got Hakimi, our player I really rate, while Benfica is also an exciting team. So for me, it's an interesting match, but I do think PSG will comfortably win it in the end. चलो, मतलब मुझे भी वही लगता है कि यार, मतलब देखिए, मतलब पीएसजी के पास है, प्लेयर तो है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इतने सारे मैचेस है, इतना क्रेजी काइंड ऑफ सेटअप है अभी फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कंसिडरिंग दैट. और ये अवे गेम है बेंफिका. अगेन मैं यहाँ बेंफिका में दो शब्द बोलूंगा भाई पीपल, बिफोर यू मूव ऑन टू यूवेंटस एंड लिवरपूल गेम्स भी. भाई ग्रिमाल्डो, ही इज बिन अ टारगेट, बहुत सारे क्लब्स जा रहे हैं ग्रिमाल्डो के पीछे. आई थिंक अगेन हम बात किए थे बहुत गोंसालो रामोस, आर्ग्यूबली लोग बोल रहे हैं भाई पोर्चुगल के लिए ये शुरू करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रोनाल्डो. तो ही इज दैट काइंड ऑफ फॉर्म में, ठीक है. जॉ मारियो, यस, ही इज नॉट दैट प्लेयर व्हाट ही वाज इन यूरो 2016, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस रखते हैं एट दैट लेवल. देन आई थिंक डेविड नेरेस, दिस इज द पर्सन, मैं बोल रहा हूँ ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग. डेविड नेरेस को देखना भाई, सब लोग कीप अ केयरफुल आई ऑन डेविड नेरेस. ही इज बीन लिंक्ड टू मेनी क्लब्स एज वेल ऑलरेडी, तो ही कैन बी दैट. लेकिन एंजो फर्नांडिस, ही विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट आई थिंक ब्रेक थ्रूज ऑफ बेंफिका इस सीजन का. और इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेंफिका का क्रिएटिविटी बहुत है. तो आप देखिए यहाँ पर विराटी और विटिनिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यू हैव अ डेविड नेरेस, यू हैव एंजो फर्नांडिस हु कैन नॉट ओनली डिफेंड वेल, लेकिन अच्छा बॉल प्लेयर भी है. Otamendi will be targeted, no two ways about it. As much as वो experience रखता है, he will be targeted, especially भाई मेसी है अपने countryman, तो that will be interesting as well. तो यहाँ पर I am somehow seeing कि भाई Benfica will be good enough to score one goal. I don't think वो bad है anywhere close to it, लेकिन PSG will score a goal as well. तो मैं बोल रहा हूँ भाई 1-1 even after looking at this lineup. हाँ, unless basically
PSG, as in makes changes, then maybe Benfica will score more goals. They have kind of gone well as well. देखते हैं. लेट्स सी. अभी मैं कुछ कमेंट और लेने वाला हूँ. भाई आज इतना इंटेंस प्रेशर है पीएसजी में. आई फील आज भी नेमार एंड एम्बापे के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन होगा. जब आई डोंट थिंक सो शायद. मतलब टू बी ऑनेस्ट, जैसे हमने टेबल देखा है ना, प्रेशर इज ऑन यूवेंटस इन दैट ग्रुप. सिंपल. पर एक्चुअली बेनफिका और पीएसजी के पास नहीं है. प्लस ये अवे गेम है. पीएसजी विल बी लाइक भाई नेक्स्ट मैच होने वाला है अगेन दैट आर होम, विल बी गुड. प्लस आज स्ट्रॉन्ग लाइनअप खेल रहे, तो आई थिंक दे विल बी कॉन्फिडेंट इन माय ओपिनियन. यस, बाय द वे वीकेंड में अगेन हमने कवर किया था, एम्बापे डिड गेट अ विनर एंड अगेन इट वाज अ लेट विनर. तो यू हैव टू से पीएसजी आर नॉट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, स्पेशली अगेन बिग क्लब्स का होता है आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक. एक ही मैच हुआ है, तो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस एज वेल. तो आई डोंट थिंक इतना प्रेशर है शायद. बट अगेन बेनफिका हैज टू बी वॉच्ड आउट फॉर दिस टाइम. आई हैव अ फीलिंग अंडर गैल्टियर सिस्टम पीएसजी कैन मोस्ट प्रोबब्ली गो टिल सेमीज. हाँ विशाल, ये वही मुझे लग रहा है ना. दिस माइट बी द थिंग, और मैं इट पेन्स मी टू से इट एंड दैट्स अ रियलिटी. यस, आज हम फोकस करें चेल्सी मिलान, और एक बहुत ही ज्यादा मतलब डेस्परेट सिचुएशन है चेल्सी के लिए स्पेशली. बट द रियलिटी इज दैट इवन इट कम्स टू द एलीट क्लब्स, सच में बोलता हूं, इन यूरोप फॉर मी पीएसजी और मैन सिटी को मैं उस लेवल पर नहीं देखता था अंटिल से मैन सिटी रीच द फाइनल्स, अंटिल पीएसजी रीच द फाइनल्स. अभी नाउ दे हैव गॉट टू फाइनल्स. आई थिंक हमें देखना चाहिए उन्हें, और क्योंकि उनके पास स्टार प्लेयर है. आप बोलोगे भाई टॉटनम को भी गिनो, नहीं यार, कम ऑन. टॉटनम का दे हैव गॉन बैकवर्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड नाउ दे आर काइंड ऑफ कमिंग अप अगेन. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, यू नॉट कंपेयर टू पीएसजी और मैन सिटी. तो दे हैव रिक्रूटेड रियली वेल. तो आई वुड से दैट गैल्टियर ऑल्सो जो सिस्टम खेलते हैं, प्लस जैसे विशाल बोल रहे, ही मेक श्योर दैट जो फ्रंट थ्री अनलीश करे. तो आई कैन सी दैट हैपनिंग वेरी मच सो. By the way, हो गया यार ये मैच. Looks like Leipzig, who is up there representing Bundesliga, or else Bayern used to be the lone team every time. No hopes of Dortmund. Let's see. We'll come to that as well, Utkarsh. लेकिन yeah, congratulations to Bundesliga fans for Leipzig. Finally got the 3 points. भाई चैनल्स वर्सेस मैचेस बताओ जल्दी प्लीज. ओके भाई, सबसे पहले सोनी 10-2 में आ रहा है चेल्सी वाला मैच. तो भाई अगेन देयर आर 13 मिनट्स लेफ्ट एंड विल कम टू अदर गेम्स एज वेल. सोनी 10-1 में आ रहा है, आई बिलीव सो, मैन सिटी वाला मैच. मैन सिटी कोपेनहेगन आएगा सोनी 10-1 में. सोनी 10-3 में आएगा रियल मैड्रिड का मैच. और सोनी 6 में बोलने वाला सोनी 10-4 सोनी 6 में आएगा बेनफिका पीएसजी. ठीक है, जो हम डिस्कस किया अभी जस्ट. तो आई होप यू गॉट दैट. वीडियो गेट मैड इफ चेल्सी लूज टुडे. या इट विल बी डिसअपॉइंटिंग, इट विल बी डिप्रेसिंग मनमोहित, क्योंकि सच में बोलता हूँ, it took me a while to get over Tuchel. हो सकता है arguably I'm still not gotten over him. ये सच्चाई है. तो for me results are crucial for me to get one over Potter, no matter how we play. For me results are crucial, क्योंकि वो एक रिजल्ट ही खराब हो जाए ना, then चांस ही नहीं मिलेगा भाई. We know how Chelsea is, that's how it is. But anyway, let's not beat around the bush, क्योंकि there are a lot of matches हमें कवर करने हैं. तो भाई इसी ग्रुप का दूसरा मैच का देखते हैं. We'll come to the Liverpool game as well, जो शायद बोल रहे हैं, बट हम कल का बात करेंगे हो सके तो. लेकिन यूवेंटस मकाबी हाइफा, अगेन यूवेंटस के लिए इट इज एब्सोल्युटली मतलब जो मस्ट विन है उससे भी ज्यादा है ऑलमोस्ट. यू कैन आर्ग्यू दैट, नहीं श्रेय? तो पता नहीं आपने देखा है वीकेंड में, आई थिंक यूवेंटस लुक मच बेटर. यूवेंटस लुक मच बेटर. आप बोलिए, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूवेंटस? एलेग्री भी सेम चीज जैसे आपने बोल दिया ऑलरेडी अबाउट दे मे नॉट बी एबल टू. इटालियन क्लब्स का वही है, दे मे नॉट बी एबल टू सैक कोचेस इजीली बिकॉज पैसों की कमी है. बट आज आई थिंक डेरेन ने पूछा था दैट व्हाई डोंट दे हैव मिलिक. मिलिक इज द गाय इन फॉर्म, व्हाई इज ही ऑन द बेंच? लेट्स सी बेंच. हाँ, ही इज ऑन द बेंच. डी मरिया इज प्लेइंग. तो क्या लगता है भाई, मतलब any explanations वहां पर? मकाबी हाइफा, I don't know very much Maccabi Haifa. My guess is थोड़ा physical element Maccabi Haifa का already है, तो they want trickery with Di Maria and Kostic being there, or Di Maria also coming back, kind of bedding him in. I think Milic should have played for me, because Maccabi Haifa, Juventus need goals, and Milic has, I think in 2 Serie A games, he has 3 goals so far, and also scored in Champions League. Like this season, 4 games, 4 goals. You do not play that guy for me. Is really, really surprising the way he has played. And you could have gone more attacking, especially against them, because formation does look good, but again, when Allegri team plays on the field, it's very different. Now it's looking like a 4-3-3. It may easily look like a 7-3. That's how Allegri plays, and that's where the problem is. Today, Juventus need to take the front foot, because crowd will get restless. If Maccabi keep it to 0-0 at halftime, I can see boos, sound, and a bit of silence in the stadium, and that will interrupt the players.
And Maccabi Haifa also gave PSG a bit of hard time. After that, PSG comfortably won. But Maccabi did show that they're not a frauders here who have come here to get thrashed. They are going to show some quality, especially defensively. They will be strong. So Ankit, I think is a very interesting match. But again, they have an option on the bench in Milic if they are drawing the game to bring on and change. But again, crowd pressure, everything, can Juventus handle it? They have to score early today. और प्लस आप देखो डिफेंस में भी ना वहां पर दनीलो है, तो देखिए मतलब दे आर आल्सो मिसिंग प्लेयर्स और इंजरी यार यूवेंटस, तो मे बी वही है, मतलब दे आर होपिंग दैट टू हिट ऑन द ब्रेक एज वेल, तो इसलिए दे वांट प्रॉपर विंगर्स व्हाट आई एम गेसिंग। लेकिन आई अंडरस्टैंड मिलिक मैन इन फॉर्म नहीं स्टार्ट कर रहे, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि यार ऑन द अदर हैंड इट्स अ लार्जर पिक्चर, सरिया में भी हग रहे हैं ना प्रॉपर, तो वहां पर एक गेम अच्छा किया उन्होंने, लेकिन जनरली द सो मेनी मैचेस तो थोड़ा रोटेशन तो बनता ही है व्हाट आई एम गेसिंग। बट यस बाय द वे पीपल, भाई सब लोग कहाँ गए भाई सब लोग? यस हम चेल्सी का ही कर रहे हैं भाई, फोकस वही है, तो जाइए मत कहीं भी। देयर आर मल्टीपल गेम्स, मैंने किया है भाई प्री मैच 1.5 घंटे का, तो द रीजन आई हैव डन 1.5 आवर्स बिकॉज हमने डिस्कस करना था बाकी क्लब्स के लाइनअप्स भी, हमें प्रेडिक्शन लेना था। भाई सब लोग बता दीजिए इन द चैट, एवरीवन इन द चैट, get us your predictions. I don't think everyone commented about Benfica PSG. What is your prediction? Score predictions हो जाए सब लोग in the chat. Everyone comment. Benfica versus PSG. What is the score line going to be? हमने lineup दिखाया already. And Juventus Maccabi Haifa. Will Juventus get that needed win? Let me know in the chat. Considering जो हुआ था weekend में, I'm guessing yes. So I am going with the Juventus beating Maccabi Haifa. Let's say they will beat Maccabi Haifa 3-1. They'll concede क्योंकि वो center half partnership, I cannot see them getting a clean sheet. तो 3-1 वीकेंड में भी 3 गोल मारे थे यूवेंटस ने। आई कैन सी इनफ आर्सेनल ऑन द बेंच आज के लिए। एंड पीएसजी वर्सेस बेनफिका अवे, दैट इज, तो बेनफिका वर्सेस पीएसजी, मैं आई एम कॉलिंग 1-1। आप लोग बोलिए व्हाट डू यू थिंक? Though Juventus should win, but I was very much impressed with Maccabi Haifa with the first half performance against PSG, and Allegri should learn from the mistakes today, otherwise Maccabi can give upset। हाँ, इसलिए मैं एक गोल दिया भाई Maccabi के लिए। लेकिन वीकेंड में अगर आप देखे थे ना यूवेंटस का गेम, विशाल and everyone, they actually looked a better footballing team. That is the plus point about them compared to जो हुआ था in the previous weeks. But again, let's have more people. भाई सब लोग 50 likes भी नहीं हुए। What is this happening आज? भाई हो जाए यार, come on. Let me not go again and again. But again, shout out even to Shrey FC. Please check out his channel as well. It's linked below. I'm bad in predictions again, but I easily predict a Haaland hat-trick for sure. Well, again, maybe you would have argued कि Haaland, भाई ये quickly बात कर लेते श्रेय। Are you surprised that Haaland is literally starting every game? I've been surprised because I think they have Julian Alvarez also on the bench, and why is Pep risking him in all games when he can give the rest? Because they will need this person for the end of the season, especially in Champions League, because league is wrapped up with Liverpool doing so bad. I just cannot see anyone win. No disrespect to Arsenal, but I cannot see them continuing this. So City are winning it. Now save your person, nicely get him rehealed, go towards the Champions League, and don't do the mistakes you always do. But I think what Pep is planning is, we know Haaland is not going to the World Cup, so I think he's planning to wrap the league up by November, give him a nice 2 months rehabilitation, rest, hyperbolic time chamber rest, and then bringing him in January, and then again giving him some games bit to speed, and then going for the Champions League. I think that is the only reason I think he's starting, because he's not going to the World Cup. Yeah, that's a fair point. By the way, आज अल्वारेज के साथ शुरू कर रहे हैं, तो that'll be interesting, both of them together. लेकिन हाँ, रियल मैड्रिड क्विकली यार, मतलब 7 minutes left, we'll come back to the Chelsea predictions. भाई सब लोग predictions डाल दीजिए. For people who have not put yet, please put in your predictions. Let's see who gets the right predictions. उनको shout out देंगे हम definitely. This is, we are talking about, first we have discussed I think the Benfica PSG game, then we discussed the Juventus Maccabi game. और Real Madrid fans, भाई Real Madrid fans were asking for it as well. रियल मैड्रिड का हो जाए थोड़ा सा, क्या लगता है यार? बेंजेमा मिसिंग पेनल्टी, कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी अगेंस्ट शाख्तार, जो सरप्राइजिंगली हैव नॉट डन टू बैडली। उनके मुद्रिक जो है, ही इज अ टारगेट प्लेयर, तो क्या लगता है पोटेंशियल अपसेट और रियल मैड्रिड वॉकिंग इट अवे? I think Real will get away from this. I think Shakhtar are a team that has always like हमेशा उन्होंने Real को ट्रबल दी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जितना मेरे को हमेशा से याद है Shakhtar एक ऐसी अपोनेंट नहीं है जो Real खेलना चाहती है, कि हमेशा प्रॉब्लम देती है Shakhtar Real को। तो अच्छी टीम है, बट वही है Shakhtar का हमेशा यही होता है, 2-3 अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करती है, फिर ले लिए जाते हैं उनसे बड़ी टीमों के थ्रू। तो वही प्रॉब्लम है मुझे लगता है। कहीं ना कहीं अंकित भाई यही है कि अभी अगर बेंजेमा नहीं उस वे में खेल रहे, फेडे वल्वर्डे गोल से स्टेप अप कर रहे हैं, लाइक एक डिफरेंट रोल में, अब विनीसियस जूनियर है, आई थिंक क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी। बस ये है कि रियल क्लीन शीट से रख पा रही सीजन जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो मुझे ये श्योरिटी जरूर लगता है कि कंसीड करेगी रियल।
बट आई थिंक 3-1 एक कंफर्टेबल विक्ट्री होगी, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा रियाल के पास, बेंच पे भी फेडे वैल्वर्डे स्टेप अप कर रही है, एंड मुझे लगता है शायद इस विन के बाद मोस्ट बड़े ग्रुप रैप अप हो जाएगा रियाल के लिए, एंड वो धीरे धीरे फिर सारा कंसंट्रेशन लीग पे लगा के रेस्ट करके प्लेयर्स को आगे के लिए बचा सकते हैं, क्योंकि रियाल के भी बहुत प्लेयर्स जा रहे हैं वर्ल्ड कप, तो आई थिंक उनको भी ध्यान पे रखना पड़ेगा. Yeah, that's a great point again. Okay, bye everyone. Let's get back to the Chelsea game. Absolutely. क्या अंकित यूट्यूब पे ऐड आ रहे हैं स्ट्रीम पे? बढ़िया. अरे भाई देख लीजिए भाई, थोड़ा हेल्प करता है, बिकॉज अगेन वी आर लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर, और अगर है तो भाई ब्रिंग इट ऑन. एब्सोल्युटली. जीतेंगे आज हाला मैड्रिड, आदरी बोल रहे हैं. ओके, लेट्स सी. भाई कमिंग बैक टू द चेल्सी गेम, यस वो पीपल हैव जॉइन लेट. यहाँ पर आई थिंक स्कोर प्रेडिक्शन श्रेय आपने दे दिया ना चेल्सी वाला? चेल्सी वाला अभी नहीं दिया. आई एम गोइंग विद 3-0 चेल्सी. आई थिंक विल कंफर्टेबली बीट मिलान. ओ माय गॉड, यू हर्ड इट हियर पीपल. भाई क्या लग रहा है चेल्सी वर्सेस मिलान? ऑफ कोर्स फॉर मी इट्स लाइक यू नो वन ऑफ द मैचेस जो मैं वेट कर रहा था हमेशा से. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आई रियली बैडली वांट चेल्सी टू विन नो मैटर व्हाट, बाय हुक और बाय क्रुक. ये मैं बोल रहा हूँ सच में. दैट इज हाउ डेस्परेट वी आर. अब देखिए हम सब ग्रुप का सिचुएशन. लेकिन हाँ, आप लोग बोलिए व्हाट डू यू थिंक बेस्ड ऑन दिस लाइनअप, एंड who will be the scorers? श्रेय आप कौन बोल रहे हो? तीन स्कोरर्स कौन है? आई थिंक मुझे फीलिंग आ रही है मेसन माउंट ऑफ बिग डे विल स्कोर एटलीस्ट एक तो मारेगा ही, और स्टर्लिंग विल एसेस. आई थिंक माउंट मारेगा गोल, आई बिलीव ओबामेंग भी मारेगा, एंड आई थिंक और कोई एक सरप्राइज प्ले भी मार सकते हैं, वरना शायद आई एम गोइंग विद माउंट ब्रेस टुडे. Okay, Mount Brace, you heard it here people. भाई इंटरनेशनल ब्रेक में ही एक्चुअली स्कोर्ड. पीपल फॉरगॉट दैट. पीपल सेइंग माउंट क्यों खेल रहा है. लेकिन भाई डरिए मत. टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, हाँ टैरन वाज सपोज्ड टू जॉइन, बट आई डोंट थिंक ही इज एबल टू जॉइन राइट नाउ. कोई नहीं टैरन, यू कैन जॉइन लेटर, नो प्रॉब्लम इन दैट. देखिए, आई हैव एडमिटेड एज वेल, आई डोंट नो इट्स शोइंग. भाई मैं आज रिसेंट टाइम्स में, मुझे याद भी नहीं है, आज बहुत ज्यादा नर्वस हूं मैं बिकॉज ऑफ चेल्सी वर्सेस मिलान बीइंग सो डेस्परेट. और ऑफ कोर्स चेल्सी मिलान का थोड़ा है, मेरा पर्सनल हिस्ट्री भी है, मे बी दैट इज द रीजन, आई डोंट नो. लेकिन अगेन मैंने बोला है चेल्सी टू कम एंड विन, और मैंने आफ्टर लुकिंग एट द लाइनअप आई सेड दैट वी विल गो फॉर अ क्लीन शीट एज वेल. आई सेड दैट वी विल प्रोबब्ली मेक इट 2-0. फर्स्ट चैट सेड 2-1 जो फहीम ने बोला था, लेकिन मैंने बोला 2-0. लेकिन मैं बोलता हूँ यहाँ पे फिर से स्टर्लिंग मारेंगे गोल, और दूसरा गोल मुझे लगता है चिलवेल को अगर कुछ करना है ना टीम में, आई थिंक दिस इज अ नाइट फॉर हिम. So strangely enough, Chilwell might get that goal. तो left wing भारी पड़ेगी, and Dest will not do very well in my opinion. वापस से again, it might be some of the bench भी, maybe Pulisic, who knows? Pulisic might have started when some people बोल रहे थे Pulisic might have come क्योंकि impact create किए थे गैलेगर के गोल के लिए. But भाई सब लोग हम लोग करने वाले हैं 2 मैचेस वॉच. श्रेय आप चेल्सी वाला देख रहे हो ऑब्वियसली, मैं भी चेल्सी वाला ही देख रहा हूँ टीवी पे तो. लेकिन एक और लगाता हूं मैं. लेट मी सी कौन सा वाला लगाओ पीपल. आई विल प्रोबब्ली पुट स्कोर तो हम 4 लगाए स्क्रीन पे, लेकिन फोकस चेल्सी में रहेगा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स चेल्सी गेम. सब लोग लेट मी नो which match apart from Chelsea would you like us to also react on if possible, unless आप बोल रहे हो नहीं भाई चेल्सी ठीक है बस. रियल मैड्रिड वाला गेम है नहीं भाई, मेरे सब्सक्रिप्शन है नहीं. एक सेकंड में देख रहा हूँ. ओके, I can probably put let me see Sony 6 में कौन सा आ रहा है. मैंने खुद ही बोला था, खुद ही बोल दिया. Let me just check. Okay, भाई बेनफिका PSG is important game for Juventus. तो let's actually go that. हाँ PSG मुझे दिया, बिल्कुल वो लगा करो. But let's go Chelsea 2-0 win बोल रहे हैं. Okay, PSG ठीक है भाई. आई एम फीलिंग नर्वस सच में. श्रेय क्या मतलब, आई नो हम दोनों ने बोला है भाई 3-0 2-0 रेस्पेक्टिवली, बट श्रेय वेरी क्रूशियल अर्ली गोल, और यू थिंक नहीं इट्स अबाउट जस्ट कीपिंग योर काम? I think early goal will require Angel because Milan are not full strength and Chelsea always जब हम स्कोर नहीं करते फिर एंड तक ले जाते हैं, एंड वहां पे मिलान डेंजरस हो सकती है क्योंकि जिस टीम के पास राफेलिया और जीरू है, उनके पास टोमोरी जैसे प्लेयर्स कॉर्नर किक्स पे जो डेंजर दे सकते हैं. आई थिंक लीड लेना इंपॉर्टेंट है. आई थिंक अगर लीड्स हमने ले ली, मैं सरप्राइज भी नहीं होगा कि फ्लड गेट्स खुल जाए और ये यूवेंटस गेम की तरफ भी जा सकते हैं जो हम लास्ट ईयर खेले थे. बट फर्स्ट गोल जरूरी है, पर अगर हमने फर्स्ट गोल नहीं मारा तो हमेशा की तरह 0-0 और 0-1 हो जाएगा. तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट गोल, एंड देन आई वोंट बी सरप्राइज कि 3 और 4 तक भी चले जाए मैच. या अच्छा, बाय द वे मैंने आपका कमेंट देखा था यार,
जो भी लोग बोल रहे थे ना ओबामयांग सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं, ओबामयांग 100% सेलिब्रेट करेंगे, मैं गारंटी बोलता हूँ। क्यों? वो एक्चुअली गुस्सा होंगे मिलान से, नॉट गुस्सा बट ही वाज नॉट लाइक हैविंग मिलान इन हिज आर्ट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज Milan was his first club as a youth player, right? In a basically senior professional level. They didn't give him a chance. एक भी मैच खेला नहीं है सेरिया में ओबामयांग ने. I don't think he played in Serie A. So it's interesting. He was given on loan. But हाँ, वो in his formative years he was in Milan, and then as a senior player, the first promotion जो मिला था उनको मिलान में ही मिला था. तो he definitely respects them. लेकिन I think he'll probably celebrate. I don't think he has Milan लाइक तियागो सिल्वा. भाई तियागो सिल्वा सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए. स्टैमफोर्ड में करेंगे मेरे लिए, क्या बोलते हो अगर बाई चांस स्कोर करते तो? सब लोग बताइए आप लोग. मुझे लगता तो नहीं है, डिफिकल्ट अंकित भाई कहना. स्पेशली मुझे जिरू से भी ज्यादा ना पता नहीं टमोरी का डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर कहीं ना कहीं टोमोरी कूलिबाली खेल रही है ना. टोमोरी तो भाई वो तो टमोरी गुस्सा का डर हुआ लग था रहा है. चेल्सी से भाई, आज मुझे ये ना वापस करे, नहीं आज वो करना. अपना साइड टर्न ना मारे जो हमेशा मारते हैं ना जब आयस के खिलाफ, वो साइड टर्न मारते हैं अपना टमोरी, लाइक व्हेन ही यूज्ड टू. लेकिन टमोरी की एक खास बात है जो हमारे फायदे में आ सकती है, जितना मुझे चेल्सी में याद है, थोड़ी सी रैश होते थे, एक्साइटेड हो जाते हैं. तो अगर रेड कार्ड हो जाए, कुछ हो जाए, लव टमोरी, बट रेड कार्ड हो जाए, कुछ हो जाए, आई थिंक बहुत अच्छा होगा. तो दैट्स द थिंग, आई Oh होप my हो जाए. God! ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता श्रेय से, लेकिन दैट्स व्हाट भाई, ब्रिंग इट ऑन श्रेय भाई. सब लोग इसी बात पे सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम. लेट्स हैव मोर पीपल. द मैच इज गोइंग टू किक ऑफ, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं हो सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स एज वेल एज श्रेय एफसी. इट इज टैग्ड बिलो. I know Shreya, you have to go at what 12:50. कोई नहीं, as much as possible you try and stay. Always good to watch with you as well. और यहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ अपना वॉच ऑन द स्क्रीन. आप लोग होप श्रेय आपको दिख रहा है ना मेरा क्लॉक? हाँ हाँ, क्लॉक दिख रहा है आपका. चलो, तो लेट मी एक्चुअली स्टार्ट इट राइट नाउ. बाय द वे, आई होप एवरीवन लाइक्स दिस सेटअप यार. श्रेय कैसा लगा आपको सेटअप? नहीं, सेटअप बहुत बढ़िया. आई थिंक स्कोर्स भी सारे अवेलेबल दिख रहे हैं. वेरी वेरी गुड सेटअप. बस आई होप कि यहाँ पे एंड में चेल्सी 4 मिलान निल निल लिखा हो, हाँ एग्जैक्टली. सिटी निल कोपेनहेगन 1 लिखा हो, रियल मैड्रिड निल डोनेट्स्क 1 दिखा हो, और बेनफिका 1 पीएसजी निल लिखा हो, लेकिन होने नहीं मिला. तो अरे पहले सेकंड में कुलीबाली ने हक दिया. ये क्या हो गया भाई? कुलीबाली इज लुकिंग लाइक इज अ पार्क, इज नॉट वोकन अप. In the first few seconds, it's so obvious that Koulibaly बहुत ही hesitant है. He almost just playing like in just, I know I'm going over critical in the first few seconds, लेकिन साउल का पहला appearance याद है for Chelsea? नहीं, Almost like उससे that. अच्छे खेले, बट एग्रेसिव बहुत हो जाता है. लाइक आई डोंट नो व्हाई ही गेट्स टू अग्रेसिव. टैकल की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट सेकंड में, स्टार्टिंग में. Exactly. और हम set pieces में हकते हैं भाई. When we know that this Rafael Leao is there, Tomori is there, Giroud is there, Kalulu is there. अच्छा, लकीली हमने हेड कर दिया है. मे बी आज फफाना और कुलीबाली विल हेल्प सिल्वा इन द हेडिंग एबिलिटी. लेकिन ओके, ओबामयांग अभी के लिए तो ऑफ द लेफ्ट है, लेकिन ब्रिटिश वो सेंट्रल चल जाएंगे. भाई सब लोग जो भी लेट आए, अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. लेट्स हैव मोर पीपल, एंड नॉट जस्ट दैट, अपना प्रेडिक्शन दे दीजिए अगर आपने नहीं दिया. और बहुत ही बढ़िया प्रेसिंग चेल्सी का, लेकिन फ्री किक हो गया. आई थिंक इट्स ओवर प्रेसिंग. आई थिंक यार एक पॉइंट श्रेय मिस कर दिया. देखो जीरू का पेस नहीं है, तो आई थिंक कंसिडरिंग दैट, आई थिंक थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं चेल्सी ना, इन टर्म्स ऑफ हिम नॉट हैविंग द पेस, क्योंकि उनके इन बिहाइंड देयर आर 3 पीपल. सो मे बी 3 वर्सेस 3 होगा, कंसिडरिंग दैट वी नो दैट जीरू का पेस नहीं है, एंड दे कैन लीव जीरू ऑफसाइड ट्रैप. आई मीन, अभी मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं कि एसी मिलान फ्रॉम द फ्रंट आज प्रेस करेगी, क्योंकि जीरो के साथ प्रेस नहीं कर सकते अपोनेंट्स को. तो ये हमारा फेवर में आ सकता है, क्योंकि हमारे सेंटर बैक्स कई बार रश कर जाते हैं. तो उसमें आई थिंक शायद आज मेंडी भी अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि मेंडी हमेशा स्ट्रगल करता है जब कोई स्ट्राइकर आप पे वो मारता है, लाइक एकदम रन मारता है. तो इस वे में आई थिंक हम कम स्ट्रगल करेंगे. आई थिंक एसी मिलान रिलाई करेगी क्रॉसेस के थ्रू गोल करने में, हमें वो बस रिड्यूस करनी है. या हाँ यार, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, होपफुली सेटल्स इन द गेम. मिलान ऑन द फ्रंट फुट बाय द वे. लेट्स सी. आई थिंक कुलीबाली नाउ ऑन द, भाई ये क्रूनिच है ना, क्रूनिच हो सकता है ही माइट जस्ट शिफ्ट. भाई जस्ट टू लेट यू ऑल नो, चार्ल्स दी केटलारे कैन आल्सो प्ले ऑन द विंग. तो हो सकता है क्रूनिच एंड चार्ल्स दी केटलारे माइट स्वैप पोजीशंस. तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली कुलीबाली बीइंग देयर. तो वो एक टैक्टिक हो सकता है मिलान का. बट लुक एट दिस भाई, मतलब मिडफील्ड लिटरली इज मिसिंग चेल्सी का. इतना इजी पास किया यार. कुलीबाली अगेन, कुलीबाली सेकंड फाउल ऑफ द डे. पीपल, येलो कार्ड कमिंग फॉर कुलीबाली. इज इट लीड्स पार्ट 2? भाई रेफरी बोल रहा है आराम से करिए भाई. चार्ल्स दी केटलारे पर कुलीबाली का प्रेसिंग बहुत ज्यादा ही हो गया, एंड आई थिंक बहुत फाउल. समझ नहीं आ रही कुलीबाली कर क्या रहा है.
कोई नहीं, And आई अगर थिंक आज शुड इसको जस्ट रेड काम कार्ड हो डाउन गया, ब्रो. मैं सरप्राइजिंग होंगे था कि स्टैमफोर्ड ब्रिज फेयरफील्ड्स के खिलाफ हो जाए, तो आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग दैट. एग्जैक्टली लीड्स के साथ एग्जैक्टली वही हुआ था, आपको याद है? ही गॉट अ वेरी वेरी अर्ली येलो कार्ड. तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी. ओके, आपने जिरू सही कहा, मिडफील्ड हमारी लॉफ्टस ओवर चीक. हो रही है, मिडफील्ड ही नहीं है. हाँ, मिडफील्ड नहीं है, वो पास इतना आराम से किया ना भाई. टोनाली इज लाइक आई नो बिग वर्ड, लेकिन यंग पियरलो यार मेरे लिए. अरे कोई नहीं, डेरिन होगा यार, चल टेंशन नहीं लेने का. अरे भाई साहब, विशाल विशाल को लग रहा है ऑन द पेपर तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन पिच पर हम हंकते हैं. नहीं, एग्रीड है, क्योंकि एग्रीड है, चेल्सी ऑन पेपर कैन बीट एनीवन, बट मेरे को सिर्फ एक डाउट है, एक पॉटर का, कि बड़ी गेम्स में पॉटर कैसे करते हैं, क्योंकि ट्यूकल वाज वन ऑफ द बेस्ट बिग गेम मैनेजर वर्ल्ड में. और फिर हमारे प्लेयर्स ना कि भाई इस सीजन सरप्राइजिंगली कोई भी फॉर्म में नहीं है. टीम में एबिलिटी बहुत है, कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा. माउंट, हावर्ट्स, स्टर्लिंग अपने बेस्ट पे नहीं खेल रहे. आई थिंक अगर लोग देख रहे हैं, अपने बेस्ट पे नहीं है. ओबामे भी नहीं दिखे हमें अपने बेस्ट में, कोवाचिच भी बेस्ट पे नहीं है, जॉर्जिनियो भी बेस्ट पे नहीं है, कांटे इंजर्ड है, थियागो सिल्वा ही बेस्ट पे खेल रहे हैं. नाइस शॉट, oh my god. Mason Mount almost got a goal. What a shot bro. Mason Mount with a low curler, लेकिन बहुत ही बढ़िया. Magnon is missing, remember हमने बात किया था in the pre-match भाई. फर्स्ट टाइम कोवाचिच बॉल दिए, आई बिलीव टू ओबामयांग, वाज इट? यस, ओबामयांग प्लेड मेसन माउंट इन, और मेसन माउंट विद अ लो. सेफ था, इजी शॉट अंकित भाई, बट ना एंड में बहुत कम पावर थी. हाँ, पावर कम थी, लेकिन आई थॉट ही टुक इट वेल ब्रो. मैं बोलना चाहूंगा नहीं, अच्छा लिया शॉट, अच्छा लिया. प्लीज स्कोर फ्रॉम द कॉर्नर. ओके, सेट पीसेस में तो हमें पता है क्या होने वाला है इस मैच में. इट इज लाइक जायंट गोंजालेस अगेन व्हाट 1-2-3 किड, अगर आप जानते हो कॉन्टेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को. लेकिन कोई नहीं, किसी को याद है 1-2-3 किड? डिलीवरी जेम्स को लेनी चाहिए आई बिलीव, हमारे कॉर्नर्स की ना. मेरे ख्याल से आज ना शायद माउंट को बोला जाए, बिकॉज जेम्स माइट बी यूजफुल इन, मतलब एक होता है ना शोल्डर पुशिंग द ऑपोजिशन, नहीं? क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ में इश्यू है, कंसीडरिंग जो एसी मिलान की स्ट्रेंथ लग रही है. देखते हैं, मे बी दे विल जस्ट रोटेट. अच्छा, चिलवेल प्लेइंग एज एन इन्वर्टेड विंग बैक. कोवाचिच गिविंग द पोजीशन अवे. कोवाचिच का वही प्रॉब्लम है, जो वो ड्राइव करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पासिंग में परसेंटेज इज नॉट एज मच. भाई दे हैव मैग्नियन इंजर्ड, सो ऑब्वियसली देयर सेकंड चॉइस गोलकीपर इज प्लेइंग आद्री. लेकिन आई थिंक इज प्रीटी डिसेंट ब्रो, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, बिकॉज आप वीकेंड में भी देखे थे, आई थिंक ही डिड प्रीटी डिसेंट. तो आई थिंक इट्स अबाउट, आई थिंक देयर डिफेंस मोर इज इंपॉर्टेंट मेरे लिए, क्योंकि वहां पर फुल बैक्स इज एन इशू. क्या चेल्सी आर एबल टू डू दैट? लेट्स सी. अच्छा, यहाँ पर टैक्टिकली कोच आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है ना, एक चीज तो क्लियर लग रहा है कि कोवाचिच इज मे बी द गाय हु सिटिंग, ठीक है, और ही इज गोइंग टू बी मेकिंग दोस पासेस, ही इज नॉट गोइंग टू ड्राइव आज. इज दैट द राइट टैक्टिक? पता नहीं यार, मुझे लगता है दैट लॉफ्टस-चीक शुड हैव बीन द गाय सिटिंग. अगर अंकित आपको, अगर हम शेप देखें कहीं ना कि आपको ये 3-5 तो लग रहा है. माउंट भी मिडफील्ड में खेल रहे हैं, लॉफ्टस-चीक राइट सेंटर मिडफील्डर और माउंट लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर. कहीं ना कि 3-5-2 लग रही है मुझे शेप. हाँ, मतलब पॉटर लाइक्स वन इन बिहाइंड द टू फॉरवर्ड्स, दैट्स क्वाइट पॉसिबल. नहीं, लेकिन आप देखो ना अभी, नहीं, डिफेंड करते हुए मैं कह रहा हूं, डिफेंड करते हुए 3-5-2 है जब डिफेंड कर रहे हैं. डिफेंड करते हुए 3-5-2 है, अटैक करते हुए 3-4-3 है. एग्जैक्टली. तो बेसिकली अरे यू नो व्हाट, ट्रांसफर विंडो में नहीं जीती जाती यार विशाल, दैट्स द बॉटम लाइन. आप देखिए, टाइम एंड अगेन आई हैव नोटिस्ड, ओह माय गॉड, कमिंग टुगेदर ब्रो. लॉफ्टस-चीक एंड वाज इट बेनेसर? नहीं, ओह माय गॉड, येलो कार्ड, अर्ली येलो कार्ड बेसिकली आ गया है फॉर क्रूनिच. वैसे रॉन्ग डिसीजन, लाइक कुली वाले 2 टैकल कर चुके हैं, उनको येलो कार्ड नहीं मिला, यहाँ पे स्ट्रेट अवे. नहीं, येलो कार्ड था भाई. लॉफ्टस-चीक वाज ऑन द रन. आई थिंक अगेन आई प्रूवन रॉन्ग. मैं बोला था कि यार Loftus-Cheek should be sitting and Kovacic should go on the run. इस मोमेंट में आई डोंट थिंक Krunic would have got a yellow card if not for that run by Loftus-Cheek. तो आप देना चाहोगे? Yes, 3-5-2. Abhishek is also confirmed that. Looks like it. But yeah, Potter likes playing that one person behind the two forwards. जैसे Mason Mount is in the free role almost. लेकिन भाई कुलीबाली एक सिंपल पास में भी कतरा रहे. व्हाट इज हैपनिंग टू हिम? व्हाट्स हैपेंड टू हिम? कोई नहीं, मे बी वी आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग. मिलान, सो दैट टुडे आई एम सपोर्ट मिलान बट इट्स अदर चेल्सी. ओह इंटरेस्टिंग यार, आदरी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है.
अगेन मेरा तो खुद में ही है सॉफ्ट स्पॉट। चलो भाई, ये क्या था? व्हाट वाज दैट? फफाना मैन, आई वाज स्कैर्ड कि एक सेकंड के लिए वाज इट गोइंग टू बी अ पेनल्टी और व्हाट। मेरे को भी लगा था 2 रफाएल मिनट में लियाओ पेनल्टी अगेंस्ट होनी है। फफाना। हो ही ऑलमोस्ट मतलब एक पुल बैक कर दिया था भाई फफाना ने, बट इन द एंड ही डिड वेल। यू हैव टू गिव इट टू बट आई थिंक फफाना अगर भाई। उसी बात फाउल पे, होता ना आउटसाइड द बॉक्स होता, अगर फाउल होता ना आउटसाइड द बॉक्स होता। हाँ एग्जैक्टली, वो स्टार्ट आउटसाइड द बॉक्स हुआ था डेफिनेटली। हम्म। आएगा भाई। सब लोग लाइक कर दीजिए, डू नॉट फॉरगेट कीप लाइकिंग द स्ट्रीम हु इज कमिंग ऑन, एंड अगेन पुटिंग योर प्रेडिक्शंस, इट्स नॉट टू लेट। आप देख रहे हो स्क्रीन पर, हम वी आर ट्राइंग टू फॉलो 4 गेम्स, लेकिन फोकस डेफिनेटली चेल्सी मिलान और पीएसजी अवे टू बेनफिका है। यहाँ पे बेनफिका जस्ट मिसिंग अ चांस, डायरेक्ट शॉट ऑन गोल था। मार्किनियोस डिड वेल, लेकिन आई थिंक यू हैव टू गिव इट टू डोनारुमा। और मीनवाइल चेल्सी एक रन के लिए गई है, डेफिनेटली फ्री किक था, और यहाँ भी येलो कार्ड मिलेगा क्या? चिलवेल, चिलवेल का अगेंस्ट डी केटलारे, गेटिंग चिलवेल डाउन, सैंडविचिंग चिलवेल ऑलमोस्ट। आई थिंक एक क्लियर टैक्टिक में बताऊं, चिलवेल खेल रहे हैं इन्वर्टेड फुल बैक या मिडफील्डर ऑलमोस्ट। तो यू आर राइट, श्रेय राइट, जब जब माउंट जा रहे हैं इन अटैक, चिलवेल इज ड्रॉपिंग टू सेंट्रल मिडफील्ड। तो लुक्स लाइक कहीं एट ना कहीं मुझे एवरी उसकी शेप पॉइंट। की याद दिला रही है जो सैज़ के खिलाफ नहीं, कई बार हमने शेप खेली थी 3-3-3-1 की, जो पॉटर बहुत बार खेलते, कहीं ना कहीं वो रिमाइंड करा रही है, जहां पे जेम्स और चिलवेल कई बार इन्वर्ट कर रहे हैं और माउंट और स्टर्लिंग थोड़ा वाइड जा रहे हैं कई बार जब जेम्स रिक्वायर्ड हो। बहुत सरप्राइजिंगली अभी तक दिखे नहीं है मुझे, आई मस्ट से, बहुत ही सरप्राइजिंग है। इट्स अ गुड थिंग और बहुत बैड थिंग, गंदा आई डोंट पास नो। लॉफ्टस चीक का, बहुत गंदा पास। वेट से भाई, कुलीबाली, यार गेम रुकना चाहिए। पॉटर नीड्स टू कॉल कुलीबाली एंड हैव अ वर्ड विद हिम। बहुत एक्स्ट्रा जीलस है, मतलब वो ट्राई बहुत ज्यादा कर रहा है मेरे ख्याल से। 100% येलो इज कमिंग फॉर कुलीबाली, आई एम टेलिंग यू। लेकिन कोई नहीं। स्टर्लिंग नाइस फाइनली गेट्स द बॉल भाई। राइट साइड अपनी हैज बीन नॉन एग्जिस्टेंट टिल नाउ, आई मस्ट से। मोस्ट ऑफ आवर अटैक्स हैव कम लेफ्ट साइड से। एक लॉफ्टिस का रन था जिसमें क्रुनिच गॉट अ येलो कार्ड। चलो फाइनली जेम्स को मिला है बॉल, बट अभी स्टर्लिंग नहीं है ओवरलैप करने के लिए। स्टर्लिंग इज सेंट्रल, तो साइडवेज पासिंग शुरू एज ऑलवेज। ओके विशाल, इंटरेस्टिंग। मतलब टेस्ट तो पता नहीं यार, आई डोंट नो व्हाट टेस्ट। आई स्टिल फील वो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, एज मच एज इट्स अ डेस्परेट गेम। आई डोंट थिंक वो खुद को भी मालूम है यार व्हाट ही वांट्स पॉटर अभी राइट नाउ। इसलिए फॉर एग्जांपल केपा, ही इज नॉट सेइंग अ नंबर 1 ना क्लियरली। आई थिंक ही इज गोइंग ऑन मेरिट अभी के लिए, नहीं श्रेय? आई थिंक केपा एट द मोमेंट डिजर्व्स टू प्ले, लाइक उसने पिछले मैच पे अच्छे खेले हैं, सेव्स भी करे हैं, पासिंग भी अच्छी रही है, तो ड्रॉप करना मेंडी जो बहुत टाइम से खेला भी नहीं है, लाइक हमें रिमेंबर करना पड़ेगा उनको इंटरनेशनल बेस से पहले इंजरी हुई थी, फिर 2 हफ्ते खेले नहीं, तो ऐसे प्लेयर जो फिट नहीं है उसको लेके आना भी गलती है। तो आई थिंक अच्छा लग रहा है कि कहने के मेरिट पे खेल रही है, आई थिंक अच्छा है। मुझे वैसे अंकित में लग रहा है कि कहने के ना अंदर भी कोई मिक्स हो रही है, क्योंकि मेंडी कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड कर रहे, तो कई बार क्लब्स ये यूज भी करते हैं मैसेज देने के प्लेयर को, बट ऑन अ अरे कंपैरेटिव मैन लेवल सिटी मुझे गोल मैन सिटी गोल, हालैंड 7th मिनट, यूसीएल फैंटेसी कैप्टन। व्हेन विल ही स्टॉप स्कोरिंग गोल्स। भाई सब लोग कोई गोल होता तो बता दीजिएगा, मैं क्विकली चेंज कर दूंगा फॉर पीपल, बिकॉज आई नो दैट देयर आर मैन अंकित भाई सिटी हमने फैंस जो एक्स्ट्रा आएंगे। 30 मिलियन नहीं दिए एजेंट फी में, हालैंड हमारा था, हमने 30 एक्स्ट्रा मिलियन एजेंट फी में नहीं दिए हालैंड को लेने के लिए। कोई नहीं कोई नहीं। डॉर्टमंड हैज स्कोर्ड अगेंस्ट सेविया बाय द वे, वो एक गेम हमने सिर्फ कवर नहीं किया था इन द प्री मैच, लेकिन हाँ सरप्राइजिंग डॉर्टमंड हैज यही स्कोर्ड। होना था, सेविया जो मैनेजर सैक करने में लगी गुरेरो, हुई है, जो कि सैम्पियोली को लेके आ रही है, मैच से पहले अनाउंसमेंट्स टाइप आ रही है, तो आज वैसे भी इंपैक्ट अच्छा ही नहीं होना था, क्योंकि पहले ही क्लियर होगी कि मैनेजर सैक हो जाएगा मैच के बाद। हाँ मे बी दैट इज द एक रीजन ना, मे बी दे नॉट रियली टर्न्ड अप फॉर द मैच वेल, हो सकता है। उसका भी हो रहा है ना, नॉटिंघम फॉरेस्ट। उसका समझ नहीं आ रही, मतलब रिपोर्ट्स में आ रहा है कि ओह मैन, करना कुलीबाली चाह रहे हैं। क्या कर रहा है भाई तू? अरे माय गॉड You know, कूलीबाली। it pains me to say it. I'm almost saying by Koulibaly ko hatao. He's a liability on the pitch. I'd rather have 4 at the back at this point. सच में, get Gallagher बहुत on गोल the midfield स्कोरर्स पे आ rather. जाएगी। समझ नहीं रही हो क्या गया इसको, लाइक ही स्टार्टेड वेल, पहला गेम बहुत अच्छा खेला था भाई और मतलब उसके बाद इतना स्कूल बॉय he got you know what you say nutmeg यार अभी, स्कूल बॉय टाइप्स। डेस्ट के द्वारा वो भी, who's not in confidence. Okay, चलो nice clearance man. Koulibaly with a clearance people. Koulibaly OP हो जाए everyone in the chat, come on. Koulibaly with an important clearance finally.
The reason why he's there. क्लियरेंस यस, अंकित अगर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इससे पता लगता है कितना गंदा खेला है। ओ चैट माय में आ गॉड, रहा है, अपनी रोड्रिगो ने भी मिडफील्ड, गोल मार दिया है। चैट में आ रहा है, रोड्रिगो ने भी गोल मार दिया है। रोड्रिगो गोल, अरे भाई साहब, भाई हजार्ड का करियर रियल मैड्रिड में खत्म रोड्रिगो के द्वारा, बेचारा कुछ हो ही नहीं रहा यार हजार्ड का। यस, लुक्स लाइक रोड्रिगो हैज स्कोर्ड, तो वो भी अपडेट कर देते हैं। मैंने एक्सपेक्ट थैंक्स नहीं करा था पीपल। कि इतना डोमिनेंस होगी एसी मिलान की। मुझे लगा वील स्टार्ट ऑन द फ्रंट फुट, लेकिन हम बैक फुट पे हाँ खेल रहे हैं। भाई, मीनवाइल मैं दूसरा मैच भी लगा रखा हूँ फॉर पीपल ऑफ जस्ट जॉइन। भाई सब लोग लाइक कर दीजिए, भूलना मत। मैं पीएसजी अवे टू बेनफिका भी डाल रखा हूँ इन अनदर डिवाइस, और मेन में फोकस करो चेल्सी मिलान पे, जस्ट सो यू नो। थैंक्स मानव, विशाल, अंकित भैया, कुकी इज बेटर लेफ्ट सेंटर बैक नाउ। अरे देयर इन लैंग्वेज यार, लेकिन कोई नहीं। देखिए, ओ माय गॉड, रीस जेम्स इंजर्ड नहीं है, नहीं है, बच गया, बच गया। अगर भाई इस बार पहले साल नहीं लग रहा था सीरिया की चारों टीम्स लाइक क्वालीफाई हो सकती है पहली बार राउंड ऑफ 16 में, जहां पे नापोली, यूवेंटस, इंटर, एसी मिलान, और नापोली तो अलग ही लेवल पे खेल रही है। लाइक दे आर द वन ऑफ द बेस्ट टीम राइट नाउ टू वॉच वर्ल्ड में, मैं कहूंगा अभी। हाँ, आई वुड अग्री 100% यार। नापोली, स्पेशली क्विचा क्वारेत्स्केलिया, क्वाराडोना, क्वाराडोना उसका नया नाम है भाई, फॉर पीपल हु डू नॉट नो, ऑब्वियसली रेफरिंग टू नापोली लेजेंड, दी गोट फॉर मी। मतलब अगेन आई हैव बीन थ्रू दोस इयर्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बेनफिका इज गोइंग अटैकिंग अगेंस्ट पीएसजी, यस आई कैन सी दैट विशाल, एब्सोल्युटली। लेकिन मीनवाइल भाई, टोमोरी, टोमोरी विद अ क्लियरेंस, इंपॉर्टेंट क्लियरेंस फॉर, एज इन ये मैं सोचा भी नहीं था कभी इतना जल्दी होने वाला है टोमोरी के मिलान करियर में, कि भाई ये आएगा स्टैमफोर्ड ब्रिज और हम बोलेंगे टोमोरी क्लियरिंग द बॉल अगेंस्ट चेल्सी, बट दैट्स अ रियलिटी। मतलब इट वाज ऑलमोस्ट यस्टरडे भाई श्रेय, दैट लैम्पार्ड वाज देयर मैनेजर, एंड यू नो द गाय वाज एक्चुअली लैम्पार्ड्स पेट इन डार्बी। आई थिंक डाबी में ये भी है ना, डाबी में ऐसा कोई कंपटीशन भी नहीं था, तो ये मिस्टेक है जो आई थिंक फिर से चेल्सी ने अपने यंग प्लेयर के साथ करी है, एंड लेट हिम गो। आई थिंक ही, लोग गुही कहते हैं लेकिन टमोरी इज वे हेड ऑफ गुही। लाइक टमोरी का जो लेवल है ना, दैट इज वे हेड। कुलीबाली ओपी पीपल, कम ऑन, कुलीबाली ओपी एवरीवन, कुलीबाली भाई, ही इंटरसेप्टेड, गुड इंटरसेप्शन। और भाई ही इज गेटिंग कॉन्फिडेंस, यस मानव ने बोला था, ही इज गेटिंग कॉन्फिडेंस। अच्छा लेफ्ट फुट पास करना शुरू कर दिया ना, मतलब ही इज कॉन्फिडेंट, लेकिन यहाँ हक दिया, जैसे मैंने बोला एक पास, लेकिन होता है, कोई नहीं है, इट हैपेंस। टोनाली इज सो गुड ब्रो, आई एम टेलिंग यू, मैं बिग वर्ड्स बोला हूँ। टोनाली कैन बी योर एंड्रिया पिर्लो, हु कैन एक्चुअली प्ले लिटिल बिट फॉरवर्ड एज वेल, तो लेट मी नो बेनेस्टर या टोनाली आदरी, यस आई हियर यू। इसलिए मैं बोला हूँ ना दैट जब कुलीबाली वाजंट डूइंग वेल फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, आई वाज लाइक भाई गेट गैलेगर इन मिडफील्ड रादर, एक एक्स्ट्रा मैन चाहिए मिडफील्ड में, आई थिंक। अभी तक बट इसलिए दे आर मे बी गेटिंग आउट, चिलवेल। अभी तक आउटप्ले हो रहा है एसी मिलान से, लाइक जो फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है, लाइक डिप्लीटेड बी साइड मिलान है। हाँ, आई थिंक इट्स मोर अबाउट हमारे प्लेयर्स सिस्टम और प्ले फिगर आउट कर रहे हैं यार, सच में बोलूं तो। और प्लस कुलीबाली इज यू नो प्लेइंग हिज फर्स्ट गेम अंडर पॉटर, आई नो बहाने लगते हैं ये सब, लेकिन वो रियलिटी है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरली एज अ टीम कम है, नो। कुलीबाली नाइस पास ब्रो, नाइस पास। यहाँ पर आई बिलीव ओबामयांग हैड अ नाइस टच, लेकिन चिलवेल हैज नॉट डन वेल, चिलवेल has not been able to keep that ball inside the game play, or we cannot even put 7 passes together. 7 ज्यादा बोलिए, 5 passes। पिटाई होने वाली को यार, मानव भाई, मच रेस्पेक्ट यू ब्रो, मच रेस्पेक्ट। सब लोग समझ गए हो, यू नो मुझे काफी बार हेट मिलती है दैट द फैक्ट दैट आई एम नॉट अ स्टैंड व्हेन इट कम्स टू द गोट्स ना। मुझे वही है, सर्टेन टीम और सर्टेन प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं ना, somehow I don't like watching them as much, with all due respect to them, they are the goats, I'm not denying that, एंड गोट टीम भी बनेगी भाई मैन सिटी की टीम, लेकिन फॉर मी आई रादर वॉच अ 1-1 चेल्सी ड्रॉ देन देम, और 1-1 मिलान ड्रॉ विद, एंड सच में बोलता हूं, दैट्स समथिंग दैट एज अ न्यूट्रल आई एम सेइंग एज वेल। डेम्बेले, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लाइक आप कह रहे हो ना जैसे अंश, कम चिलवेल ऑन। मैच में इन्वर्टेड खेल रहा है, हमारे पास लेफ्ट में कोई प्लेयर ही नहीं है पास करने को। अभी लॉफ्टस चेक गया था, लेफ्ट पे कोई है ही नहीं अवेलेबल। नहीं, मैं बोलता हूँ रीजन क्या है ना, कोविचिच इज एक्चुअली, आप देख रहे हैं टूकल, ही यूज्ड टू प्ले दैट लेफ्टिश सेंट्रल मिडफील्डर, हु यूज्ड टू बहुत बार बाईलाइन में भी टच करते थे। आज दिख रहा है थोड़ा सा ही इज ट्राइंग टू बी देयर, लेकिन मे बी पॉटर हैज टोल्ड हिम स्पेसिफिकली स्टे मोर सेंट्रल। अच्छा नाइस क्रॉस, आई थिंक ये हुआ है रीस जेम्स द्वारा, लेकिन इट्स बीन वेल डिफेंड बाय मिलान, फाइनली राइट साइड से हम अटैक करते हुए भी, एंड इट्स नॉट बीन क्लियर बाय टोमोरी फॉर वंस, लेकिन कोई नहीं।
Okay, Reece James is still working in second gear for whatever reason. लेकिन कोई नहीं, it's still early. Oh my God, Mason Mount almost tripped himself. बच गया. Chelsea should go for Tonali at midfield. Well, now that we are playing him, I won't be surprised कि scouting हो जाए. You know how scouting for Chelsea goes therein. Milan dominating. Yeah, again भाई domination से तो मैं नहीं लूंगा. नहीं क्या हुआ मेरे को 2 मिनट लगा आई वाज अफ्रेड जिस तरह मेसन माउंट ट्रिप हुआ ना. यार देखो मिलान डोमिनेट भी करती है ना. फॉर मी इट्स ओके यार. एज मच एज यू नो वी कीप आवर शेप. आई थिंक हम कंसीड नहीं करेंगे यार. आई फील दैट्स माय जनरल फील. आज पता नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इट. ये सेटअप ही ऐसा किया है ना. वी आर लाइक सेटअप इन द सेंस नॉट टू बी हिट ऑन द काउंटर. नहीं मैं समझ नहीं एंगल पे काउंटर पे लग नहीं रहा क्योंकि हम काउंटर की तरफ खेलने रहे, हम पोजीशन ट्राई कर रहे हैं रखने का. तो कंफ्यूजन हो रही है मुझे ना. और शेप जैसे आपने कहा ना, नहीं शेप मिलान समझ काउंटर रहे नहीं करे हैं. करके. दैट्स व्हाई वी आर शेपिंग अप लाइक दैट. क्योंकि दैट हैज बीन आवर अकिलीज हील. Why are we slipping so badly? यार डेरेन, आई थिंक पानी. यू रिमेम्बर क्लॉप ने क्या बोला था? इट वाज वेरी ड्राई. आज बहुत ज्यादा गीला है पिच, स्टैमफोर्ड ब्रिज. सिंपल एज दैट. ओके भाई, टोनाली से स्ट्रेंथ देखिए. आउट मसलिंग मेसन माउंट इज नॉट इजी ब्रो. ही जस्ट आउट मसल्ड मेसन माउंट. एंड लुक एट टोनालीज वर्क रेट. From a position of a cam, he comes back to central midfield to left back. टोनाली देखिए बालोटोरे उनके अटैकिंग लेफ्ट बैक है. वो नीचे गिरे तो भाई टोनाली मेड श्योर ही इज गोइंग देयर. आई थिंक बट टोनाली एंड बेनेकर ने अभी तक कंट्रोल करी है गेम मिडफील्ड में ना. लाइक हमारा मिडफील्ड का कंट्रोल नहीं आ रहा मैच में. एक्चुअली मैच ही ऐसा रहा है ना. इट्स अबाउट वही मतलब इनफैक्ट दोनों ही टीम्स दे आर नॉट गेटिंग 6 passes टुगेदर ब्रो. मेसन माउंट नाइस कॉर्नर. हम कॉर्नर से कर नहीं रहे बहुत टाइम से ना. गोल नहीं लगा कॉर्नर से. वो भी लॉफ्टर चीक पर पड़ा. लॉफ्टर चीक भाई कब मारा था लास्ट हेडर याद ही नहीं मुझे तो. इट्स लुकिंग चेल्सी लुकिंग अ बिट मोर लाइक 3-4-1-2. माउंट ड्रॉपिंग इन बट द इशू इज नन ऑफ द सेंटर बैक्स पुशिंग फॉरवर्ड. सो द 3 versus 3 isn't helping चेल्सी. या बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड. माउंट का वो फ्री रोल है. ही इज काइंड ऑफ, आप देखिए माउंट हैज बीन द लेफ्ट साइड, माउंट हैज बीन राइट साइड. लेफ्ट साइड में बेसिकली आई बिलीव ही इज डन बेटर. लेकिन राइट साइड में तो 10 मिनट हो गया है. चैट में मानव भाई ने डाला है एल नेसरी रेड. ओ माय गॉड भाई. ओके नाइस प्रेसिंग. कोवाचिच प्रेसिंग ब्रो. बहुत ही बढ़िया लगा वो कोवाचिच को देखते हुए वहां. और वी हैव वन द पोजीशन. होपफुली स्टर्लिंग क्रॉसेस क्विकली. लेकिन नो मैन, नॉट अ गुड क्रॉस. I don't follow Serie A and Milan so much, but have AC been pressing this way all season? Well, you know what? I think with this particular personal आज जो है ना, I think it is a tactic, particularly आज है. I would not call them a pressing side really, Pratham. What I would say definitely on the other hand is आज reason being that वो उनके जो main winger है एक तो नहीं है, Saelemaekers. तो Krunic is maybe more central. और clear है कि यार उनको दिख रहा है we are having एक नंबर ज्यादा in midfield. उसके कारण दे आर ट्राइंग टू प्रेस एंड गेट द बॉल मोर इजीली, व्हिच इज क्वाइट डूएबल. और वो एक्चुअली बढ़िया कर रहे हैं. इट्स अ टैक्टिक फॉर द गेम फ्रॉम व्हाट आई सी. आई वोंट कॉल देम अ प्रेसिंग साइड रियली. How do City got so many fans? I never felt City as a club family, but like a tier 1 company hiring new associates. You know what? Mudit, let me know. आप अगर अग्री करते हो दोनों. देखिए क्या होता है ना, आप बेसिकली इट इज श्रेय माइट ऐड टू इट. देखिए हम सब बनते हैं फैंस ऑफ अ सर्टेन क्लब विद नो डिसरेस्पेक्ट टू एनी क्लब. इफ यू आर एक्सपोज मोर टू दैट क्लब और यू कनेक्ट बेटर. और द फैक्ट इज not many were exposed to City come the 90s, come the 2000s. लेकिन last 10 years से they've been started to expose. तो अभी ज्यादा बनेंगे. अरे वो भाई साहब गोल होना था यार. थियागो सिल्वा, व्हाट अ स्टोरी. एक सेट पीस मिला, ऑब्वियसली नाइस डिलीवरी. लेकिन थियागो सिल्वा का हेडर गोलकीपर अच्छा कर रहा है बाय द वे. या इजी सेव बट इट्स ऑन शॉट टारगेट था. कॉर्नर मिला हमें. शुड हैव फिनिश्ड दैट. बहुत फ्री हेडर भी मिला था. हाँ लेकिन बट वही है. अरे अंगद गोल हो गया एक भाई बात है PSG वैसे. का. जिरू और टोमोरो की हाइट में भूली कि सिल्वा और मिलान का मैच है. ओ व्हाट अ गोल ब्रो PSG का. ओ माय गॉड. इज इट द गोट? Is it the goat who scored? हाँ मेसी मैन. मेसी विद अ चिप कर्लर. एंड असिस्ट किसका? और चेल्सी का ऑलमोस्ट गोल हो गया. मैन दिस इज अ क्रेजी नेट अगेन. लेट मी एक्चुअली अपडेट. मेसी का गोल हो गया. यस पीपल. तो भाई बेनफिका गोलकीपर डेरेन पे गोलकीपर है टटर हसानू.
हाँ, उसका प्रोनाउंसिएशन टफ है, इसलिए अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। आई नो दैट, सिंपल एज दैट, बट कोई नहीं, ही इज एक्चुअली डिसेंट मैन। पीएसजी तो बेनफिका इन द मड। हो सकता है यूवेंटस विन टुनाइट, जो लगता है लाइकली ऑन पेपर। इट्स यस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन ब्रो। Get in, bro! It is Fofana. Wesley Fofana scored the first goal for Chelsea in blue. Absolutely fantastic. मैं बोल रहा था, have we missed that chance? Yes, Messi scores, वैसे Fofana also scores. What a brilliant goal. Yes, and Thiago Silva को मैं वापस से दे रहा हूँ credit, because Thiago Silva, याद है उनका शॉट था, won the corner, and जो corner मिला भाई, we almost played ping pong. फाइनली गिरा वेस्ली फोफाना, वेल प्लेड, वेल प्लेड। वेल डन टू मी, मैंने बोला हम कॉर्नर से गोल नहीं मारे, लग गया गोल, बहुत बढ़िया। बट चिलवेल लिया क्या कॉर्नर? चिलवेल का कॉर्नर था ना? चिलवेल का कॉर्नर था मेरे ख्याल से। एसएस शायद कुलीबाले को जाएगा ना, कुलीबाले का लास्ट टच था मुझे लग रहा है। रियली? ओह माय आई थिंक गॉड, शायद कुलीबाले का था। ओह माय गॉड। आई थिंक लॉफ्टस चीक माइट हैव गॉट अ टच, आई फील। कोई नहीं, it doesn't matter bro, doesn't matter. आई थिंक कुलीबाले के कॉन्फिडेंस में बेटर होता अगर एसएस दिखता। Yeah, again Mancini was actually good यार, in my opinion. ये मैं ये भी बोलूंगा अंकित भाई, पता है क्या होता है answered. फैंस का, जब हम किसी क्लब के फैन होते हैं ना, हमेशा सोचते हैं वो उसका क्यों बना, लेकिन Ping pong goal. फुटबॉल एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना। आई थिंक हमें कहना भी नहीं चाहिए, एवरी क्लब का अपना फैन है एंड एवरीबॉडी लव्स देयर क्लब। तो आई थिंक वो तो हमें कहना नहीं चाहिए, बिकॉज़ एवरीवन लव्स देयर क्लब सो बेस्ट। लाइक हमारा कोई ज्योग्राफिकल एसोसिएशन नहीं है, बट वी लिव एंड डाई बाय आवर क्लब्स, एंड रात को जागते हैं, वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दैट्स अ बिग थिंग, बट आज चेल्सी हारेगी, यू नेवर नो, वी माइट हैव टू वेट टिल 5:30 उसके गम में कि क्यों हो गया, और जीतेगी तो भी सेलिब्रेशन में जागेगी, और कल का लगेगा दिन बढ़िया, जबकि हमने कुछ नहीं करा। सो इमोशंस अटैच व्हेन यू सपोर्ट अ क्लब। Yeah, absolutely. मतलब again it depends on basically why you do that. By the way, एक बड़ा न्यूज़ है, थोड़ा ऑफ टॉपिक है, as we have scored a goal and yes, पॉटर को मैंने देखा, as well as यार मेसी भी coincidentally as the goal has just scored यार just before, और फोफाना will he take something from that, a French team scoring, I don't know, that's just a coincidence, लेकिन भाई फर्स्ट गोल है। एक बड़ा न्यूज़ ये आया भाई आज, I don't know if you heard श्रेय, सर एलेक्स फर्गसन का एंड जोसे मोरिन्यो का एक फ्रेज, चिलवेल विद द नॉटी वन, भाई चिलवेल 100% हैंडबॉल था, उनका एक फ्रेज डिक्शनरी में डाला गया है। कैन एनीवन गेस व्हिच इज दैट फ्रेज? जोसे मोरिन्यो का एक फ्रेज एंड सर एलेक्स फर्गसन का एक फ्रेज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में डाला। कौन सा होगा? इफ आई स्पीक आई एम इन बिग बिग ट्रबल। हाँ, नहीं, जोसे मोरिन्यो का तो एक और है बहुत फेमस, मतलब हाउ डज ही प्ले फुटबॉल, व्हिच लॉट ऑफ पीपल थिंक ही प्लेज। पार्क द बस, ठीक है, यस, स्क्वीकी बम टाइम वाज एलेक्स फर्गसन, बिल्कुल प्रथम। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर मी। Why didn't Fofana celebrated bro, he celebrated, मतलब वही उसका, हाँ, he didn't celebrate the way जैसे उसने बोला था, क्या उसका सेलिब्रेशन था मैं भूल गया यार, बहुत ही कूल था। हाँ, उसने उसके साथ दिखाया था ओबामा के साथ, चेल्सी ओबामा के साथ, हाँ, वो वाला नहीं किया, लेकिन जनरली सेलिब्रेटेड, वो एक नेचुरल वाला आता है ना फर्स्ट गोल में। उसने उसे चेल्सी में कहा था मैं गोल इतने नहीं मारता कि मैं आई सेलिब्रेट कर, पता भी नहीं है विल आई डू, क्योंकि ही रेयरली स्कोर्स। या मतलब पता नहीं था इतना जल्दी हो जाएगा। Elano, oh man, Elano was awesome bro. Elano was, मतलब arguably मानव, Elano was Man City का जो रिवाइवल था ना, I remember सब लोग बोलते थे Robinho. Arguably Elano in the same team was much better impact. Yes, he was a different player. He was more like a right midfielder who used to play right central attacking midfielder or central midfielder at times. लेकिन Elano, he had some very good passing, और he used to take free kicks as well. Absolutely, मुझे एकदम याद है, it was like yesterday मानो। चलो anyway, श्रेय आप कभी भी जाना तो जा सकते हो यार, मतलब again always love to have you, लेकिन रहे तो और भी बढ़िया मजा आएगा, बोल दो आप जो भी है। नहीं, मैं हूँ अभी, आई एम फॉर 5 मिनट्स एट लीस्ट। चलो यार 5 मिनट्स करके हाफ देख लो। कोई नहीं, तो I know half time में I think we'll have Fateh joining us in half time. That'll be interesting as well. I think फतेह भाई बहुत खुश हो कि इंटर फैन एंड एसी मिलान लूजिंग। भैया जी अचानक से जिंदगी पता नहीं क्यों अच्छी लगने लगी है। मेसी गोल एंड चेल्सी गोल, लव्ड इट अंकित सर। अरे बिल्कुल यार, मतलब अरिजीत को भी शाउट आउट है, एब्सोल्युटली अरिजीत भाई,
the Barca twins, I believe. मैड्रिड ने लग रहा है दूसरे ने गोल मार दिया है. अरे मैन, रियल मैड्रिड ऑन अ रोल भाई. कौन रोक सकेगा रियल मैड्रिड को भाई? दैट इज अ. और यहाँ पे कोवाचिच विद अ नाइस रन. ओ थ्रू बॉल ट्राई किया था ओबामेयांग के लिए. वेल इंटरसेप्टेड बाय मिलान, आई मस्ट से. हाँ, गोल हो गया रियल मैड्रिड का. लेट्स अपडेट दैट. विनीशियस जूनियर, you can argue that he's Mr. Form यार in the world. चलो हालैंड के साथ साथ तो अरे फिर से अभी थ्रू बॉल डालते में हैं. माउंट वाज इन अ बेटर स्पेस. जहां पे वो मारा था ना, माउंट एकदम खाली था. बारशा should play like Madrid UCL, play for fans emotions. Well, you know what, दो ही गेम हुए अंश. लेकिन हाँ, डेफिनेटली विनीशियस जूनियर, क्रेग बेलेमी, जॉन, you mean स्टीफन आयरलैंड were under Mark Hughes when City finished 8th. अरे गोल होने वाला है. ओ नो यार, हाउ आर दे इंटरसेप्टिंग मिलान? इज माउंट का बेसिकली अटेम्प्ट था. आई थिंक वो प्लेस करना चाहिए था उसे. ही हैड अ एक्स्ट्रा सेकंड एंड ही थॉट ही हैड इजीली इंटरसेप्टेड एंड क्लियर्ड. ओ भाई, कुलीबाली हक गया वापस से. शुड हैव फिनिश्ड दैट. क्या वो गोल हो गया मिलन का? कुलीबाली making a David Luiz kind of tackle which was unnecessary, but luckily ball rebound होके भाई बाहर गई है, not in the game play. यार मिलाना सिटिंग बैक, यू नो व्हाट, मिलाना सिटिंग बैक, मिलाना रियली सिटिंग बैक. तो अभी हमें चाहिए एक क्रिएटिविटी ब्रो. हमें चाहिए क्रिएटिविटी. दे आर लाइक अभी भी डिस्पाइट गोइंग 1-0 डाउन, फ्लैट रख रहे हैं उनका बैक लाइन. विल चेल्सी बॉटलेट, वही उसका डर लगता है ऑन द काउंटर. लेकिन द वे दैट पॉटर है सेटअप, इन माय ओपिनियन, वन ऑफ द मेन रीजंस अपार्ट फ्रॉम गिविंग चिलवेल ए कॉन्फिडेंस, आई फील एक हम ट्रांजिशन में बीट नहीं हो करके, आई थिंक ही इज हैविंग 5 एट द बैक. प्लस केपा भी है गोल में, रिमेंबर. नहीं, नेमार भी अच्छा है यार, मतलब हाँ, एटीट्यूड यू कैन से. बट श्रेय, यू टेल मी यार, मतलब व्हाई इज नेमार क्रिटिसाइज्ड मच? मतलब फॉर मी, Hazard has not done well. Hazard should have gotten to Neymar's level. I know he's not got to Hazard, Messi's level. yes, I think Hazard should have been really criticized क्योंकि Hazard ने भी अपने करियर में जो Yeah, टैलेंट है परफॉर्म exactly. नहीं करा. He has not performed, बट क्योंकि प्रीमियर लीग में कहीं ना कहीं वो 7 years परफॉर्म करा है, थोड़ी सी मुझे लगता है रिस्पेक्ट ज्यादा कहीं ना कहीं. सैडली फ्रेंच लीग वाला कनेक्शन है, विच इज सैड क्योंकि नेमार इज ट्वाइस द प्लेयर जो हैजार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज आई थिंक लीग 1 वाली स्ट्राइक करी है. एंड नेमार का भी यही है, नेमार के बारसा डेज जो है वो हैजार्ड का भी कंपैरिजन ही नहीं कर सकता. एंड सैडली नेमार का भी यही है, इंजरीज ने करियर डिस्ट्रॉय कर दिया. हैजर्ड का भी यही है. आई थिंक हैजर्ड का एटीट्यूड प्रॉब्लम कम है क्योंकि हैजर्ड ने हमेशा खुद कहा, इसलिए मुझे सिंपैथी है हैजर्ड के लिए. उसे खुद कहा, आई डोंट वांट टू बी द सुपरस्टार, मैं अपनी लाइफ से खुश हूं प्लेइंग द मैच. तो जो ये मैं अटकाऊ कि श्रेय अटके? आई थिंक श्रेय अटक गए भाई. श्रेय का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग. जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग. बट श्रेय, आई थिंक योर इंटरनेट इज स्टक, लुक्स लाइक. आई होप यू गाइस आर एबल टू हियर मी भाई. सब लोग लेट मी नो इन द चैट. आई होप यू गाइस आर एबल टू हियर मी. यहाँ पर रफाइल लियाओ अगेंस्ट फफाना हो रहा है यार पूरा. चलो श्रेय को मैं रखता हूँ बैक स्टेज में फॉर द टाइम बीइंग अंटिल ही कम्स बैक. तो कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू. भाई प्लीज इफ यू कैन कंफर्म. या यस यस, आई एम फाइन. Don't you think Chile is looking more comfortable in left midfield or left wing back? I in fact was going to say Derain कि भाई चिलवेल का देखिए पहला चीज क्या है, फाउल करूंगा. He is having that mentality आज. I think he is still not having the legs. एक मैच फिटनेस नहीं है ये उनमें. I really would like to say. That's the main problem with Chilwell अभी. लेकिन कोई नहीं, I think ज्यादा protected है with left wing back, so maybe it's better for him. That I must say. भाई लेकिन Fofana versus अच्छा, Fofana versus ये हो रहा है रफाइल लियो. It's not Reece James versus रफाइल लियो. अजय ऑफसाइड है लगता है. माउंट विद अ चांस, माउंट विद अ फिनिश, लेकिन ऑफसाइड है, ऑफसाइड है. आई थिंक ऑफसाइड दिया गया. नो मैन, नो, आई थिंक इट वाज क्लियर भाई. नाइस 1-2 का अटेम्प्ट था ओवर द टॉप. बहुत ही अच्छा फुटबॉल फ्रॉम चेल्सी फॉर द टाइमिंग. लेकिन इट वाज बैक, प्लेइंग फ्रॉम द बैक. अच्छा, सबसे पहले तो अपना ओबामेयांग ही ऑफसाइड थे. I don't think that counted. Reece James, I think it was it, or Sterling was it? हाँ, Aubameyang playing back to Mount, definitely offside. Mount was offside. Haaland again. Oh my God, मैं captain in UCL fantasy, bro. Thanks.
1-1. Neymar is attitude problem. Yeah, बिल्कुल. I think he gets more criticized for his performances than what he deserves. लेकिन attitude I 100% agree. अच्छा, यहाँ पर एक मीटिंग होते हुए बिटवीन माउंट, स्टर्लिंग एंड ओबामयंग. जस्ट थिंकिंग कि हम क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट. Meanwhile, let's see. Yes, it is basically Haaland goal. Haaland, भाई सब्स्टिट्यूट कर दे हालैंड को. Too early. मीनवाइल गोल दिखा रहे जो पिंग पोंग हुआ था चेल्सी का. अरे भाई क्या था वो. आई कांट इवन फिगर आउट हु हैड द बॉल, बट कोई नहीं. आई विल टेक इट नो मैटर व्हाट. इन यस, कोपेनहेगन टेकिंग द हालैंड ट्रीटमेंट. मीनवाइल चलो 2-0 हो गया है. ओके पीपल, जीरू हैज ही टच द बॉल? प्लीज लेट मी नो. Has Giroud touched the ball? Meanwhile, Fofana का इंजरी क्या? I hope not, bro. Fofana and Reece James का इंजरी होती है ना, डर लगता है यार. They're just they've had long term injuries यार दोनों. In Chilwell as well. Yeah, बिल्कुल. Exactly. I hope he's not injured. He's moving freely. Darren Abhi, he's moving freely. I think he's fine. Just about fine. Remember, unke basically there is a player who's on yellow card that we shouldn't forget, and that will help Chelsea. Maybe we should attack that particular एरिया ऑफ द पिच. क्रूनिच दैट इज. तो उनका राइट साइड, हम अपना लेफ्ट साइड. चलो श्रेय वापस से आ गए. अरे ये क्या हुआ? श्रेय वापस अटक गए. श्रेय नहीं अटक रहे हैं भाई आप. कोई नहीं. आई थिंक इट्स श्रेय's इंटरनेट इज डाउन, बट कोई नहीं, he'll come back. हालैंड कभी सीधा सीधा गोल क्यों नहीं मारता है? बार बार स्टंटमैन बना है उसको. You know what? यार अगेन मतलब we rather celebrate what he can score ना. That's what I would say. By midfield में we are winning fouls. That is how we are kind of doing well. चलो श्रेय आई थिंक इज गॉन अगेन. हालैंड रुकेगा नहीं भाई, सारे रिकॉर्ड्स खतरे में हैं. हाँ यार मतलब लेट्स जस्ट सेलिब्रेट हिम गेट स्कोरिंग द गोल्स यार. रियलिटी इज ही विल बी स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स. कुलिबाली विद अ लेफ्ट फुटेड अटेम्प्ट फॉर अ लॉन्ग पास बट नॉट गुड. चिलवेल यहाँ पर हकते हुए. चिलवेल अच्छा नहीं किया भाई आपने. कोई नहीं, होता है. माउंट आज गोल मारेगा भाई. ऑलमोस्ट मार दिए थे. इनफैक्ट आई वुड से दैट इट वाज एन ऑफसाइड गोल. एक और हुआ था एक चांस जो उनके कीपर बचाए थे. Man, what an Alvarez he is. He is playing like an interior alongside Bernardo. City going 2-3, 2-3. Oh my God. People, Fofana is looking bad. ये क्या है यार? Fofana scoring और फिर injured. What is it about Chelsea and injuries? Rafael लियाओ के साथ बैटल अच्छा रहा है अभी तक. But I believe he's injured himself. He's doing well against Rafael Leao, लेकिन unfortunately यूवे गोल. oh my god, it's interesting. बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है यूवे का, बिकॉज रिमेंबर यहाँ पर पीएसजी स्कोर किए भाई. फफाना हैज ऑलरेडी सिग्नल्ड. लुक्स लाइक फफाना इज वॉकिंग ऑफ. इमेजिन राफेल लियाओ के साथ कौन होगा भाई? एस्पिलिक्वेटा और चालोबा. आई कैन सी अस कंसीडिंग अभी. और वी शुड जस्ट गो फॉर द बैक. आई फील I hope they get Gallagher and go positive. Just go for the back. Play Chilwell and Reece James as fullbacks. Fofana is almost crying, bro. Oh man, it's a long-term injury or what? Chalobah coming out. Okay, so एक चीज पॉजिटिव ये है कि unlike a Tuchel, looks like Potter trust कर रहे हैं Chalobah को in such an important game coming on in 37 minute. Having said that, मेरा personally opinion ये है कि भाई Fofana was doing very well against Rafael Leao. No disrespect to Chalobah. I felt that maybe it was a good chance to go for the back क्योंकि हम midfield में beat हो रहे हैं. Loftus-Cheek is getting body जैसे आप लोग ने भी बोला है. तो I felt that maybe Chalobah comes in midfield. I don't know. Let's see. देखते हैं. I thought it would make sense to get Gallagher on. चलो यूवे का देखते हैं कौन मारा है भाई. यूवे का Rabiot. Oh my God, Rabiot scoring. Yeah, Mount is playing good, bro. वो ये free roll उसको दीजिए. I think that's what his role is generally, ना. RLC getting body. This is a big injury. Yeah, looks like it's a big injury. But he was at least walking. It's not as big as what he had in the past, Manav.
Yeah, I feel we'll concede, bro. मुझे लगता है हम concede करेंगे. That's my gut feel. Half time के पहले नहीं करे बस. Oh my God! What a coming together, भाई. Kovacic with a very bad challenge almost. Missed time challenge. And what a coming together, भाई. That would have been a major injury. Luckily कुछ हुआ नहीं. Kovacic को 100% yellow card. Kovacic gets a yellow card, भाई. Kurunic नहीं, भाई. Kovacic भी है yellow card. Kovacic against Giroud or what? हो टोटली मिसटाइम्ड. कोवाचिच बॉल के लिए गए थे क्लियरली, टोटली मिसटाइम्ड और मिस कर दिया बॉल को और जीरू को मार दिया है जोर से. चलो कोई नहीं, राबियो का गोल हुआ है तो लेट्स अपडेट. चलो यूवेंटस का हमने स्कोर डाला ही नहीं है स्क्रीन पर ना. चलो तो आई थिंक इट्स गुड. शुड वी पुट अ यूवेंटस वन ऑन द स्क्रीन दो? मेक सेंस? People, everyone, do not just forget to like the stream. Absolutely like करिए भाई, लेकिन do not forget to subscribe to Shrey FC. No problem भाई Shrey, absolutely always welcome. आप जानते ही हो. Do you think Fofana is like Romero? Very good but injury prone. You know what? Fofana injury prone नहीं बोलूँगा, लेकिन he's had a long term injury. तो again someone coming from long term injury for the next say 12 to 15 months, थोड़ा सा sensitive रहता है मामला. तो it's one of those cases. तो you have to be extremely careful with him coming back. I don't think I'll term it as injury prone really. Kovacic with a nice run, लेकिन भाई अब Kovacic yellow पे. I can see us conceding. I hope we don't go down 10 men क्योंकि Koulibaly and Kovacic, Koulibaly getting a lot of you know what you say tackles already. Okay, Shakhtar. कौन स्कोर किया यार? सिटी भी 3 हो गई है. Oh my god, let's update the scores first, then we'll see who has scored. Confirm हो गया ना? तो City has scored. भाई यूवेंटस का डालते हैं यार स्कोर, क्या बोलते हो स्क्रीन पे? अच्छा यहाँ पे नाइस 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 चेल्सी का, लेकिन क्या करेंगे? स्टर्लिंग, स्टर्लिंग अकेले पड़ गए. ऑफसाइड है शायद. नहीं नहीं दिया ना ऑफसाइड, नहीं दिया नहीं दिया. रीस जेम्स हैज द बॉल. रीस जेम्स गिविंग इट टू स्टर्लिंग. स्टर्लिंग कटिंग इट बैक टू रीस जेम्स. रीस जेम्स लो क्रॉस डाले बट वेल क्लियर्ड बाय मिलान. Oh my god, this is interesting. बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है मैच. ऑल ऑफ सडन आई एम होपिंग दैट वी डोंट कंसीड अभी के लिए. दैट्स द रियल डील मेरे लिए, सच में बोलूं तो. Good to see you. What do you think of Chilwell's performance today? Well, in my opinion, Chilwell has been edgy. Reason being that he's not having the legs. So clearly दिख रहा है कि Chilwell is trying to block the player, go with that kind of sense. But मैं glad हूँ कि Chilwell actually is been played wing back and not full back. क्योंकि फुल बैक लास्ट गेम में अच्छा नहीं लग रहे थे. तो इट विल हेल्प हिज कॉन्फिडेंस, बट इन माय ओपिनियन नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ गेम्स. इनफैक्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड बहुत अच्छी नहीं की है. मतलब जनरली कुलीबाली और चिलवेल जनरली मैं बोलूँ तो, सच में बोलूँ तो. बेलिंगहम स्कोर्स एज वेल. ओके भाई, बेलिंगहम इज आल्सो देयर इन माय यूसीएल फैंटेसी टीम. Okay, Zaka with a volley for Shakhtar. Interesting. Reece will focus more on Liao than on attacking. You can say that. You can say that. That's a good call, Darian. तो does that mean that Chilwell surely will not play 90 minutes? I don't feel. तो हो सकता है that Sterling will come to the left wing, जो सॉल्सबर्ग के साथ हुआ था in अभी नहीं, लेकिन maybe after say 65-70 minutes. Dortmund 2-0 away to Seville. ओके यहाँ पे लकीली फ्री किक नहीं हुआ है चेल्सी के अगेंस्ट एंड वी वन बैक द बॉल. स्टर्लिंग ड्रॉपिंग डीप. स्टर्लिंग विद अ नाइस रन. प्रीटी श्योर इज अ फ्री किक. और यस, येलो कार्ड है क्या बेनेसर के लिए? आई होप येलो कार्ड दे दे. हाँ भाई है, येलो कार्ड है. नाइस नाइस येलो कार्ड एंड द रेफरी इज थ्रोइंग कार्ड्स आउट. आई मस्ट से मेरे लिए हाँ, इट वाज, ही वाज डेफिनेटली ऑन द अटैक ब्रो. येलो कार्ड 100% येलो कार्ड था. उसमें आर्ग्यू कैसे कर सकते हो भाई बेनेसर आप? क्लियरली येलो कार्ड था. नहीं, दनीला परेरा. ओ यस ब्रो, मैं भूल गया, यहाँ पर मेरे सामने ही है, मैं देखा हूँ अब. ओ माय गॉड, दनीलो परेरा भाई अभी तक डिसेंट कर रहे थे एज अ सेंटर हाफ इन द बैक थ्री, लेकिन देखते हैं. मतलब आई एम जस्ट लुकिंग एट हम. ओके, बहुत अच्छा क्रॉस था, बहुत अच्छा क्रॉस था. दनीलो परेरा शुड हैव गॉट हिज लेग. ही शुड हैव क्लियर इट ऑन टॉप. ऐसा करना था, मतलब ऊपर भेजना था बॉल को. बट आई थिंक he just missed the shot.
He just missed the shot. What was that? और वो शॉट लेते भी तो भाई कहाँ गोल के अंदर जाता. टेरिबल. अभी ढंग से देखा मैंने रिप्ले. Enzo Fernandez, and yes, Enzo Fernandez का बॉल था. People, I called it. Yes, Benfica back in the race. So Juventus has a big task. Benfica getting 1 point is huge in this game. और मैंने 1-1 ही predict किया था, by the way, just so you know. अब देखते हैं whether it stays like that. Nathan, Vishal, Manav, thanks. Bad defense from Alaba and Mendy. पूरा खुला छोड़ दिया. Okay. ADME scores. Oh my God. Sevilla, man, clear है जैसे श्री ने बताया था ना. Okay. Nice by Reece James. Meanwhile, Rafael को दिया नहीं. लेकिन Dortmund having a field day against Sevilla. Dortmund खुद इतने अच्छे नहीं लग रहे generally as a team for me. I am not इतना convinced. But you have to give it that Sevilla have been so poor generally. Tomori yellow. Okay, I think I missed that one. Thanks, bro. तो Tomori yellow, Balotore yellow, Krunic yellow. Oh my God, ये हो क्या रहा है? आई थॉट वो दिया था बेनेसर के लिए, लेकिन टोमोरी को दिया. ओके, आई थिंक डिसेंट के लिए होगा. भाई टोमोरी सेलिब्रेट करेंगे बाई चांस स्कोर करे तो ऑन दैट लेवल अगर बोलूं तो. ओके एवरीवन, अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम जो भी आ रहा है. एंड यस पीपल, अभी तक क्या लग रहा है भाई चेल्सी का? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट टू कन्विंसिंग एज इट हैज बीन इन द रीसेंट टाइम्स, लेकिन बीच के हाफ में आई थिंक वी डिड प्रीटी वेल. I think Mason Mount has had a much better game. Sterling, nice runs, लेकिन I think he's been well fouled by Milan. इसलिए maybe we're not able to get that opening on the right hand side. एक जो मिला था वो offside हो गया था. अच्छा यहाँ इंजरी हुई है आई बिलीव टू बैलोटोरे. स्टर्लिंग मार दिया उसको, कोई नहीं. या फोफाना इंजरी इज अ मेजर इश्यू. हो सकता है अनिकेत, नोइंग हिम, बट आई एम होपिंग नॉट. टॉकिंग अबाउट दैट, मीनवाइल आई बिलीव नोनो मेंडेस को एक इंजरी लग रही है, लेकिन आई थिंक इज जस्ट अबाउट फाइन. ठीक है. ओके लेट्स सी. मैं एक सेकंड, मैं बाकी स्कोर भी चेक कर रहा हूँ. रियल मैड्रिड 2 शाख्तार 1 ही है अभी तक. शाख्तार के गोल में कौन है जरा बताना. मुझे लगता है 2006 का बुफन आ गया. ओ माय गॉड आदरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी पता नहीं भाई. ट्रूबिन करके बंदा है. ही प्लेज आई बिलीव वहीं खेलता, यूक्रेन यूक्रेन के लिए खेलता होगा, या यूक्रेन के लिए खेलता है. नेशनलिटी यूक्रेनिश है, यूक्रेनियन है. चलो केपा क्लियरिंग भाई 4 मिनट दिया है स्टॉपेज टाइम. अगेन यू कैन आर्ग्यू दैट एक गोल हुआ है, 3 येलो कार्ड्स हुए, फोफाना का इंजरी, और यहाँ पे स्टर्लिंग इज थ्रू. कम ऑन ब्रो, कम ऑन. व्हाई डिडंट स्टर्लिंग टेक अ शॉट? दैट वाज अ चांस. दैट वाज अ टेरिफिक चांस. It was almost against the run of play. Kepa का बॉल था just to clear. Somehow he won the ball and Sterling got it. लेकिन Sterling man took too much time. Maybe you can also argue there should have been one more player beside him. एक ऑप्शन बढ़ जाता वहां पर. डिफेंडर्स को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, which they didn't have and they were all behind Sterling only. Is this time for Chalobah redemption? I hope so, but I personally feel that it'll be a bit too much because मैं इसलिए बोल रहा हूँ, nothing against him, because I saw him not do well against Sadio Mane a couple of times bro in recent times. Sadio Mane और Diaz के साथ he didn't look good at all. सच में बोल रहा हूँ. But कोई नहीं. Kovacic with a nice run. अरे राइट साइड में देना था ना क्लियर. ओबामेयांग को बॉल क्यों नहीं दे रहे यार ये लोग इनफ. वही है कि ओके यहाँ पे वेराटी को लग रहा है इंजरी हुई है. मैन दैट्स नॉट गुड न्यूज एज वेल. या डी केटलर बोल वही है ना, जैसे माना हमने डिस्कस किया था प्री मैच में, जो 3 मैन डिफेंस है ना चेल्सी का, दैट इज द रीजन. क्योंकि उनको पता है कि जीरो का एज मच एज जीरो इज ग्रेट, ही डज नॉट हैव द पेस. तो दैट दोस 3 मैन आर फॉर द 3 मैन बिहाइंड मिलान. हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मिलान दैट दे विल हैव डी केटलरे एंड क्रोनिच स्वैप. Man, trust me, that should have been a goal, bro. That should have been a goal. Sterling took too much time. He took too much time. नहीं, he should have just shot in my opinion, मानव. हाँ, he could have squared, लेकिन I think जो एक डिफेंडर था लेफ्ट साइड से आ रहा था ना, तो he should have just taken a shot.
Well done by Kalulu, bro. Well done by Kalulu. लेकिन वही है. I think he should have just taken a shot because वो pass करता तो Kalulu left side ही थे. लेकिन कोई नहीं. We know that Sterling is not the best finish in the world as well. लेकिन हाँ, he will score hopefully. I did मैंने predict तो किया ही है Sterling के बारे में, but let's see. Okay, 3 minutes up, stoppage time. Let me actually stop the time meanwhile. ये वाला मेरे स्क्रीन वाला अभी के लिए. Raheem coming second half. You know what? In my opinion, midfield generally has not been too bad. लेकिन हाँ, D Ketlare, whether he has a physical element against that back three, I doubt it. Brahim Diaz, physically maybe not as much as well. लेकिन I think technically ज़्यादा confident on the ball है अभी. So I would not. If I was a Milan fan only right now, then I would have said yes. अरे गोल हो गया, गोल हो गया, भज गया यार. What a, oh my god, what a sitter missed by Krunic. Yes, Kepa with a very very important save by Rafael Leao beating Chalobah like Chalobah doesn't exist. You heard me right, people. सब लोग बोलते हैं चालोबा 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 टाइम मैन. भाई मुझे मालूम है अपने चेल्सी people are common sexuals are saying for Chalobah. Trust me, he's not the finished article. Chalobah is not the finished article. In my opinion, मेरे ख्याल से we should have just gone Reece James with the fullback option after the injury of Fofana. Anyway, let's see. Kepa has kept it. That's the best part. Oh my god. What is this, bro? We cannot handle Olivier Giroud. और half time हो गया उसी बात पर. Corner somehow we defended. But कोई नहीं, man. The best part is we are still leading. Just about. I will not be surprised if we concede. सच में बोल रहा हूँ. I can see us conceding. इसलिए मैं बोल रहा हूँ. We need one more goal. मैं इसी कारण में बोल रहा था. I am surprised that Gallagher is not on the pitch yet because I think Tonali and Benacer have got the better of Kovacic and Loftus-Cheek toward the first half. लेकिन भाई Kovacic has come well after that. Having said that, I think एक extra midfielder will give that added protection. और Mason Mount जो drop कर रहे हैं अभी can actually add on to the attack as well ज़्यादा. That's my opinion. आप लोग बोलिए. Real Madrid 16 shots, 9 on target. Shakhtar का Trubin clear cut 6 saves किया है. क्या बोलूं बताओ. अरे भाई साहब, that's brilliant. Thiago Silva clearance. Yeah, Chelsea get lucky there. Very lucky. Very, very lucky. Chalobah, first of all, he got beaten like he doesn't even exist. It is schoolboy defending, bro. Chalobah, you know that Rafael Leao will go on his right foot. Why show your left hand side to him? That's very schoolboy stuff. उसको बोलना चाहिए यार half time में. Thiago Silva, bro, always. Again, Kepa भी यार. Kepa, definitely. It's a Kepa thing. Yeah. खुल गया Chalobah. प्रॉपर स्कूल बॉय स्टफ भाई माना वो था. कोई नहीं लियाओ, लेकिन लियाओ के अगेंस्ट से मतलब इजी टू से. लेकिन हाँ भाई सब लोग लाइक कर दीजिए. और यहाँ पर क्विकली हम रिकैप करेंगे डेफिनेटली द गेम्स इन हाफ टाइम. एंड यस, लेट मी सी. ओके, लेट मी एक्चुअली टेक अ लुक अगेन. आई थिंक आई हैव अपडेटेड ऑल द स्कोर जो हम मेनली फोकस कर रहे हैं. चेल्सी 1, मिलान 0, रियल मैड्रिड 2, शाख्तार 1, मैन सिटी 3, कोपेनहेगन 0, and Benfica 1, PSG 1. That is what we are looking at mainly. लेकिन talking about quickly Chelsea again, just continuing जो मैं बोल रहा था अभी in terms of midfield. अब एक और reason हो सकता है that maybe वो D Ketlare को रखे because Krunic is yellow carded, remember, और D Ketlare can play that wide option B. So that is the only reason मैं देखता हूँ that D Ketlare might be kept on. That is for Milan. Get Leao now. Not yet, Darren. Definitely very good player. No two ways about it. Again, did he beat Reece James the way? I don't think so. That Sterling chance will be problem for us later. Yes, Gaurav 100%. I think उनका जो chance था बहुत अच्छा chance था. लिवरपूल के बारे में भी बोल दो. बिल्कुल यार शायद. Again, लिवरपूल देखिए कल मैंने to be very honest, I didn't watch the entire match every minute. हम वॉच अलोंग के दौरान कर ही रहे थे शायद, आप शायद नहीं थे, पता नहीं. लेकिन लिवरपूल गोइंग 2 in the midfield, then 3 before, मतलब in top of that,
मेरे लिए इट कैन बी अ ग्रेट थिंग फॉर लिवरपूल, क्योंकि नाउ दे आर हैविंग ए प्लान बी. एक और चीज क्या होगा इसमें, अभी ये कर दिया है तो इवन इन ट्रेनिंग आई बिलीव दैट हावी एलियट एक्सेट्रा विल प्ले दिस वे. और हावी एलियट फॉर एग्जांपल अगर ही इज गॉट ऑन इन द फ्यूचर, थोड़ा सा हावी एलियट 4-3-3 में आई डोंट सी हिम एज दैट प्लेयर हु कुड रिप्लेस हेंडरसन. तो मे बी द बेस्ट पोजीशन फॉर हावी एलियट विल बी जो आप शकीरी का देखते थे, वही है बेस्ट रोल उनका इन द टीम. लेकिन ओवरऑल लिवरपूल फॉर मी, डार्विन नूनेज, सॉरी ब्रो, शायद मुझे नहीं लगता इज द फिनिश आर्टिकल. हाँ, ही हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट he doesn't understand what Klopp says in team meetings, or the language is an issue, but again वो बहाना लगता है. But again half time हुआ है, we'll come back to it as well. Liao to Chelsea, why don't you think after injury Chalobah has been shit? Well, I don't think it was shit. There are certain क्लियर सिचुएशंस चालोबा का आपको पता है कि दिस गाय इज नॉट गोना डू इट व्हेन ही गेट्स वन ऑन वन अगेंस्ट प्रॉपर स्किलफुल विंगर्स. आई डोंट थिंक ही डज इट. ही इज वेरी गुड चालोबा लिटिल बिट मोर सेंट्रली. इसलिए मैं बोलता हूं प्लेइंग चालोबा एज अ लोन डीएम, दैट विल बी एक एक एक्सपेरिमेंट जो करना चाहिए पॉटर को. ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है. अगेन आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन, चालोबा एज मच एज मैं रेट करता हूं उनका जो फॉरवर्ड पासिंग है, एक जो टैकल होता है, एक जो बेसिकली एक चेल्सी एलिमेंट है उनके अंदर, आई लव दैट स्टफ. लेकिन प्रॉब्लम है दैट ही इज नॉट द फिनिश्ड आर्टिकल. So I know again a lot of carbon sexuals, don't like the fact that I say that always. Lekin I know that Chalobah, people have been calling for him to be used more. I agree. लेकिन इन दिस मैच सच मैग्नीट्यूड का मैच, गेटिंग ऑन 37th मिनट बहुत ज्यादा रिस्क हो गया मेरे लिए. Chilwell and Kova look good today. Mount RLC have so many misplaced passes. Sterling, what, ये मैं बताऊंगा about Sterling, अंशुल, that Sterling आप अगर गौर से देखिए, Sterling has been more towards the right hand side. उनका एक रोल रहा है आज. So he is not kind of floated around जो टूकल के अंदर करते थे. तो maybe that's why Sterling is like he's taking that extra kind of a careful touch. Maybe इतना ही बोलूंगा. Chilwell, he's not basically look good for me. Again, you might disagree. Yes, he's done the job. लेकिन एक free flowing Chilwell is something else, bro. I don't think हमने वो किया है. We didn't open up, depth side. थोड़ा we have. I think we have to do more वहां पर. Honestly, मैं बोलूँ तो maybe मैं harsh रहा हूँ on Chilwell. Kovacic has definitely looked better coming after the first 10 minutes. जब first 10 minutes में थोड़ा issue था midfield में. लेकिन again, लेट्स सी व्हाट द वेबसाइट इज सेइंग. उसी बात पर सब लोग लाइक कर दीजिए भाई, सब लोग. इट इज 1-0 टू चेल्सी. यस, कुलिबाली बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहे थे शुरू में, लेकिन कम ऑन, आई थिंक वी हैव टू गिव इट क्रेडिट टू हिम. इट इज ड्यू. कुलिबाली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड हाफ डिड हैव सम कपल ऑफ गुड क्लियरेंस. और याद रखिए यहाँ पर क्रूनिच बीइंग ऑन येलो इज आल्सो हेल्प्ड. यू कैन आर्ग्यू दैट. लेकिन अगेन सिल्वा, थियागो सिल्वा, ब्रिलियंट चांस. Unfortunately, their keeper, who's their second keeper, Milan, did save it, but it went for a corner, or that resulted in a goal because Chilwell's free kick, जो corner लिए set piece, it went to Chelsea. और ping pong खेलते हुए कैसे ना कैसे Fofana got in that goal, who unfortunately is injured, and that is the news of this half. Apart from yellow cards to Kovacic, Krunic, and I believe Tomori as well as Ballatore. तो अभी तक कौन लगा है best on the pitch who has looked? I would argue Mason Mount, bro. He's actually looked very sharp. Even एक offside goal हुआ था. Arguably, you can say that Aubameyang should have actually played that ball just a second before. हाँ, meanwhile, oh my God, एक बहुत ही बढ़िया chance था towards the end for Milan. And yes, Sterling had a brilliant chance. लेकिन you have to say, man, I think they should have taken a goal, man. Milan. Kepa has just about saved it. Let's see आप लोग क्या बोल रहे हैं. Yes, we'll come to other games भी. Verratti almost had his long-term injury. भाई escaped like anything before half-time. हाँ भाई, हमने cover किया था when he got injured. Sterling should have scored, and what a brilliance by Kepa at last minutes of the first half. हालैंड को रोक लो. कोई तो रोक लो भाई. पता नहीं यार, मतलब maybe the fact that they'll be clear in the Premier League, उसके बाद में अपने आप ही रुक जाएगा. नहीं, इंजरी तो नहीं बोलूंगा. कम ऑन, आई टू बिलीव, बट नाउ आई फील दिस न्यू सिस्टम, नूनेज इज गेटिंग चांसेस, जस्ट नीड्स टू वर्क आउट अंडर फिनिशिंग. कल भी ही हैड 7 चांसेस इन व्हिच ही शुड हैव स्कोर्ड, ब्रो. ही शुड हैव स्कोर्ड. लेकिन हालैंड के गोल्स दिखा रहे हैं अभी यार. ओ माय गॉड, क्या मैं बोलूं यार. मैन, व्हाट अ फिनिशिंग कॉन्फिडेंस है यार हालैंड में. आई डोंट नो व्हाट टू से. हालैंड दिखा रहे 2 गोल. 3-0 क्रेजी.
Okay, Fofana was in tears while coming off. I feel for him. Yes, Anshul, I really fear for Fofana, bro. Especially everyone knows that he's also trying to get into the French squad. It's a huge year for him coming to Chelsea. It's a huge move. Hopefully, yeah, he's not having a long-term injury, but look bad. It looked bad. He knows the best. Let's see. I still remember he was so good until he had the injury against Watford. Uh, okay, chalo, aa gaye hai. I think Shrey has come. So let's put in. Hi Shrey, कैसे हो? बेका भाई मेरे को खुद नहीं समझ आई क्या हुआ, एकदम सारा ही क्रैक हो गया, क्रैश हो गया मोबाइल अरे क्रैक अरे करना होता चाहिए, है भाई, बट सो टेक्निकल हैप्पी टू क्रैक टेक्निकल हैंड्स। चीजें होती है. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंड द गेम. क्योंकि मैंने बीच में मिस कर दिया था नेट की प्रॉब्लम की वजह से, माउंट का क्या हुआ था, लाइक जो गोल उसने मारा था उसी टाइम मेरा 2 मिनट में क्रैश हो गया था, क्या हुआ था उस टाइम? नहीं फफाना स्कोर्ड. और माउंट वाला तो ऑफसाइड हो गया था यार. माउंट का तो ऑफसाइड गोल हो गया बहुत था. अच्छा था, गोल बहुत अच्छा था। तो हाँ, लेकिन इट वाज अ नाइस मूव, वेरी गुड मूव. ओबामयांग आई थिंक प्लेड द फाइनल पास सेकंड लेट, आई मस्ट से, और माउंट रैन अर्लियर. ईदर वेज आप बता सकते हो. लेकिन मीनवाइल आई हैव टू से मैन, मतलब फफाना गेटिंग इंजर्ड ब्रो, ह्यूज न्यूज. अब देखते हैं कितना बुरा इंजरी है. आई एम होपिंग इज नॉट एज बैड. People who have watched Benfica versus PSG, do let me know in the comments. What has been missing for PSG? Danilo Pereira with a terrible attempt at clearing the ball. That kind of gave that goal to Benfica. लेकिन Benfica started the game very well. और फिर भाई PSG kind of came on. मेसी का I must say बहुत ही बढ़िया गोल था. बहुत ही बढ़िया गोल, awesome गोल. और यहाँ पर और गोल दिखा रहे हैं. अच्छा, वही गोल दिखा रहे हैं भाई. मेसी एक्चुअली क्रिएटेड द गोल फॉर हिमसेल्फ. दैट्स द बेस्ट पार्ट. मूव जो शुरू किया मेसी ने किया, और एंड भी मेसी ने किया विद अ चिप कर्लर, एंड दैट्स अ टिपिकल मेसी गोल ब्रो. व्हाट अ सरप्राइजिंगली फिनिश. लॉफ्टस चीक हैज अ बेटर परफॉर्मेंस आज मेरे ख्याल से कोवाचिच से। I would argue that Kovacic actually got in the game. I think Loftus-Cheek has not really looked visible. Maybe that's a good thing that he's just doing about his job. You can argue that, but you know what? Honestly, in this team, we need a proper DM. सच में बोलूं तो, we need a proper DM at times, because I feel that we are playing an extra man in central defense. उसमें क्या हो रही है ना? Our midfield at times बहुत ही ज़्यादा space है in front of say Kovacic, in front of Loftus-Cheek. और when we are losing ball, they are having इतना space to make that pass. और हम जानते हैं क्या होता है with those long passes or crosses etc that we do, right? Milan miss passing. Yeah, भाई Tonali Bandara Diaries, nice to see you again. भाई सब लोग like कर दीजिए please, it'll help certainly. Do not forget to like the stream. Bandara Diaries देखिए, Tonali का रोल थोड़ा सा अलग रहा है आज, if I may say so, because हम expect करेंगे at Stamford Bridge to have a lot of possession versus a Milan team. Let's be honest. So Tonali is actually dropped back and he's getting a lot of tackles in, is what I would say. So maybe that is the reason. Maybe they are missing that passer. लेकिन first few minutes में काफी अच्छा की थी यार मिलान. मैं तो बोलूंगा it's almost like Chelsea are मतलब you can argue yes Sterling का गोल होना था. Did you see that Sterling वाला chance? I think he should have finished that. Sterling should have finished that. Yeah, but एंड arguably स्टर्लिंग की ना यही प्रॉब्लम है, लाइक एज मच एज आई लव स्टर्लिंग, आई थिंक पिछले मैच में भी जो हमारा पैलेस के साथ था उसमें भी ही हैड सम चांसेस, तो कहीं ना कहीं फिनिशिंग आई थिंक सिटी में ही कुड गेट अवे फ्रॉम 2-3 चांसेस, चेल्सी में यू हैव ओनली वन चांस टू स्कोर, चेल्सी में आपको 3 to 4 चांसेस नहीं मिलने वाली, एंड आई थिंक ही हैज बीन मिसिंग अ लॉट ऑफ चांसेस अवेलेबल. उसके 3 गोल है इस सीजन, इट इजीली कुड हैव बीन 7 or 8 अगर वो चांसेस देते अपनी. Hmm. No, no, again, I'm not, I don't mean that he's not visible at all. What I meant is like, I felt that Kovacic उभर के आया गेम में ज़्यादा compared to RLC. That's what I meant. I probably put it the wrong way. देखिए मतलब definitely एक defensive element RLC has shown, and we have to respect the fact क्योंकि you know that he's not a typical DM. लेकिन I think for me, हाँ, पहला जो कार्ड लिया था ना क्रूनिच ने, that came because of RLC. That I can definitely take it. And then maybe it was Kovacic who kind of really grew into the game. We will have Kante for our next game away at Milan. We can control the आई थिंक midfield. मुझे लगता नहीं है वैसे अंकित भाई कांटे का, क्योंकि आई थिंक हमें रिमेंबर करना पड़ेगा चैट को कि वो 2 महीने से नहीं फुटबॉल खेल ले, लाइक वो इमीडिएटली नहीं ड्राफ्ट इन कर सकते. अब वो 2 महीनों से कोई मैच फिटनेस नहीं है, 2 महीनों से कोई मैचेस नहीं है, तो कांटे अभी नहीं वापस आएगी. मोस्ट प्रोबेबली सरप्राइज ना करो कि उनका शायद पहला मैच कैराबो कप में ही आएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैच फिटनेस इज अ बिग फैक्टर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अंकित भाई. कहीं ना कहीं या तो नेक्स्ट सैटरडे खेल ले या वुल्स के खिलाफ हाफ टाइम फिर हाफ टाइम फिर हाफ टाइम. तो आगे भाई क्या आपको लगता है कि बिना मैच फिटनेस के स्ट्रेट अवे कांटे को थ्रो करेंगे ग्राहम पॉटर? नहीं, नॉट एट ऑल. इनफैक्ट कांटे के लिए और भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा. आई थिंक कांटे कोविचिच दोनों ही ऐसे प्लेयर्स है ना,
उनका जो इंजरी हम जानते हैं, like their hamstring is an issue. तो you have to kind of give it basically that time and extra time कि नहीं, you bed in. Again, you can argue कि Loftus Cheek का जो defensive element लगा है, मतलब after the first few minutes, I think it has been decent. We might actually take the chance and just stick to them. But again, भाई जो लोग बाकी लोग जो भी जुड़े हैं सब लोग, प्लीज लाइक द स्ट्रीम, भूलना मत. लाइक्स कितने हुए हैं? लेट मी जस्ट चेक इट अप. भाई कैन वी गेट टू 100 लाइक्स? कम ऑन, वी कैन इजीली गेट टू 100 लाइक्स. आई नो टारगेट मैंने रखा है, आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन द टारगेट. सिंपल सा टारगेट है, वी हैव टू गेट टू 100 लाइक्स, आइडियली 150 लाइक्स. भाई लेट्स गेट दैट. एंड बाय चांस आप लोग सब्सक्राइब नहीं हो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स as well as Shrey FC. Sterling has a bit selfish mentality. Rishabh, I don't know, bro. मतलब I would rather say that अगर selfish होते तो I think he was caught in two minds. He didn't have the decision making on that moment to actually score that. But Sterling arguably has been a decent performer यार last few weeks के लिए. So I would also give him that. चेल्सी फैंस के ये नहीं कहते थे कि सेल्फिश क्यों नहीं होता हमारा प्लेयर, हैज अ सेल्फिश क्यों नहीं था, ही माइट हैव जीए. तो सेल्फिश इज नॉट अ बैड थिंग, बट बैकअप अगर आप कर पा रहे हो ना गोल एंड से, इट विल बी गुड. स्टर्लिंग ने अभी तक लॉन्ग रेंज 2 गोल मारे भी है, तो आई थिंक वी हैव टू गिव इट. ही इज स्टिल अ बेस्ट अटैकर. Hi Shrey, hi Ankit. हाय फतेह भाई, कैसे हो? Hello. भाई Are you guys happy with this? Are you smiling or are you scared now for the Liao show? Anything to get a win, bro. Anything to get a win. That's how desperate it is for Chelsea. But always kind of better to get that cushion क्योंकि Chelsea हकती है when it comes to basically keeping the lead these days, not the old Chelsea. लेकिन भाई everyone Fateh OP हो जाए in the chat. Everyone, let's have Fateh OP in the chat. Fateh, what do you think? Milan, what have they been missing? Like, or is it just the fact that their finishing hasn't been good? No, I think they had that one really good opportunity towards the end. That should have been 1-1. I mean, you can't, in the Champions League, you can't have these sorts of misses. Other than that, I don't think Giroud has been all that good, has he? Giroud has almost looked invisible, bro. I must say. Invisible, absolutely. So Yeah. I think well done to Thiago Silva. He's winning that, and so yeah, I think Milan. I think Chelsea is the superior team overall. But Sterling also should have scored. वो ये ifs and buts वाला case है. दोनों ही teams are not really exactly at the prime as things stand. We know that. But let's see. Yeah, best replacement for Kante if he leaves Chelsea. Man, in world football, I thought that Casemiro would have been the best replacement. Lekin again, he's not very young as well. Abhi to he's not coming 100% sure. I don't know, man. Shrey, by the way, शुरू हो गया second half. Let me actually put PSG वाला match भी साथ साथ में. श्रेय, कांटे का रिप्लेसमेंट कौन होगा यार? आई थिंक मैं रियलिटी में कांटे शायद कभी रिप्लेस ही नहीं होगा. आई थिंक हमें मिडफील्ड का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा. यू कैन नॉट फाइंड अ प्लेयर लाइक कांटे जिस स्पेस में रन करता था. वी नीड अ बॉल प्लेइंग डीएम रादर. राइस या बेलिंगम जैसे प्लेयर्स या बेनेस्क से ऐसे प्लेयर्स के लिए, ना कि कांटे, बिकॉज़ वी कैन नॉट फाइंड अ कांटे. एग्जैक्टली. और एडसन अल्वारेज, आई नो कल बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था उनका, लेकिन जनरली इज डूइंग वेल फॉर. बट ही इज नॉट गुड ऑन द बॉल. वही डाउट है मुझे बस. जैसे राइस कहना, बट राइस इज मोर प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस और अल्वारेज बॉल पे इतना अच्छा नहीं है. नहीं, ही इज डिसेंट ब्रो. ऐसा मतलब ही इज नॉट बैड एज वेल, लेकिन ही इज नॉट लाइक नोन फॉर इट. दैट आई एग्री जो आप बोल रहे हो. मतलब ही इज नॉट योर प्रॉपर रॉड्री लेवल इज व्हाट वी एक्चुअली नीड, सच में बोलो तो. लेकिन वो मिलने नहीं वाला. बट भाई कूलीबाली यार, फतेह, did you see his first few minutes? I saw the first opening few minutes, and a lot of people were saying he'll get a red card, but I think he's grown since then. Since that early part, he's grown into the game, and I think that can happen, especially. And sometimes, I think I don't know whether you guys have seen such defenders like in Italy. A defender like Samuel or Materazzi or even Koulibaly. At the start of the game, they'll go out, they'll take their man out, and then just sort of create that fear, that physicality, and then later on, when the forward is already knackered, they'll probably start playing the game. So I think Koulibaly did a bit of that today, because those opening 5-10 minutes, the way he went in, I thought it could have been a straight red also. Yeah, by the way, talking about this यार, फतेह है तो बात तो करना बनता ही है. भाई, what are your thoughts on Simeone Inzaghi? I know yesterday we discussed. I didn't expect us to win yesterday. Honestly, I thought we are so bad. I didn't even see the Roma game. I had almost given up. So, but yeah, I think yesterday was okay, defensively okay. Barcelona, I think legitimately should have had one penalty, maybe. But then other than that, I think even we've had a lot of bad luck over the years in the Champions League. So it's okay. I think it evens out. And I don't know, can we go through? I still don't think we can. But
if we do, wow, I mean that will be so नहीं, you good. have a good chance. अगर आप draw लेते हो away to Camp Nou, I think that's good. It's not that what I'm thinking, Ankit. I'm thinking what's the Bayern Barca rivalry? Because if Bayern come to Camp Nou and beat Barca, and then we can go and take a point there because they are not taking that game seriously because they've already qualified. So even if we lose at Camp Nou, we could be qualifying. Like, and Bayern and Barca have this really amazing rivalry right now. Like there's a lot of hate, and I don't know why that rivalry came about. Like I understand certain rivalries, नहीं but नहीं, I don't है ना, understand मतलब Bayern बहुत Barca हिस्ट्री यार. rivalry. 8-2 वाला मैच है, मतलब इनफैक्ट दे मेट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इन रीसेंट Yeah, टाइम्स, but तो यू कैन इमेजिन जैसे समथिंग यू रिमेंबर राइट. क्योंकि मुझे अभी लग रहा है अगर नेक्स्ट मैच बारसा जीतती है तो आई थिंक इंटर की भी, आई थिंक बारसा इंटर की भी पॉइंट्स टाइड हो जाएगी. एंड चैंपियंस लीग में आई थिंक एग्रीगेट पे अगर स्कोर पे आई बिलीव दूसरी टीम का ज्यादा होता है एग्रीगेट, देन दे गो थ्रू. तो अगर इंटर 2-1 तक डिफीट रख ले एंड दे थ्रैश विक्टोरिया पल्जेन, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इंटर के लिए बेटर ऑप्शन है कैंप न्यू पे ड्रॉ. आई थिंक अगर कैंप न्यू पे ड्रॉ हो गया तो आई थिंक द ग्रुप इज ओवर एंड बारसा विल बी जॉइनिंग यूनाइटेड इन द यूरोपा लीग. सो दैट्स अ गुड मैच टू वॉच ऑन. I don't think we have it in us to get something at the Camp Nou though. I think 3-0 or 4-1 or something like that. But even then, beat Victoria Pilsen and then get a point against Bayern, that might be enough. Thiago Silva with a very low headed clearance. लेकिन कोई नहीं. आदरी का क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई. आई होप आई कुड रीड माइंड्स ब्रो. आदरी प्रीटी श्योर वी डोंट नो, लेकिन मे बी एक चीज मैं जरूर बताऊंगा. व्हेन प्लेयर्स स्कोर राइट और वो हंसते हैं जनरली बिकॉज दे वुड हैव डन समथिंग सिमिलर इन ट्रेनिंग. दैट हैपेंस. मैं खुद वो करता था. आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट एनीवन इन द पैनल. रीस जेम्स इंजरी. Don't tell me. Oh, no. Tomori tackling Reece James. Man, भाई साहब ये नहीं चलेगा भाई. Tomori ये तो But चीटिंग है. Out of will syllabus हो you गया. guys ever consider bringing Tomori back? If he becomes an English national team starter, would you guys consider that? You I have think to, I right? will love to have him back, but it will cost 50 to 100 million. So that will be a problem. नहीं, it depends on his contract situation next. अभी तो next 2 years में तो नहीं आने वाला because he already extended, right? तो अभी तो नहीं आने वाला next 2-3 साल में. लेकिन I feel that I might actually bro. से देखिए मतलब lot of people for I'll give you an example Chalobah का. Lot of people बोलते हैं Chalobah should be given more chances, but Rafaelia already beat him couple of times. I don't think he's finished. He's not finished article नहीं बने. Tomori was that when he left Chelsea. Abhi Tomori he's far better. Yeah. So I would actually take him because he's someone who can play in a back three. He's someone who can play in a back two. He's someone who can play on the left side of center back. बहुत कम होते हैं world football में. Yeah. With the right footedness, he can play on the left side of center back. So and the plus that English quota, Chelsea quota. तो थोड़ा सा टैक्स डेफिनेटली लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा ही लगेगा, बट आई थिंक वी गुड. बट अगेन पीपल भाई सब लोग कहाँ गए? सब लोग आ जाए, सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. डू नॉट फॉरगेट यहाँ पर पीएसजी और बेनफिका गेम में कुछ तो हुआ है. रेफरीज के साथ कॉन्वर्सेशन चल रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. ओके, मुझे अभी वही समझ में आया मुझे क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं चश्मा लगाना भूल गया था. Thiago Silva's also down. Oh man, this is a shoulder injury. Thiago Silva को. Oh yes, Aniket saying that should have been a second yellow for Tomori. जो रीस जेम्स के साथ हुआ. नहीं यार, I don't think so, honestly. देखो येलो कार्ड होता है ज्यादा सीरियस नहीं है सिल्वा की, आई बिलीव. पता नहीं यार, शोल्डर डिसलोकेट नहीं हो जाए, लेकिन जीएस के साथ हुआ था. आई थिंक जिरू का हाथ लगा है, जिरू, बट आई थिंक इतना एक्सेसिव फोर्स में नहीं लगा जिस तरह रीप्ले में दिख रहा है. Okay, let me have more people. People are just retweeting it. If you guys can just retweet it, let me just send a tweet right now. If you can just retweet, brilliant. That includes the panel as well as the chat. सब लोग मैं अभी भेज रहा हूँ एक. Okay, let's see. Hopefully, if you guys can retweet और सब लोग like कर दीजिए, stream भूलना मत. ऑटोमेटिक YouTube बताएगा. YouTube एल्गोरिथम ऐसा है भाई, क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेट कर दिया YouTube एल्गोरिथम बहुत आजकल. अगेन मैं येलो कार्ड जो बता रहा था ना टोमोरी के लिए, देखिए अनिकेत, येलो कार्ड जनरली किस सिचुएशन दिया जाता है, स्पेशली सेकंड येलो, दैट इफ यू आर बेसिकली एक ऑपोजिशन इज गोइंग फॉर अ क्लियर अटैकिंग से रन, वहां पर आप चेक करते हो उसका अटैकिंग रन क्लियरली, और यू बेसिकली मेक अ टैकल विच इज क्रॉसिंग द लाइन थोड़ा, और डिसेंट.
तीनों में से नहीं था Tomori, I believe. What is your goalkeeper situation? Like, is Kepa only starting in Europe and in the league he doesn't We don't start? know, bro. पता नहीं, to be honest. Oh. अभी meritocracy is the thing. Okay, No, Loftus-Cheek with a run. कोई the हुआ new नहीं coach उससे कुछ. prefers Kepa? I think कहने की Mendy की injury has caused him. Mendy's injury and lack of match fitness की वजह से I think वो खेल नहीं पा रहे. I think for the first time fan base सच्ची में divide हो गया. Like nobody likes Kepa क्योंकि everybody is really scared of his shot stopping. But Mendy has made like जितने howler वो कर चुका है ना like last 6 months में, I think that has made a lot of fans a bit scared as well. I think first time it looks like both might not be good enough and हमें upgrade करना पड़ेगा. But sadly we are getting linked to Hugo Lloris जो अब 36 का होने वाला है, तो लिंक्स भी इतने एक्साइटिंग नहीं है, तो दैट्स अ बिग वरी. ओके एवरीवन वाचिंग भाई सब लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग ऑन भाई. फतेह आए टाइम निकाल के भाई, सब लोग आ जाए. फतेह फॉर मी इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन अराउंड यार, कम ऑन. एंड आई नो श्रेय हैज टू लीव एज वेल, लेकिन बट बिफोर दैट everyone please check करिए श्रेय FC का channel as well. You know that it's always tagged in description below. लेकिन if you guys can please share it, मैंने ट्वीट किया है इसके बारे में. Come on bro, we have so many subscribers. कहाँ है सब लोग? It's a very interesting second half coming on across games जो आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे. तो सब लोग let's have more people. कैसा होगा? लाइक कर दीजिए and do share it if possible in your WhatsApp groups anywhere. And do not forget to subscribe to both our channels as well as Shrey. Shrey, final words before going. I think my final words are I hope we win today and convincingly because win is needed and if we can't, अगर हम depleted Milan side को भी नहीं हरा पा रहे फिर तो I think it's really time for a better era, क्योंकि अगर हम इतनी depleted Milan को नहीं हरा पा रहे, हम full strength Milan को कैसे हराएंगे? I don't know. And उसके अलावा people please subscribe to Ankit bhai channel, great content, do subscribe to him and it's great to chat with Almighty Blues FC, Ankit bhai, Fahim bhai and to Fateh bhai. Fateh bhai के साथ बहुत टाइम से बात हुई and it's really good pleasure as well. So big up to everyone, hope Chelsea win. Thank you Ankit bhai to have me on. Big up Fateh bhai. Thank you so much everybody in the chat. Hopefully we win. Chalo, take care. And yes, people, we are live now. So hopefully if you can like, share, subscribe. Brilliant. Let's have. So goalkeeper solutions, Ankit, I think Mike Mignon, who is, I think AC Milan paid what, 15 million for him, 15 or 18 million or something like that from Lille. And he's been Serie A's revelation, like the best goalkeeper in Serie A. So I think if Chelsea were ever to consider, I think that would be the name. Yeah, Magnion, right? But he's injured, na abhi. Abhi to injured hai, but the way he had, like the way he performed last 100%. season, I think one of their best players. Like probably I think arguably he was the signing of the season, na last season. Ka, arguably, oh absolutely. Not even there's nothing to argue about that at all. Absolutely, and I think so. That is one signing, and I don't know which other clubs need goalkeepers. Like Chelsea probably. Who else? Like I think City are pretty sorted. Liverpool are pretty sorted. I think Spurs might require Lloris coming to the end, right? Mignon, I don't think will go to Spurs. Like I really doubt. Okay, Chilwell with a cross, लेकिन cross थोड़ा सा deep चले गया. कोई नहीं. Reece James coming on the right hand side. Goal. और एक गोल भाई साहब. Bad defending यहाँ पर. Was it Tomori? No, Aubameyang. नहीं. Who missed that tackle? मतलब it was a cross from Reece James when came from Chilwell. But a Milan player Tomori ने miss कर दिया भाई. It is almost a moment जैसे Danilo Pereira ने किया in the PSG game, where he actually miskicked his kick. वहाँ पर Tomori ने किया and Aubameyang was there. That is why a proper striker is required. I'm 100% sure अगर Kai Havertz होते उस moment में, pretty sure he would have not been anticipating that miss of Tomori. Chilwell, bro, I have to give it to Chilwell. Chilwell actually, yes, cross was थोड़ा deep, but गेम प्ले में इन्वॉल्व था तो यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट. चलो वापस से देख रहे हैं. रीस जेम्स, हाँ टोमोरी ने मिस कर दिया यार. टोमोरी ने मिस कर दिया. कोई नहीं, हम ले लेंगे 2-0. आई नो फफाना इंजरी इज स्टिल द बैड न्यूज, बट कोई नहीं. 2-0 इज अ बैडली नीडेड विन. एंड 2-0 भाई, मैंने 2-0 प्रेडिक्ट किया था आज प्री मैच चैट में. उसी बात पर लाइक हो जाए सब लोग. एवरीवन कम ऑन, कहां पर हो आप लोग? आ जाओ भाई सब लोग. चेल्सी का गोल हुआ है. कम ऑन आ जाओ. चेल्सी मिलान है. सब लोग जाग जाओ नींद से. गोल हो गया है. एवरीवन लेट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब. ब्रिलियंट. एंड फतेह ओपी भी हो जाए यार. फतेह लकी फॉर द स्ट्रीम. Absolutely. I think Manchester United, David De Gea, I still feel he might be there next season. I feel. Yeah, Nathan is the. No, I mean, I think Mignon, if Milan were to lose Mignon, they'd not lose him for anything less than say 60-70 million, like probably even more, because he's been that good. Yeah, बहुत expensive होगा.
the way he attacks, his distribution is so good. I mean, he can single-handedly start those attacks. So fantastic modern goalkeeper. बिल्कुल बिल्कुल चलो भाई आप बताइए एवरीवन यस चेल्सी हैव नॉट प्लेड वेल लेकिन आर्ग्यूबली कैन यू से दैट मिलान हैव प्लेड वर्स मिलान का ऐसा ना दे स्टार्टेड द गेम वेल Chelsea definitely been the better team. I mean, I don't know the well part, like it's a Champions League game, but I think it's a very deserved lead. It's a very deserved lead. I mean, मिलान के ज्यादा अनफोर्स एरर्स हुए सिंपली yeah, they're not. Yeah, I think Milan have been really subpar in a way, but not just subpar. I think Chelsea have sort of imposed themselves, their game, their pace. मिकाइल आ जाओ भाई मिकाइल फ्री है तो आ जाओ लेट मी नो आई थॉट इट्स अ वीकडे सो दैट्स व्हाई मैंने मैसेज नहीं किया अलग से लेकिन भाई मिकाइल बोला गोल 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 वी ऑल नो दैट मिलान को 21 तोपों की सलामी ओह माय गॉड Again, you can actually argue that Milan in England have been poor historically as well. Milan? Yeah. Milan England last win England में कौन सा था याद है आपको? Let me think about it. Last win in England, AC Milan. It was a big game. That's why I'm asking the question. Yes, correct. But okay. But I think they've not been in the Champions League for the last 5-6 years, I think. हाँ लेकिन till about 2011 तो थे ना 2012 तो थे ना तो they did have a few definitely और draws किया हारे. Yeah, I remember that 3-2 the Kaka game which they lost, but technically they were those 2 away goals. Yes. 2007, man, Kaka man, next level. But man, बाकी मैचेस में क्या हो रहा है देखते हैं quickly. Okay, Real Madrid still beating Shakhtar 2-1. Important victory होगा Real Madrid के लिए. I think they'll have strengthened their position. Sevilla scored one by the way, Dortmund के against surprisingly. El Nesri भाई आप लोग ने बोला था रेड कार्ड मिला था. Was it overturned? Okay. रेड कार्ड ओवरटर्न हो गया था ओके ही स्कोर्ड इन बेनफिका ऑब्वियसली 1-1 है विद पीएसजी जो आप देख ही रहे हो स्क्रीन पर यूवेंटस 2-0 अगेंस्ट मकाबी हाइफा व्लाहोविच स्कोरिंग द 50th मिनट ओके आई मिस्ड दैट कोई नहीं I think it's very important that Juve gets 6 points of Maccabi Haifa, but if PSG manage a draw against if Benfica manage a draw against PSG, then Juve will have to go away to Benfica and win most likely. Otherwise, they'll be going to the Europa League. So that's going to be very interesting if Benfica can hold on today. But I don't think. Do you think they've got it like to hold? Yeah, PSG? Just now actually PSG got a shot which Benfica keeper saved. So it's actually on the edge. वो वाला match है ना. See, I think the third goal could be coming in for Chelsea here. Oh yes, no way, man. Sterling is not having his day. Yeah, come on, bro. Yeah, I think the opposite. You should be able to score more goals. Like the way AC Milan are playing right now, they are, they've lost their shape completely. So getting those extra goals right now, and probably that will be great for your goal difference. Yeah. Acha, by the way, there was a comment. Tomori was on yellow, right? I don't know if you remember. There was a tackle that he made to Reece James. 3? 3-0. Yes, man, get in. It is basically against an Italian side, and Reece James had to score. Everyone remembers by last year Juventus के साथ क्या हुआ था. And Reece James, what brilliant player, bro. एक assist. I think you can argue that it was an assist previous goal, and this one a goal. Bhai, Reece James had to get in. Reece James, bhai, definitely brilliant. Very well taken goal, though. I mean, the placement, the power. Wow. Are we getting the gameplay now? Oh, totally. जो Chelsea में चाहिए था. Again, आप याद रखिए Chilwell moved centrally again for this. I must say Chilwell must get the credit. Or maybe Potter should get the credit. Bhai, Chilwell clearly has been indicated to go much more centrally or play that free role. So yes, he's playing wing back, but he's tucking into midfield a lot of times. जो Tuchel ironically चाहते थे, by the way. हम देखे थे the Juventus game last season. But yes, it's 3-0. Who would have imagined that? Shrey FC भाई, everyone. Shrey OP हो जाए. Shrey ने predict किया था 3-0, by the way. मैंने 2-0 किया था.
Yes, it's Reece James. Bilkul, Mikhail, absolutely. Okay. Okay, that's interesting. Raheem Shillings, koi nahi. Doesn't matter now. Doesn't matter. Goal, yes, absolutely. Officially, Reece is best finisher in this team. Beat diya Chelsea ne. Congrats, Angit. Thanks, yaar. Manav, absolutely. Big win for Chelsea. But it's not the end of the story. याद रखिए, it is just 3 points. अभी भी group में देखा जाए तो we are I think not there this. yet. I think Ankit, your group goes down to match day 6. Considering all the other results as well, I think It this is a can. group that's it's going to go down. I think, and maybe even all 4 teams could be alive. Like, what's the table right now? You've Yeah, I'm got just 4. pulling that Milan have out. 4. Just give me a second. मैं वही देख रहा था अभी. मतलब again, as things stand, I believe we should have been what, 4 second or third अभी. We are second now. We are second now. is As second. things stand. Let me actually pull it up on the screen. Achha, Yeah. nice work by Loftus-Cheek, bro. Loftus-Cheek defensively, I must say, he's look better. Sterling almost through. Oh my God, is that a card? No, बच गया. Almost through हो गए थे. But भाई उसी बात पर सब लोग लाइक कर दीजिए, please let's have. भाई likes बहुत कम है. Mods, can you help me out here? Come on, bro, everyone. Let's have more likes. Come on, this stream at least deserves 100 likes, नहीं? Minimum, if not 150. एक सेकेंड मैं देख रहा हूँ. अच्छा, substitutions coming for Chelsea. Looks like Jorginho is fit enough to come on. That's nice to see. तो लग रहा है we might be sitting थोड़ा with Jorginho coming, with Gallagher coming as well. तो midfield domination, Fateh. Oh, totally, absolutely. I think you're just going to sort of kill the game off now. I think with Jorginho Yeah. coming in, and why not? I think job is well done. But I think Milan are there for the taking, bro. Sorry, but They are. really they are there Yeah. for the taking. I They're there won't for be the taking. surprised at scoring one more. Yeah, I mean, I think, see, considering how close the group is right now, I think Chelsea should, aim to at least have 1 or 2 more हाँ. goals. They can do it. They can do it. Yeah, बिल्कुल, absolutely. Mikhail, in second half, Real Madrid is in Xmas tree transformation. Okay, interesting, nice. Yeah, even time to see this counter-attacking football from Chelsea. Yes, Mikhail, I hear you, bro. Lekin Aubameyang is off, Gallagher is on, so I think Fateh is right. Meanwhile, for Milan, bhi changes हुए, just so you know. Milan के लिए they've had multiple changes. I believe Charles de Ketelaere has come off, Yeah. and we had And Rebic coming on. Ankit, you being a Kaka fan, how do you rate Charles de Ketelaere? Like, do you think there नहीं, is he's a a possibility in the next 2-3 years that he could be somebody like that? I would not term it in that level yet, but you can see the skills. You can see why Milan has gone for him. Especially like again like a Kaka. Kaka, a lot of people forget. Actually, at times he used to play as a striker in a Christmas tree formation, or कभी Shevchenko used to play behind him. ठीक है. Again, even he has played wide also for Brazil. आपको याद है तो चार्ल्स डी केटले can be that guy. Problem इसके साथ ये है, इसलिए मैं jury's out अभी के लिए. I think body strength nowhere near what Kaka was at his age. Kaka ka body strength is highly underrated. Change of pace and body strength. These are two things that people forget about Kaka. Charles Kettle is more like a skillful base में definitely मैं बोलूँगा बहुत potential, but change of pace and body strength nowhere close. Chelsea on fire, PSG struggling as Benfica. How was the performance of Chelsea till now? Arjit Avijit, bhai, it was a typical Champions League professional performance. ऐसा नहीं बोलूँगा, we literally played them out of the park, but after the first few minutes, जहाँ पर हम लग रहे थे बहुत ही nervous, we have come back and done better. I must say that. Giroud finally looking like he's there in the game, but only for a foul. Sorry, Giroud. As much as I love you, bro. Let's have it real आज के लिए. Okay, man. This is fun, man. 3-0. भाई मुझे तो याद भी नहीं है in such a big game last time. वही Juventus वाला game याद आ रहा है मुझे. Juventus 4-0, I think. Where we actually 4-0 or beat 4-1. a big team. Was that 4-0 4-0 or हुआ था. 4-1? 4-0. Ironically, it was a game where Chilwell and Reece James got injured. Chilwell got injured, and next game Reece James got injured in the Premier League. Okay, यहाँ पर RLC doing well. Gallagher is playing on the right hand side, बहुत ही surprisingly. ये मेरे लिए थोड़ा सा surprising है, I must say. So that's Potter ball, भाई. देखिए, Jorginho has directly replaced Kovacic. That is clear. लेकिन Gallagher. Yeah. Okay, so what has happened is, I believe
Okay. So Sterling is still there, क्या? हाँ, Sterling is still there. So Sterling has taken the striker position, or Gallagher is playing in between the striker, behind the striker, on the rightish side. या बिल्कुल यार, मैं वही देखा भाई. गुड डिफेंस बाय बेनफिका, आई मस्ट से. गोलकीपर ने अच्छा किया दैट मोमेंट, बट कोई नहीं. आई थिंक दे हैव अ कॉर्नर. इज इट पीएसजी? PSG. या पीएसजी हैव अ कॉर्नर. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यार, स्पेशली फॉर यूवेंटस. ओके, राफेल लियाओ, व्हाट अ रन ब्रो. गोल होने वाला है. अरे भाई कूलीबाली ओपी एवरीवन हो जाए भाई. कूलीबाली ओपी एवरीवन उसी बात पर. कम ऑन, कूलीबाली Yeah. ब्रिलियंट ब्रो. I think Liao's had 2 runs, right? Like one was at the end of the half, and then the other one was this. Other than that, This. he's Other than yeah. that, yeah, नहीं एक और था. I remember against Reece James and Fofana again, लेकिन that was almost like a 50-50. क्लियर कर दिया था चेल्सी ने. Guys, I like the fact Gallagher isn't on pitch as a 6. Yeah, that is good. Exactly. I think that's a good point. क्योंकि rather have him playing in behind the forward than a 6. But actually, मैं सच में बोलूं, the best position for Gallagher is like in a 3-5-2 or a 4-3-3. जहाँ पर he's in just in front of the double pivot, or he's a number 8 typical. लेकिन हाँ, I agree. वही है only problem. Michael, does he have the width? Does he have that kind of skill? वो मैंने enough देखा नहीं. Reece James with a nice attempt, लेकिन I believe it was more a cross or a shot. What would you say? Cross, I think it was a cross, but not a very well placed one. Yeah, not enough power. Yeah, why Broya didn't come? Is there a need? Yeah, you could give him minutes. Maybe he'll come, Gaurav, abhi. I'm guessing Broya is going to come. I think safe खेल रहे. जैसे फतेह ने बोला ना, that maybe the अभी tactic है कि नहीं यार, Sterling is we'll probably have Milan playing more with the ball now. So maybe we are going to hit on the break at times. So वहाँ पर we are probably good with having a Gallagher and Mount behind Sterling for the defensive element. Technically the game is over, so I think Chelsea probably will just manage, these last 20 minutes. Yeah, यार I have to lost count यार बुदित. The way Chelsea नहीं स्कोर कर रही, मैं यहाँ पे डायलॉग मार रहा हूँ भाई. I have lost count कि who's scoring. नहीं, लेकिन Reece James had an assist and a goal. So big up to Reece James. लेकिन Aubameyang gets his goal as well. Yes, first Champions League goal for Chelsea, absolutely brilliant. And Reece James himself with a very nice finish on the right hand side. अरे येलो कार्ड मिला है भाई थियागो सिल्वा भाई साहब को. Rafael Leao is slowly but surely getting into the game. I think it's maybe the fact that, I don't know, Chaloba, have you seen him enough about clearances? I haven't, to be very honest about it. Dekhte, jury's out. But Fateh, now looking at this game, देखो अभी we are playing 3 at the back. I don't know if you got a chance to look at the weekend game against Crystal Palace, but what is your opinion? Like, are Chelsea missing more a midfielder or a defender? Like, No, I should we think go 4 at the back or 3 at the back? Today you're playing 3 at the back. Yeah, today we are, but what we should play? आपको क्या लग रहा है? Today we are doing great. I didn't see the Crystal Palace game, but I think 3 at the back is getting more and more sort of accepted all over Europe. Like, we've seen so many clubs try and do that. So I think I see on the basis of today, I think you've been the better team right from the first minute. So if this is how you're going to play, then I think you're going to do well. Now, can we say Milan are not up to? Yeah, they really struggled against Empoli. Like Rafael off. Yeah, Rafael off, and he doesn't look all that happy. So and why should he be? As in, do you think it's? I know Brahim Diaz is a good player, great player, in fact, but I know it's just 20 minutes left. I'm surprised, bro. I must say, I'm surprised you. But see, look, your Champions League game is again next week. Like next week is again UCL. Giroud so I think the game is done. I think the game is done. He's just saving them for the weekend and then probably the next game against you. So yeah, I think weekend maybe they are chasing Serie A, Napoli. To I understand. By the way, one hour buzz मुझे भाई definitely यार करना ही था, because remember Aubameyang started off in Milan in terms of senior
क्लब फुटबॉल, बट उसको एक सेरिया अपीयरेंस नहीं दिया मिलान ने, याद रखिए ये बात. तो एक्चुअली ही हैज ऑल द मोर रीजन टू सेलिब्रेट. No, but I remember stories, that he really wanted to come back to Milan when he was at Dortmund. But obviously there was no financial, like possibility at that stage. But now Milan financially have the ability, so but obviously too late for him. Yeah. But yeah, देखिए coming back, यहाँ पर like it's a new coach. What I thought was that he was probably going to struggle in Europe, but he's clearly showing today that that's not going to be the case, which is I think a massive positive. Obviously, going to the San Siro and getting, I think you'll still win there too. Like I think if you play like this, you will win that. Don't you think? आई Like, होप सो भाई. आपके मुंह पे घी शक्कर क्या ही बोलूं. yeah, मतलब टू बी ऑनेस्ट, अभी भी मैं बोलता हूँ, yes, I am very very impressed with the way that we have played in the second half, especially. But first half में there were moments, yeah, that was literally same thing that we were doing in the last few games. तो I'm not convinced totally. Plus हाँ, एक point जरूर है, फतेह की बात, I can understand why, because देखिए, to some extent we have not been having that midfield also that we want. Now that Jorginho is back in this game, for example, it looks like we might actually play better at San Siro. Who knows? Or yeah. But again, on Kaya the Havertz is also playing. experience that Potter has, like as a coach, do you think he has the necessary experience even in the EPL to sort of take the step up in the Champions League? Do you think that Chelsea No. can, maybe No. No no? is the answer. The jury is out. Well, I will not say no also. On what basis will you say? Because even at Yeah, Premier League level, high profile games where pressure है आपको, basically, or you're fighting for maybe a, say for example, a FA Cup semi final. I don't think I've seen him. तो मैं I cannot say that right now. हाँ, by the way मैं quickly comment लेना चाहूंगा यहाँ पर. Yes, by the way everyone, like कर दीजिए स्ट्रीमर, लाइक्स अभी भी मैं देख रहा हूँ. मैन वी आर नॉट 200 लाइक्स मैन, ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो रही है आज भाई. सब लोग लाइक कर दीजिए, कम ऑन, चेल्सी अच्छा खेल रही है. और जनरली काफी सारा आप देख रहे हो स्कोर्स, वी आर अपडेटिंग, वी आर कवरिंग लॉट ऑफ मैचेस. लेट्स लाइक द स्ट्रीम प्लीज. यहाँ पर अनिकेत, आप अगर फॉलो करते हो मुझे क्लोजली, यू नो इट, मेरा very strong opinion है that Chelsea should go four at the back. It's a very very strong opinion, because I think we have gotten into that habit of going three at the back when things are bad. एक shell में चल जाते हैं, and that is something that we know we don't have a plan B, और हम हकते हैं when we need a plan B in a game. इसलिए I want that plan B to be our main plan now. Yes, it'll take time, it'll take some points from Chelsea, but I would say go for it. Okay, let's go with absolutely. सिल्वा को सब करो. Yeah, that would have been one thing. लेकिन वो ये Fofana is injured, remember, Sagnik. Chalobah has already come on. तो would you get Aspi? I don't think so. हमें clean sheet रखना जरूरी है. Remember, as a backline, we are not confident as well. So I think that clean sheet is important, both for that as well as the goal difference. Yeah. नहीं डेरेन, don't think हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इटालियन टीम्स के साथ. We don't have a great record either. It's kind of mixed. I think last time I was talking to you and I told you that, I remember watching Chelsea go to the Olimpico under Ranieri in 2003-4 and win 4-0 against Lazio. But other than that, when has Chelsea won in Italy? Exactly. In Italy बहुत बुरा है. I'm saying no, that's why overall mixed. लेकिन यार all of a sudden थोड़े निगल्स टाइप लग रहे हैं यार. सब लोग बहुत टैकल्स कर रहे हैं. I don't know what's happening. Potter can be Man City 5 हो गया. अरे भाई साहब, Potter can be a very good manager. Let me update the scores यहाँ पे. यार ओबामयांग का फ्लिप, मैन, that was the best part. वो दिखा रहे हैं वापस से. एक सेकंड में अपडेट कर रहा हूँ स्कोर. मैन, ओके, Alvarez scoring, people. Alvarez has scored in the 76th minute. So let me update that as well. Oh my god, मैंने वो अपडेट करना ही भूल गया था. This is like a pasting, bro, for Copenhagen. Mahrez penalty in 55th minute and Alvarez in 76th minute. बाकी I'm just going across the grounds. Juventus 2-1 हो गया है. Maccabi Haifa scored a goal in the 75th minute. David scored for them. I hope they बहुत equalize. interesting. I hope they equalize. Like if they equalize, Oh then my god, there is they're in the mud, bro. they're in the mud. Then if that happens, then maybe Allegri gets sacked and Tuchel comes in. Maybe. Yeah. Let's see. I still don't want Tuchel to go there to Juventus. Somehow I don't see that he'll be happy there. Somehow, I don't know. पता नहीं. Okay. He's unhappy everywhere though, Tuchel.
यूसीएल 22 में इमोशनल मोमेंट क्या था? यू मीन 21, यू मीन आदरी, राइट? जहां पर हम जीते थे। मेरे लिए सेकंड लेग वर्सेस पेरिस व्हेन द होल स्टेडियम वाज सिंगिंग। ओके, 22 वाला बोल रहे भाई। इमोशनल मोमेंट 22 में तो मतलब फॉर मी इट वाज इमोशनल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कमबैक ऑलमोस्ट कर दी ना, चेल्सी वर वन ऑफ द टीम्स व्हिच हैज बीटन मैड्रिड इन मैड्रिड ब्रो। और हमने जो किया था परफॉर्मेंस, इफ नॉट फॉर दैट, बाय द वे आई डिड अ शॉर्टर वीडियो आज, चेक इट आउट, टॉकिंग अबाउट बारसा एंड इंटर वाला गेम कल ना, तो Yeah, उसमें I wanted to हैंडबॉल के see बारे that. में बोलो। यू डिड वॉच? Yeah, I wanted to see that. I saw that on Instagram that you put, like that thing that Yeah, I I hope. actually I spoke hope. about, I gave a reference of Alonso's goal against Real Madrid. To check it out, why I have spoken about it. Okay. PSG still struggling. Yeah. So what are your what is your take on that? Was that a handball? I mean, Watch the video because I think more people need to watch the video. But simply put, I would say that, देखिए, I think Barca got robbed. I cannot deny that. Barca got, and Inter were lucky, but Inter deserved it at the same time. Inter deserved to win that game. I won't say that Barca deserved to draw, unlike many, but Barca were unlucky. You have yeah, to agree that it was a right. crazy refereeing decision, crazy VR, a non-existent VR. It's kind of double standards. लेकिन होता है भाई, चेल्सी के साथ हुआ है. A lot of times we know. Yeah, I mean, But in I remember the Samuel Eto'o against Barcelona versus Chelsea 2000, and was it 2009 when the robbery, that disgrace yeah, in that is Pogba 2009 said, वही and मैं बोल रहा हूँ ना, उसका ही something reference. happened, like there the hand. I think there was a hand involved. Was it Eto'o? ये चार लोग थे भाई. One was नहीं नहीं, it was who was Eric Abidal. Eric Abidal का Huh. था एक. Yeah, Then there were three more moments. Basically, there were four moments. Balak was involved in two of them. Palak chased the Drogba one, referee, right? Anelka one. Okay. Yeah, Oh, luckily clear कर दिया भाई गोलकीपर ने yeah. मिलान का, लेकिन it was a nice counter through ball over the top from Chelsea. यार Aniket, I'll let Fateh take this. Fateh, I know your take on Inzaghi, but please, if you can just See, I take this think if, comment. if we had lost yesterday, then I think Inzaghi's job would have been in real danger. Now that we won yesterday, I think he'll stay till the World Cup. But I don't think our form is going to improve too much. I think, with Inter, the problem I think now is that for 3 years we played the same way, like with Conte, three at the back, Simone Inzaghi. So now teams know how to sort of shut Brozovic off, how to press us, and it gets stale. Inevitably, I think you have to mix it up, change it up, and we've just not changed it up. And obviously, with no money, you can't really change things. So it's very easy Okay, now big to, news. Sorry to cut you, bro. yeah. Messi is off. Sarabia is on. So I think PSG are they happy with the draw? Is that I what I hope they take are. from that? I hope they are. What's that group like? Benfica has 7 points. Benfica after today, if it stands this way, 1-1 जो है अपने स्क्रीन पे दिख रहा है वो 7 points होंगे. इनफैक्ट दोनों 7 points पर है, with PSG topping the group as things stand. So all we need to pray for is a Maccabi Haifa equalizer. That's it. No, bro, I would actually, as a neutral, want कि fourth match day, fifth match day भी interesting हो यार, सच में बोलूं. हाँ, but वो होगा, but आज draw हो जाए. ओके, एनीवे यहाँ पे चेल्सी ने क्या किया है, लेट्स गेट बैक टू द गेम क्विकली. अगेन ब्रोया हैड कम ऑन, मैंने वो मिस कर दिया. ब्रोया हैड कम ऑन फॉर स्टर्लिंग, आई फॉरगॉट टू से दैट, बट या मैंने देखा था. फॉर पीपल वनाबज, अगेन इट्स इजियर टू से राइट नाउ, लेकिन जेन्युइनली मुझे लग रहा था जो कमबैक कर रहे थे हम रियल मैड्रिड के साथ में, जो वापस से उन्होंने कमबैक कर दिया, आई फेल्ट दैट मे बी यार दिस वाज अगेन आवर ईयर, वो एक फीलिंग आई थी मेरे में. लेकिन अगेन इट्स इजी टू से. बेनफिका का डिफेंसिव सेटअप अच्छा लग रहा है, और इनका यार एंजो फर्नांडिस ब्रो, एंजो फर्नांडिस, ही इज द रियल डील. अरे जस्ट वाइला इन द हाउस, जस्ट वाइला ऑलवेज गुड. अगेन लेट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब पीपल, कम ऑन. काफी कम लोग हैं भाई, आई नो इट्स 2:15 बजे रात को, लेकिन certainly we can have more people by liking the stream or sharing it if possible. I have tweeted about it, so if you can retweet, absolutely brilliant. Just while you tell me, as in what do you think has been the most impressive part of Chelsea? मेरे लिए सच में बोलो तो I don't know, man. Fateh, would you agree with this? Chelsea ने the fact कि यार we are not really depending so much only on Reece James. Chilwell has really grown into the game as well. तो आई थिंक दैट्स द मेन टेक अवे अभी तक कि रीच Yeah, I जेम्स, think यस ही हैज solid. अ स्टैंड आउट, बट
Yeah, I think you've been solid everywhere. Like not just Reece James. I think it's been a very solid effort all round by Chelsea. Even in defense, like you said early on, Koulibaly with those fouls. Later on, I think he's bossed it. So yeah, for me, I think complete team performance. I won't say that there's just one player who would be your man of the match. Like okay, Reece James, yeah, I think so. Reece James, he got an assist and a goal. I know And that. लेकिन yeah, I know you would say that Rafael Leao के साथ हाँ अगर Fofana रहता pitch पे I would argue that Fofana would have taken it लेकिन unfortunately he got injured because he did very well against Rafael Leao first half में. But overall मैं सच में बोलूँगा that what I felt, I think I'll probably edge it to no, I think Reece James. Come on, I Reece mean, James ही देंगे यार, Reece James ही yeah, देंगे मतलब yeah, you have to give it to Reece James, bro. you'd be I don't robbing think him if after this performance, you'd be robbing him. Like if yeah, he Reece does. James has to be the guy. But he's almost our only man ना हर एक मैच में. तो I am like almost wanting to say that positive ये है कि एक डिपेंडेंसी लेकिन जरूर कम हुई है. ऐसा नहीं लगा है कि हर एक अटैक रीस जेम्स के थ्रू ही हुआ है. जैसे I did see in the second half especially that Chilwell, he was making a few good runs midfield में he was going. So I would also argue that Chilwell by chance if he had got one goal, I would have given to Chilwell if he had got a goal or assist. Yeah, Lekin because of that goal or assist mattering so much, Reece James has to get it. I agree. Broya trying to keep the ball. I don't think he'll be able to. Yeah, he has been able to. Good play by Broya. Yeah, absolutely. Yeah, Dortmund scores 4 Sevilla in the mud. Brandt, Adeyemi, Bellingham all scored for Dortmund. Reece James with a goal and assist in 100 start for Chelsea. Fairy tale. Okay, I actually missed that. Thanks, Just Troyola. Brilliant that. Bellingham balling at 19. What's your gut feel यार फतेह बेलिंगम कहाँ जाएगा? सब लोग लड़ रहे हैं उसके लिए. everybody's fighting for him. I have a feeling that he might even end up at some club like Liverpool with the Klopp factor and Yeah, having और अभी 4-2-3-1 कल ही they moved back after a long yeah, time they changed the setup. yeah, If they're they instant अगर रहते हैं 4-2-3-1 के लिए he is a brilliant pick, bro. brilliant pick. Yeah, exactly. But definitely EPL, right? No, there's no way Madrid or anybody would be wanting a PSG. No, I don't think he'll go there. I think it's destiny that he comes in the EPL. And do you want him? Do you personally? Do you 100%. yeah? 100% लूंगा. How much are you लेकिन willing to pay for him? Like नहीं in a very realistically नहीं आने वाला फतेह don't लो मतलब as much as I would love to say when it and the reality is अगर by chance and not even Liverpool मैं तो बोलता हूँ even Man City as well as Man City नहीं लेकिन Real Madrid are also interested. So if those kind of clubs come, as much as Chelsea, I would like to argue that nahi we could have pulled a lot of those players few years ago. For the next 12 months I don't see us pulling such player. सच में बोलता हूँ. all right. Declan Rice back Chelsea maybe. Yeah, Sevilla is having a new manager as well. Yeah, and it's very interesting that Lopetegui, the Sevilla manager, wasn't Sampaoli already at Sevilla once? I think he was right. लेकिन Yeah, यार Sampaoli Lopetegui won का the बहुत Europa interesting League. यार. Will he suit the EPL? I don't know, bro. सच में. Lopetegui. Yeah. मतलब you can argue that as in आज के लिए मतलब everyone kind of all the best managers are here, but I still have my doubts. Musiala is miles ahead of Bellingham by the way. भाई अलग player है ना. Bellingham is I consider Bellingham as a box to box. Musiala I consider is more like someone who's better off in front of the double pivot यार. ये मेरा डेफिनेशन है. आप बोलिए if you disagree वरना बस. और मुसियाला है someone who can play wide as well, left भी खेल सकता है. तो पोजीशनिंग रोल्स थोड़ा सा अलग है दोनों का. बेलिंगम के थ्रू सब चीज आता है नहीं. I don't think you are interested in a fourth goal. Like who knows, bro? Knowing Chelsea, we might get that fourth one against the Italians at 4-0. yeah, very comfortable. I think the way the second half has gone, Chelsea have been very comfortable. Yeah, मैं इतना जरूर बोलूंगा मुसियाला फॉर मी मतलब आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड इट मल्टीपल स्ट्रीम्स.
For me, he probably deserves the golden boy. मतलब मैं इतना बोल रहा हूँ इस साल. That's how strongly I feel about Musiala. And I'm being ex-Chelsea graduate. I can imagine that as well. That is quite regular. वो होने वाला है बहुत और. लेकिन यार, Chilwell is playing like a left central midfielder almost, bro. Oof. I'd like to see one more goal. You know, like Haaland. यार Haaland has created madness. But anyway, I know that Fateh, you have got to go, bro. Chalo, thanks for coming on, bro. Much love. yeah, And absolutely of course, much we a love. lot of And I'm happy lot that of I came on and then Chelsea scored too. We absolutely. wanted Chelsea to win, I think, and the next game at San Siro is going to be. I'll try and join you for that game too, just like today. If you do a watch It'll along, be fun. It'll be fun. Hopefully, it'll be we'll, fun. we'll win that as well. Yeah, कोई नहीं. San Siro. Thanks Fateh. Fateh OP, everyone in the chat. Come on, Man, हो जाए. मिलते see you, हैं. man. See you. Enjoy. All the best Best for of your luck. second leg. Yeah. Okay. Chalo, Fateh is leaving us for now. He'll come back obviously in later streams. Bhai, again, I know that there are people awake, भाई Chelsea fans और बाकी सबके fans. हम लोग यहाँ पर 4 मैचेस फॉलो कर रहे हैं. भाई कहाँ गए सब लोग भाई? चेल्सी मिलान के दिन में तो एटलीस्ट आई वुड हैव मोर सपोर्ट. कम ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लव टू ऑल द पीपल आर वाचिंग. आई कैन नॉट थैंक यू ऑल इनफ. लेकिन भाई कहाँ है सब लोग? कहाँ छुप के बैठे? आ जाओ भाई सब लोग. देयर इज अ लॉट टू बी डिस्कस्ड एट द एंड. आ जाओ यार. मतलब चेल्सी मिलान के तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू कम ऑन. नहीं, थोड़ा सा नाइंसाफी होता है यार. मतलब अगेन मच लव टू एवरीवन देयर, बट आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा क्या है भाई मेरा चेहरा में अच्छा नहीं? कोई नहीं. आई एम जस्ट हैप्पी दैट चेल्सी इज विनिंग राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट. अगेन परफॉर्मेंस वाइज इट्स बिन, आई थिंक मोर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बोलूंगा. आई वुडंट से लाइक इट्स बिन अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. या फतेह, गुड वाइब्स. एग्जैक्टली ब्रो. Mikhail, I'm guessing that it might be working hours for you. Otherwise, would have been great to have you. Let me know in the DM. अरे मैं सोचा एक और गोल. नहीं. I didn't miss anything. My Indian team ज्यादा अच्छी खेलती है मिलान से भी. यार इंडियन टीम में स्कोप बहुत है. प्रॉब्लम ये है दैट वी आर नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल. हमारे कुछ कैंप्स नहीं होते. हमारे बेसिकली सिलेक्शंस बहुत लेट होते हैं. लॉट ऑफ अदर इश्यूज यार. देयर लॉट ऑफ देयर अदर ऑफ टॉपिक. भाई मिलान लूजिंग योर थॉट्स. आई एम डिसअपॉइंटेड बाय मिलान, सिंपली पुट. सच में बोलो तो मिलान हैज रियली डिसअपॉइंटेड. या दे आर फेसिंग इतने सारी इंजरीज है, लेकिन इतने सारे अनफोर्स्ड एरर्स. दे स्टार्टेड वेरी वेल, फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड मैन. मतलब एक नाइस अटेम्प्ट था यहाँ ओरिगी का नाइस अटेम्प्ट, बट कोई नहीं. चलो मिकाइल को भेजते हैं लिंक. थोड़ा सा बात हो जाता है मिकाइल से. ऑलवेज गुड. चलो मैंने भेज दिया मिकाइल को भी लिंक. Okay, the away supporters of Milan still really going for it in terms of cheering. Benfica PSG अभी तक 1-1 है. हाँ, तो कमिंग बैक टू मिलान राइट, मतलब ऑनेस्टली आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम राफेल लियाओ, स्पेशली जब फोफाना आप इंजर होके चले गए हैं. आई थिंक दे डिडंट गिव द बॉल और दे डिडंट विन द बॉल इनफ. रादर चेल्सी के इंटरसेप्शन अच्छे थे आप बोल सकते हो, स्पेशली लॉफ्टस चीक. Loftus Cheek was actually good defensively, but other than that, you have to question Milan in their attacking. Chalo, I think we have Mikhail in the house. Chilwell शुरू में लग रहे थे यार, but he's grown into the game, I must say. चलो Mikhail, able to hear me, bro? Yeah, brother. How was it? Okay. How's चलो things? Mikhail OP in the house, everyone, come on. Mikhail, finally the smile I can see on Mikhail's face, भाई. Yeah, क्या लगता है? honestly, I've waited like, I don't know, I've waited years probably to see Chelsea play counter attack again, because इतने attacking players हैं, लेकिन we don't use them. So what we're seeing right now, I'm here for it, man. I want us playing like this more, because we've tried the other style, and we kind of have explored every single corner of the pitch with the way we were playing. So just sit back a little bit, invite them in, and then hit them with pace, hit them with space in behind. Like, why not?
if फुल there टाइम is हो गया बाय द वे. आई थिंक मैं सोचा था फोर्थ गोल आएगा कि नहीं आएगा, बट कोई नहीं भाई, 3-0 विल टेक इट. नहीं, we'll take it. कोई नहीं, वो एक्चुअली हमने भी चेंजेस काफी कर दिए ना, तो जरा मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक हो गया, लेकिन कोई अच्छा. नहीं. Meanwhile, by the way, shocking, and I know we'll come back to Chelsea in just a second. But Juventus के लिए Rabiot has got a brace today. What a day to score 2 goals for Juventus, man. A guy who was criticized so much in the summer. He has got 2 goals for Juventus in a very, very important night for Juventus. Just about keeping Allegri's job, in my opinion. बिल्कुल, absolutely. But let's actually share the Chelsea screen again. I'll just यहाँ पर हम लोग सब लोग we are just going to be reviewing quickly what we have seen on the pitch. Tomori and James hugging, man. That's a moment for sure. That's a moment for sure. Who would have imagined that, Mikhail? Yeah, man. I mean, power to Tomori. He went out and took on a challenge, and it's good to see him, thriving in his new team. Um, but right now, I'm so excited about the scoreline, because I don't expect 3 goals from Chelsea in recent times. So for me. And by the way, I missed the first half, so I don't know how we started and did we transition into this. I'll have to हाँ, figure out. exactly. तो let me just cover it for you and then you can take over. ठीक है. Thank देखिए, you. पहला जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स थे, आई थिंक इट वाज ऑल मिलान, और ये प्रॉब्लम थी मेरे लिए बिकॉज वी वेंट 3 द बैक. वी आर चेंजिंग फ्रॉम 4 to 3, 3 to 4. दैट Who माइट बी अ who प्रॉब्लम were इन the माय three? ओपिनियन. Who were the three? तो कुलीबाली, सिल्वा एंड फोफाना, ठीक है, जो यू सीइंग ऑन स्क्रीन. प्रॉब्लम वो थी, कुलीबाली वाज ऑलमोस्ट थिंकिंग दैट इज डेविड लुइस. So he was trying to play clear this balls early. He was trying to basically, just go for the rash tackles. The best part about it is, luckily he did not get booked. नहीं तो I was seeing a leads coming. उस समय what was happening is on the attack, it was a clear battle. Tonali of Milan was doing very well. So he was winning a lot of balls or he was spraying balls. Then came the Loftus-Cheek show. So pehle few minutes mein what was happening is that Loftus-Cheek was the guy who was running. In fact, Loftus-Cheek got Krunic a yellow card and Kovacic was the guy sitting in midfield. But what then later happened is Loftus-Cheek was sitting or Kovacic was going on his runs, and after that we could see बहुत ज़्यादा open up हो रही थी Milan, and then the changes came. Really, जो आप देख ही रहे हो in terms of basically हमने जो score किया, for me again James pretty obvious as an outlet, but Chilwell also पहले few minutes में he was looking off pace. He was looking as though यार he's going to foul the player. He was looking for that, but you have to give it to him. He grew into the game. Fofana ping pong goal ये momentum change किया. Fofana injury wasn't good, but for you in second half में Mikhail, what stood out for you? Sorry, Fofana injured हुआ है? हाँ यार, इंजर होके चले गए. In fact, it looks like a bad injury. That's the major loss from this game. नहीं यार, अभी तो आया है. क्या इंजर हुआ है? Unfortunately. वो टांग तो नहीं तोड़ दी फिर? नहीं टूटी टूटी तो नहीं है, चल के गया था, लेकिन ही डेफिनेटली looks like he's pulled something badly or he was in tears. He was actually looking like he was in tears. वो हो सकता है कि यार maybe he's just thinking that next week में मैं बाहर हो जाऊंगा, और maybe he's thinking that maybe out for the World Cup. I'm hoping not because चल के गए थे, but let's see. हम will wait for the interview afterwards. लेकिन Fofana with a very very crucial goal और things change. Yes, अभिषेक बोल रहे हैं मैन ऑफ द मैच RLC. इंटरेस्टिंग अभिषेक. यस, मैंने खुद बोला था कोवाचिच ज्यादा लगे हैं RLC से ज्यादा towards the end of the first half, but I agree second half में RLC was brilliant. But Reece James bro, मतलब Mikhail, pretty sure Reece James, मतलब even a game जहां पर Reece James hasn't been the only outlet, वहां पर भी Reece James got a golden assist bro. Yeah, क्या actually, बोलोगे Reece James? this role probably suits Reece James better, where he arrives to join an attack. To expect him to attack, I think that's where the problem is, because he doesn't turn on the ball. So he kind of closes his body and then he back passes a lot from the half line, right? So this dynamic, we were attacking through the middle and we were also pushing through the left. तो हम करते ही हैं push. Like through the middle, I saw a lot of movements going through the middle. And I've been on this channel a few times asking कि यार play through the middle. There are pockets to occupy. Put somebody there. वो U shape में एक formation हमने बनाई हुई होती है. And the ball is just going around the middle. It never goes through the middle. So today, this is the first thing I'm seeing. And again, I didn't watch the whole game, so I apologize. Like, and I just wanted to jump on to discuss what I saw.
What I did see was that Chelsea was playing vertical passes throughout the pitch. It didn't matter what part of the pitch we were in. We were trying vertical passes, trying little runs and pockets of space to keep them on their back foot always. So मुझे अच्छा लगा ये. And I'm not saying कि perfect है, लेकिन I'm saying कि different है. It's something new. It's a new dimension. So मेरी तरफ से hats off to Potter because that's the kind of changes I've been waiting to see. And remember last game में हम बात भी किए थे क्लियरली कि एक लग रहा था कॉन्शियस एफर्ट कि यार हमें वर्टिकल पासेस करने हैं स्पेशली फ्रॉम द टॉप, क्योंकि वहां एक चीज होता है ना जहां पर मे बी इन द पास्ट टुकल इज almost gone on to say that nahi, we want to play on the ground, we want to basically just play it. This is the thing, right? कि वो टूकल की बहुत ज्यादा स्टबन हो गया था वो अपने उस फिलॉसफी में कि वो टीम भी डर गई थी. टीम वाज नॉट ट्राइंग एनीथिंग डिफरेंट ईदर, राइट? ऊपर से पता नहीं क्या उनको झाड़ पड़ती थी साइड पे कि वो दे वुडंट इवन थिंक ऑफ इट. अब जो मैं देख रहा हूँ वो इट्स एग्जैक्टली व्हाट एवरीथिंग दैट वाज मिसिंग सडनली यू आर सीइंग. सो इट वाज देयर, इट वाज जस्ट बीइंग instructioned out of the pitch, right? So अभी थोड़ा सा लाइसेंस ज्यादा है शायद प्लेयर्स के पास, थोड़ा सा शायद इंस्ट्रक्शन भी ज्यादा है कि भाई पुश थ्रू द मिडल, पुश वर्टिकली. एंड आई थिंक इट्स देयर टू सी कि द टीम हैज गोल्स इन दम. कुछ हमने कोई कमाल नहीं खेला, लेकिन वी स्कोर्ड 3 goals suddenly, like 2 goals out of nowhere, right? Close proximity में. So to me that's the way forward. Yeah, this is the way forward. हम अपनी लीग में भी if we try playing like this, we should see joy. हमारे top scorers in the previous years have been 13, 14, 15 goal wale strikers are top scorers. Like, come on, this is like we are still the reigning champions of the world, club World Cup champions, but we're not known to be the defensive Chelsea side of yesteryears of Jose Mourinho philosophy. We're supposed to be a ball playing side, right? So ball playing, this is more ball playing than I've seen in quite a while. So I'm excited just for having seen that. और रिजल्ट की वजह से मैं और भी एक्साइट हुआ हूँ इस वक्त, क्योंकि वी नीडेड अ विन टू स्टे इन दिस ग्रुप एंड ट्राई टू क्लाइम आउट ऑफ इट, बिकॉज मेंटली तो मैं तैयार हूँ यूरोपा लीग के लिए आफ्टर सीइंग द परफॉर्मेंसेस अभी तक जो हुई थी हमारी. बट एनीवेज आई लेट यू. नहीं मतलब वही जस्ट एडिंग टू योर पॉइंट्स ना. अब देखिए एक डिफरेंस एक और मैं बोलना चाहूंगा. तो यहाँ पर अगेन बिग अप टू सायन हैज एक्चुअली शेयर्ड अ स्टैट विद मी ऑन ट्विटर. भाई उन्होंने बोला है 10 shots, 6 on target, 3 goals. There you go. This is huge. But it's the type of chances created. That's the difference. It's क्योंकि chances हम वैसे भी create कर रहे थे under Tuchel, but they were different types of chances. उनसे score करना wasn't as easy always. So this was a different type of chance where there was no pressure when we were attacking. There were options. We just did what needed to be done. Center the ball, and somebody should get to it, right? So it's. I love it. I love to see it. Like कुछ matches में हमने देखा वो individual brilliance भी आई थी कि Oba did a good goal, Gallagher did a good goal. But now also I'm also seeing the team dynamic. If you play in certain ways, the chances will come. You just have to then do let instinct take over and just put them away. So I don't know कि पहले half में हमारी football was the same or not, but second half में what I saw I like because if we keep doing this, we can get better. We will get better. Yeah. In fact, particularly मैं बोलूँ तो I think first half में especially I think Mason Mount stood out. we हमने बात नहीं की अभी तक. Mason Mount का जो position था ना, again we know that Potter likes that person in behind the front too. और Mason Mount was playing that free role. आप देख सकते हैं on the left hand side and right hand side. Yes, उसका battle चल रहा था with Tonali, लेकिन I think eventually he won the battle. Although Tonali started better. और Mason Mount had a moment as well. वहां पर if Aubameyang would have played him in, again vertical pass की बात है, vertical first time touch, not that extra touch over the top, and then he would have been through. लेकिन offside दिया गया. He got a goal as well. Nice finish by the way. Sterling, yes you can, अगर criticize करना ही है, maybe आज के लिए मैं criticize थोड़ा सा करूंगा to Sterling, should have been finishing better आज. लेकिन best part was he was actually at the end of things. और it was at positions जहां पर counter कर रहे थे जो in the past we probably missed. Mikhail जो pointed already. So that's a great point. Rafael Leao, Abhishek, I would still मतलब ये अगेन आप भी देखते हो बहुत सीरिया. अभिषेक आप लोग भी बोलिए सब लोग. देखिए Theo Hernandez and Rafael Leao is a different gravy altogether, with all due respect to Balotore and Rafael Leao. Plus like again मैंने बोला है Mason Mount, Reece James on that right hand side, they had a day, they had a proper day. So you have to give it to them, the defensive element. Plus Fofana
पहले half an hour के लिए he was brilliant until he got injured and went away. Yes, again praying that he's not a long term injury. Gaurav, I don't think it's as bad, bro. आपका मैसेज मैंने देखा है, क्योंकि वो चल के जा रहा था. हाँ, वो रो रहा था लेकिन चल के जा रहा था. तो Becca pretty sure it's not going to be an ACL or something like that. अगर चल के जा, right? He wasn't taken away in stretcher or something. I guess if you're looking for small blessings in that situation, then probably that is one. But it's concerning because we paid a lot of money for him, yeah, and he has an injury record anyways. So I hope it's not a recurrence or a worsening of a pre-existing injury. अगर ठीक है knocks होते हैं sometimes, it happens. Hopefully it's not too bad, man. Let's hope for the best. लेकिन अगर वो let's say if he does have to sit out, which it sounds like he will for a few games, so who do you think slots in? Is it going to be Chalobah? Is it going to be Aspi? Is it going to be Reece James? Yeah, I'll come to that, bro. With all due respect to all our fellow fans, bhai, Chalobah, everyone is saying Janta, bhai, get him. Yes, he grew into a game, I must say. Lekin Chalobah, Rafael Leao had a couple of easy kind of moments with Chalobah. I still feel with that very, very high quality dribbler and step overs, Chalobah cannot do the job. I am not so convinced with Chalobah as a starter in our main games. But do you think Aspi can do the job by comparison? Neither, exactly. Even he cannot. That's the main. So just go for the back. I would go for the back. But play Gallagher in midfield, crowd in that creates midfield. its own problems, right? हमारी midfield में जो problems इस वक्त चल रही हैं. I don't know. मैं explain करता हूँ. Mikhail and everyone in the chat, आप लोग भी बोलिए, everyone. Yes, we are going to be discussing the entire groups as well. Everyone, like करना भूलना. देखिए, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा. When in the first 10-15 minutes, it was all Milan. ठीक है, first 10-15 minutes we didn't do well. और वो दिख रहा था क्या डिफरेंस था, दैट वी वर हैविंग दैट एक्सेसिव स्पेस इन फ्रंट ऑफ से लॉफ्टस-चीक एंड कोवाचिच. तो वो जो स्पेस थी ना, वो एक्सप्लॉइट कर रही थी मिलान, एंड दैट इज व्हाई टोनाली वाज एबल टू गेट हिज पासेस. वहां पर इफ यू आर हैविंग अ गैलेगर, ठीक है, तो वी कैन रादर, बोलते हैं ना, काइंड ऑफ प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट, बोलते हैं, विद नॉट रियली प्रेसिंग बट जस्ट क्राउडिंग अप स्पेस, वी कैन विन दोज बॉल्स एंड रादर नॉट डिपेंड ऑन आवर बैक लाइन. I think there is a moment, we don't have a pure DM. That's the main problem. Like once, if Kante comes back, I'm seeing a Kante and maybe a Kovacic playing, or in front Gallagher. Sorry, मैं वो comment पढ़ रहा था CFC Blues का, Wesley Fofana का. It doesn't sound good. I think you were reading it earlier too. Oh my God. That's not encouraging. But I'm very surprised he just walked and went, bro. I'm so surprised. The medical did not run and kind of, Hopefully it's a sprain and nothing worse. But he was looking like he was in tears. ये जरूर बोलूंगा मैं. He was looking like that he was in tears. ऐसा नहीं लग रहा था कि यार it's just a normal injury as well. मतलब मुझे लग रहा था the way he went, I anticipated that okay, it's something like maybe a hamstring or something like that, जहाँ पर he'll be out for three weeks or something like that, which is also one month is a big deal. The way football is going, in this month. लेकिन that's why maybe he was sad. यार अब देखो कि उसका जब मेडिकल हुआ था, तो he was flown out to the US. उसके few weeks बाद the medical officer at Chelsea was sacked. Right? So you start putting 1 + 1 is equal to 3. So like maybe there was a concern with Fofana's condition, and maybe that played into it. But anyways, I mean, let's not get too carried away. It is what it is. Injuries are okay and they're part of the game. Yeah. Abhishek, I don't mean that based on this performance alone, I'm going to say that he's better than Chalobah. But having seen Fofana in the Premier League, having seen Chalobah recently play against, again, you tend to remember the mistakes. So I remember Mane, Diaz, and today Leao versus Fofana versus Leao. He looked much more confident, much more physical. Simple as that. Personally speaking, I think Fofana is not the finished product either. Like it will take him time to mature into the player that we expect in that position. Abhi nahi hai, lekin he's one for the future in that sense. He's not been bought to immediately make an. You could argue that maybe Koulibaly has been brought to bring that immediate impact, right? He's struggling a little bit. Lekin aaj theek khel raha tha. I mean, apart from his bombing runs, but I think usko license diya hua tha unhone to bomb forward because 3 at the back tha. So
but I'm not too worried about Fofana. I'm not expecting man of the match performances from him. Uski positioning is not uh, coordinated with the rest of the back line as yet. थोड़ा सा वो out of position रहता I think है. last match में हम बात किए थे, probably वो he थोड़ा was सा he's always a little थोड़ा तेज है, तो he gets out of position, then he's not fast enough to come back. So that's a mental thing. The read of the game, it will come with time. आ जाएगा. और अगर वो एसपी के साथ इंटरचेंज करता रहा, तो I'm sure एसपी will also talk to him a little bit. But I don't know if I want SB ahead of Chaloba, because Chaloba, ठीक है, he's inexperienced. He's not a specialist necessarily for that position. लेकिन he does the job. और थोड़ा सा वो लंबा है, तो he gives a little bit of more physical presence for the aerial situation around the box. तो मुझे उस लिहाज से I'm never worried when Chaloba is on the pitch. ठीक है, I agree कि उसकी on one against the best attackers, he's not going to be able to match up every single time, but that's when you kind of compensate and give him some cover, right? You have to make sure that there is somebody willing to kind of support him when he's in those situations one-on-one. Let's not isolate him. Let's make sure somebody's in and around them. Maybe Reece drops back and tries to help out. तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, इफ यू रिमेंबर एसपी के साथ भी इसी तरह करना पड़ता था. एसपी भी wasn't the fastest always. So of course. you have to make sure that there's somebody around them to kind of take the pressure off. See, you hit the nail on the head. क्योंकि यार चालोबा का again, only reason I'm saying is क्योंकि यार you tend to remember the bigger games more, but there have been a lot of games जहाँ पर चालोबा, in fact उनका record, Mikhail only said, right, when he started games we have not lost, we're not yet lost. और having said that, touchwood अभी तक ये भी बरकरार है भाई, जब तक हमने watch along किया है, we have won. Just saying. But yes, love I'm a it, bit love it. scared, bro. I'm here for the tactical breakdown of the game. So tell me what you saw. Tell me which positions worked and which positions need work. Yeah, तो यहाँ पर एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं फुटबॉल क्लिक्स, हाउ डू यू लाइक पॉटर सो फार? जुरी इज Yes. आउट. यस फॉर श्योर. मिकाइल यू आर लाइक पॉजिटिव. मतलब 3-4 हमने बता दिए. एक तो एक फॉरवर्ड पासिंग एक क्लियरली है, इट्स अ मैसेज, क्लियर मैसेज अबाउट फॉरवर्ड पासिंग. एक काउंटर इज समथिंग दैट ही इज फॉर. ही इज आल्सो एक he is looking at more fluidity even in other positions, not just in forward lines. Because for example, Chilwell at times he played as a cam, bro. Or people must be saying about Reece James ka goal. If Chilwell wouldn't have come in the cam position that moment, Reece James का गोल नहीं होता. तो I think Chilwell को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा आज. I actually like Chilwell growing into the game, RLC growing into the game. काफी लोग Koulibaly growing into the game. Finally he's got a appearance. तो बेस्ट पार्ट इज, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ फेवरेटिज्म और सम सॉफ्ट बायस भी है. क्लियरली मुझे लग रहा है यार ही इज जस्ट प्लेइंग. केपा फॉर इंस्टेंस, केपा, या ये एक मोमेंट, आई डोंट नो मिकाइल इफ यू सॉ दैट, आर्ग्यूबली यस चेल्सी शुड हैव बीन 2 goals up at half time, लेकिन आर्ग्यूबली मिलान को स्कोर करना चाहिए था. केपा हैड अ मोमेंट एंड थियागो सिल्वा फाइनली क्लियर दैट. तो केपा, you have to give it to him. Yeah, Kepa and Mendy, to be honest, both have mistakes in them. I don't expect both of them to be, the Neuer level and the peak Neuer level of keepers. The trick has been the defensive or unit around them has to perform in sync so that they are protected as well. जब ये expose होते हैं, that's when their issues also start coming out, right? So I don't care if it's Kepa or Mendy, both have mistakes in them. So we have to take it by with a pinch of salt. कि इस वक्त Kepa is playing better than Mendy was playing, so let him continue till we feel like Mendy deserves another shot, like a start, or Kepa form declines. Right now it's a clean sheet, and we had goals on the other end, so more than we usually do. So I think I'm focusing on the positives. You were talking about the switching ends of the pitch. उसका Chilwell का free roll, you were commenting about during the game, that he's kind of like meandering into midfield and causing problems for them, where they were trying to press us, but then he was instrumental in kind of giving us that space in the pockets, floating role in the pockets.
So uske liye how do you do that? You have to get somebody defensively to cover that side of the pitch as well, right? ठीक है, he's doing this. Now somebody else has to keep an eye on that side of the pitch. So these are the little things. If you go back to Jose Mourinho's Inter and Jose Mourinho's Chelsea, or Jose Mourinho's even Real Madrid, I would say Inter 2010 wali, okay, they used to defend as a unit in circles. So one would go in and they would know, okay, he would probably get beaten. So the next player would also be running in behind. And then the first player would circle back and be running in behind. Ke Messi, jitne marzi left ko dodge kar le, there was always another player in front of him, always another player in front of him. So ye organization defensively jo hai, you have to work on it. It doesn't come overnight. Aista aista aati hai, but same thing positionally. If one player has a free role or does bomb forward or does move inland, so Baki the team has to have the intelligence and awareness to adjust without the coach having to yell from the sidelines or something worse happening on the pitch. So ये सारी चीजें हमारी गेम में से missing थी, and I'm happy with Potter. Those are the things that seem to be getting addressed suddenly, right? So either it's all total fluke, या फिर there is some conscious thought being put into all of these things. And also, like, you have to also talk about Milan यहाँ पर, maybe वही है, it was at the end of the day what third game for Potter. So I wouldn't say that 100% I would just rely कि भाई यही एक tactic. For me, a lot of evolving tactics है. So every week by week we will see things evolving a little bit more. What he's seeing, I think हम already देख रहे last week हम Fofana का बोल रहे थे that he didn't cover that space well. आज basically he was always there on Liao for that half an hour, I thought. But at the end of the day, you have to also talk about the opposition not being good. For whatever reason, Benacer actually started well, Abhishek, and then whatever happened, I don't know what kya hua. I think it was maybe the fact that floating role, na? Mason Mount had also a floating role. On Mason Mount, ने कंफ्यूज कर दिया उनके मिडफील्डर्स को, और मे बी दैट इज व्हाई, मे बी अगेन पॉटर को देना पड़ेगा हमें क्रेडिट. बट ग्रुप में अगर हमें ग्रुप दिखाया था अभी, मिकाइल, ऑल ऑफ अ सडन मिलान आर थर्ड ब्रो, with Salzburg winning against Zagreb. तो going by this performance and going by इतने सारी injuries जो है मिलान के, I know couple of them are going to be back next week for them as well. By going to Milan, I know it's early days, a week away. I think I'll expect Chelsea to win, bro. अगर मिलान ऐसे खेली है. So here's the thing: if we play the way we played right now in the second half, at least from what I've seen, yeah, I'm not worried. The only thing you have to counter for is that they will be a little braver at home. They will have a little more flair at home. Home crowd hoga. So those things will. Although I think they had a good representation in the away fans section as well today. Yeah, very good. But at home, that will be the 12th man, right? The crowd support. So, but again, if we can avoid having heavy legs, and if we can go there and just play the way we played right now, थोड़ा सा इसके लिए भी झगड़ा चाहिए होता है, लेकिन sit back, let's invite them in, and let's hit them at the counter and go score 4 goals next time instead of 3. Yes, it's very possible. Yeah. Acha, football Greeks, I would say that Milan, the way they play, na, for them, their fullbacks are extremely crucial, especially Theo Hernandez. So, यहाँ पर Ballatore, I did not see much. I think that he didn't get going with the Liao as much his game में. Or you have to give credit to Chelsea. Chelsea का width, we all know that Reece James and Chilwell both grew into games like anything, and that's why I think probably they were nullified. Simple as that. But they have to work hard. Milan have to work harder, in my opinion. Again, Rafael Leao, arguably not as good, but I thought Fofana and Reece James had him in check in the first half. That was the main reason, in my opinion. But quickly, अगर मैं बाकी groups का देखूँ तो before I am just going to end the stream, let me actually go through each group just in a minute quickly. And everyone, भाई आप बोलेगा, सब लोग comment करिएगा हर एक group में, as things stand, which two teams are going to get through. I'll take Mikhail's call also. And I know we are not going to discuss in detail about what happened tonight. लेकिन again, Group A, we have already seen. I would say Napoli and Liverpool will get through. Ajax, बहुत ही गंदी performance थी. Going with that, Mikhail, everyone in the chat. Yeah, based on what happened to Ajax, I would probably lean towards what you're saying as well. Yeah, exactly. Group B, now this is, I would say, one of the most difficult groups to call. Atletico are in the mud, lekin luckily for them, बाकी matches kind of okay for them, so 3 points ही है.
So, Mikhail, you go first this time. Club Brugge is obvious. They are like flying high. Yeah. Lekin who else? Yeah, that's a good point. Hudson I don't Odoi के know. लिए Leverkusen I क्या honestly बोलते हो? have not been following any of these teams, so Yeah, it's luck of the draw. basically all the three teams have been doing badly. In fact, Porto का तो इतना बुरा result था last second match day में. Atletico have been bad consistently. Leverkusen, yeah, I think they can do well. Again, Wirtz or Hudson Odoi kind of play well. I can say that. I still say that Atletico will come through, especially after जो deal हुआ आज. I don't know if you heard, Griezmann is going to be an Atletico player. Looks like they finally found an agreement with Barcelona. Looks like 20 million plus add-ons. So पर I am going with वो खेल तो वहीं पे रहा है ना. हाँ, लेकिन वो एक क्लॉज था ना कि बेसिकली अगर उसको खिलाते 45 मिनट से ज्यादा over certain number of matches, then they have to pay Barcelona somewhere 50 plus million or something like that, right? Again, I know people in the chat who can correct me there, the exact number. तो So वहां पर क्या हो रहा था, they वो खेल नहीं रहा basically था got a ज्यादा. half a player then. Yeah, exactly. So now, because of that clause, now they're like there was a court case going on. फिर सू करने वाले थे बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड को because they are misusing that clause. लेकिन अब finally they found an agreement, looks like it. So it's good for them in the long run. So probably they'll be settled more. But still I'm not convinced. चलो ग्रुप सी पर आ जाते हैं everyone. ये big group everyone भाई. I am still saying Barcelona will beat Inter. Yes, they आई मस्ट से इंटर डिफेंसिवली बहुत ही अच्छी लगी थी कल, लेकिन दे वर लकी बिकॉज ऑफ द रेफरी. आई एम सेइंग दैट बार्सिलोना विल बीट इंटर एट कैंप नु. अर्ली प्रेडिक्शन है कल और रादर नेक्स्ट वीक वापस से बोलेंगे. आई एम सेइंग बायर एंड बार्सा. कम ऑन मिकाइल, ये कंट्रोवर्शियल पिक आई नो, गो फॉर इट क्विकली. यार वो हमारा हम जो इंटरेक्शन रहा है इंटर के साथ इन रीसेंट टाइम्स, उसके बाद आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर इंटर ईदर. So I think at this point, Bayern and Barcelona for me as well. Yeah, by the way, बारसा के साथ भी बहुत हुए in summer transfer window, but we'll come to that later. Group D, people, this is also along with the Atletico वाला group बहुत ही interesting. Sporting unfortunately lost yesterday, because of which Marseille now all of a sudden have a chance. Tottenham, yes, बहुत ही गंदे performance हो रहे, but they're getting those draws at least. So I feel Tottenham will still come second. मैं यहाँ पर सरप्राइज कॉल करने वाला हूँ. I'm going to say Frankfurt are going to top. Oh, nahi, actually, let's keep Sporting only. Sporting are going to top, and it's going to be the way it is. Group D, सब लोग. यार between Tottenham and Frankfurt, I think Tottenham has more momentum probably right now. So they're in relatively good form. In the Premier League also they're sitting, I think, third. So मतलब आप you cannot fault Tottenham in terms of getting the results. So I'll go with that as well. But यहाँ पर तो pretty sure we are all going Chelsea. Everyone भाई Chelsea OP हो जाए at least for the time being. थोड़ा confidence आ गया वापस से, but it's too early days. I know. Mikhail, your gut क्या बोलता है? Milan and Chelsea. Wow, that's gonna be a cracker of a game next week, man. Okay, let's hypothetically speak. I know अभी एक हफ्ता बाकी है. Imagine, yeah. By the way, one of us is going with Salzburg and Dinamo. Interesting. Spurs will top. Okay, that's just a pun intended, I'm pretty sure. But देखिए, if it becomes a draw at San Siro, imagine if Salzburg get or rather if Zagreb win. All of a sudden, it's Salzburg and Dinamo, bro. Oh my god, this is difficult. This is the most difficult group to call. Abhi tak, our own group, bro. That would be insane. Yeah, I'll leave this to the chat. This one I'll leave this to the chat, bhai. Chelsea तो I मैं didn't even include realize करूँगा. कि ये भी dynamic चल रहा है. लेकिन कोई नहीं. I think I was resigned to us dropping out of the Champions League into Europa Oh my League. god. So for me, today's victory, I'm gonna push for Chelsea to make it through, to climb out of this group. अच्छा, ये I think Real Madrid are easily topping. Real Madrid पता नहीं unstoppable है भाई एकदम, just like Man City at the time for the time being. Shakhtar have actually looked good, but Leipzig is coming back to form. I would still go with the Leipzig. हाँ, Shakhtar they have looked impressive, but Leipzig मेरे लिए maybe Nkunku factor, Timo Werner, I don't know. Maybe I'm biased. Like they have a lot of forwards, so somehow when it matters, they'll get you enough goals. So I'm going with Leipzig. Real and Leipzig. Yeah, same as 1 hour buzz. Football crease बोल रहे Chelsea and Milan, by the way. What about you, Mikhail? Yeah, I'll go with that. I want Leipzig to get through.
And last couple of groups left by Man City and Dortmund. This is easy pick. Come on, ये यहाँ पर बात करने की जरूरत भी नहीं है. नहीं, pretty easy. This is going to be Sevilla and the mud. We know that. Copenhagen. Let's be honest. With all due respect, this is not the level. That's the reality. Unless it's FIFA and me, people know the context. But Group H, this is going to be fun. By Juventus just about saving Allegri's job for the time being. Benfica. Now, I think arguably वो एक सरप्राइज ऑफ द टूर्नामेंट रही है मिकाइल बेनफिका अभी तक. That's amazing, man. That table position and that group. वो सही कह रहा था कि you never know, Tuchel might be packing his bags for Juve soon. बिल्कुल. अब बाय द वे उसी बात पर भाई सब लोग कर लीजिए. यस, बाय द वे यूवेंटस if they go out, maybe they'll get a new manager only if they can afford. But मुझे लगता है PSG and Benfica it will be unfortunately for Juventus. As much as Juventus का victory बहुत important आज, लेकिन we are all very happy just with Chelsea's victory, especially एक 3-0 victory हुई है. But again भाई जो भी लोग आए हैं, yes, it's literally 3 AM in the morning here. So first of all, I have to thank everyone out here जो रहा है for throughout the stream, but also जो भी join किया है. Having said that, do not forget to like the stream or please give a follow to everyone that has come on the panel as well. उनके सब links are in the description below. Mikhail का तो खैर रहता ही है because he is an almighty board member for us, so he will definitely be there, our almighty coach as well. So top 3 to win UCL. Oh my god, it's just halfway through. Come on Mudit, बहुत जल्दी पूछ रहे हो आप. City, Bayern, Real, PSG. भाई आपने can anyone argue with these 4? Like you can argue PSG, they kind of bottle, but the way the things are going, is it a Messi year? Mikhail, क्या लगता है? Messi, Ronaldo By तो already is kind of failing. the way I'm seeing Haaland playing right now, it has to be City. But I don't want City to win. But it's looking like it looks like it might be their year. If it's anybody's year, I think it's their year. चलो कोई नहीं. But यार पीयूष, it's too early, still halfway through. मुझे तो लगता है जैसे हमने डिस्कस किया, there is a lot left and of course again we'll be discussing lot on the channel as well as on Almighty Sports Plus क्योंकि it's going to be a crazy sporting month as well as months. तो everyone जो भी आया है भूलिएगा मत also to hit that bell notification icon on Almighty Sports Plus as well as Almighty Blues FC. But congratulations to all the winners tonight. Of course, we are going to come up with a review as well, so do not forget to watch that video. Lekin, again, there is Europa League. So for those of you who are following Europa League, we'll be mostly live tonight as well. वो होगा obviously for Arsenal, Manchester United fans in particular, but generally भी. And weekend में there is again Premiership. For people asking who am I किधर है, man, I am just looking out for a date and availability. वही है, who am I जैसे सीरीज में क्या होता है ना, दोनों साथ में अवेलेबल होना चाहिए ना, and it's not like I can pick any two because it's a quarter final that is pending. So we'll come there as well, but a lot of it coming in. Mikhail is going to come. I'm pretty sure in the next season Mikhail is going to come back. He's the original Who Am I player. Sampaoli new manager. Sevilla sacked their manager. Oh my god, Sampaoli is the manager in fact. Okay, City बोल रहे Abel, nice to see you bro. Big up Abel को भी, he's been on Almighty Sport Plus, you know that. चलो भाई उसी बात पर, I know sacking हुई है for Sevilla, not great, but अभी के लिए just enjoy. The Chelsea has finally won a match with no heartbreaks. Let it continue. May it continue. Or Mikhail, any final words from you? By 70% of the world is water. The rest is covered by Ankit and Almighty Blues. Oh my god, that is the goated way to end the stream, bro. I cannot say enough. But again, thanks a lot, Mikhail. Always, and everyone in the chat. Chalo, much love. Have a good night. I'll have a good night for a change. Not of the next Chelsea match yet. Lekin koi nahi. We'll come back with a as in shortened review again and lots more. Chalo, much love to everyone. Take care. Bye. Big up the Chels. Up the Chels.